Machinery and Power Engineering of College of Agricultural Engineering and Technology of Junagadh Agricultural University and Student Startup and Innovation Policy Cell of our university under NAHEP, IDP, ICR. We welcome all of you. Before moving to the inauguration program, let us be witness of the invocation song of our university, presenting Junagadh Agricultural University Invocation Song. समस्त जगत कृषि मूलम है संस्कृति कृषि वत्सलम समस्त जगत कृषि मूलम है संस्कृति कृषि वत्सलम कृषि कारयश आयुर्बलम धन धान्य औषधि निर्मलम हे समस्त जगत कृषि मूलम हे संस्कृति कृषि वत्सलम सौराष्ट्र गाथा गुर्जरी मेहमान नवाजी से भरी सौराष्ट्र गाथा गुर्जरी मेहमान नवाजी से भरी भूमि प्रेम शौर्य सुशोभिता आतिथ्य में अपराजिता हे समस्त जगत कृषि मूलम हे संस्कृति कृषि वत्सलम शिव क्षेत्र सागर सोमका ठाकुर बसे श्री द्वारिका क्षेत्र सागर सोमका ठाकुर बसे श्री द्वारिका गांधी सुदामा भक्त नरसिंह की कथाएं वैष्णवी हे समस्त जगत कृषि मूलम हे संस्कृति कृषि वत्सलम गिरनार पर जोगी जरी गार रानक की स्मृति बाणेज तुलसी श्याम सासन बाणेज तुलसी श्याम सासन धाम शार्दुल का सही हे समस्त जगत कृषि मूलम हे संस्कृति कृषि वत्सलम क्षेत्र में कृषि कर्म है वो ही नया युग धर्म है सुन लो किसानों की सदा
सुन लो किसानों की सदा, नए देश बंधु जी मताम, नए देश बंधु जी मताम। है समाज जगत कृषि मूलम, है संस्कृति कृषि मार्गम, है संस्कृति कृषि मार्गम, है संस्कृति कृषि मार्गम। थैंक यू। आत्मनिर्भर भारत, भारत की आज़ादी के बाद जब हम परावलंबन में थे, बाद में हमने स्वावलंबन के प्रति आगे बढ़े और आज हम परस्परावलंबन का एक नया युग की शुरुआत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के स्वप्न, शब्द एवं सिद्धियों के जरिए आज हम एक ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिनकी नींव बड़ा प्रधान श्री के सोच में है। एक नया भारत की ओर ले जाने वाला ये परिमाण, ये नया कार्यक्रम हम सब में आज जब समन्वित हो जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं निमंत्रित करता हूं डॉक्टर के.बी. झाला को, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एफएमपी, टू वेलकम एड्रेस। वेलकम डॉक्टर के.बी. झाला। Good morning to all the officers on the dais and off the dais, invitees and my student participants from different colleges like College of Agriculture, College of Agriculture Engineering, College of Agribusiness Management and Horticulture College. It gives me an immense pleasure to start an auspicious occasion by heartily welcoming everyone present over here for a one-day program on Aatmanirbhar Bharat, opportunities in startup and MSME. I heartily welcome Dr. R.C. Agarwal, DDG Education and National Director of NAHEP, New Delhi, who is on online mode. I welcome you, sir. I also welcome Honorable Vice Chancellor, Professor N.K. Gotia, sir. I welcome our guest of honors, Dr. K.K. Goyal, Assistant Director, MSME, Government of India, New Delhi. I also welcome Dr. Ganesh Bora, Executive, USDA, USA. I also welcome Dr. Praveen Sharma, Founder, MD, Floral Consult, Pune. I welcome Dr. D.R. Mehta, worthy Director of Research, along with his associates, Dr. P. Manot, ADR, and Nodal Officer, ICR. I also welcome Dr. Ashish Patil, CEO, Agrotech Ventures, Mumbai, and Dr. Ajay Joshi, visiting faculty from Devi Ahalya University, Indore. Both of them will be joining on online mode. I welcome you, sir. I also welcome university officers, Dr. S.G. Savalia, Principal from Agriculture College, Dr. Varu from Horticulture College, Dr. Tak from Veterinary College. I welcome Dr. P.M. Chauhan, Professor and Head, RE and co-PI IDP. I also welcome heads of the department and college staff along with the students from all the colleges. I also welcome campus engineer and his team on this occasion. Good morning, sir. Thank you, Jhala sir, for addressing the audience. As per the Indian tradition, after the welcome words, now we are moving toward the welcome with the fragrance of flower. So, for that, I would like to request Dr. K.B. Jhala sir, Organizing Secretary and Head of the Department of FMPV, to welcome Honorable Vice Chancellor of our University, Dr. N.K. Gondia sir, with the fragrance of flower. Put your hands together to welcome
Dr. N.K. Gondia sir. I request Professor A.L. Wade sir, Assistant Professor of FMPE College, to welcome Dr. D.R. Mehta sir, Director of Research of our university, with the fragrance of flower. We welcome you, sir. Let us put our hands together for Mehta sir. I request Dr. T.D. Mehta sir, Co-Organizing Secretary and Convener SSIP Cell of our university, to welcome Dr. K.K. Goel, Key Speaker and Assistant Director, MSME, Government of India, New Delhi, with the fragrance of flower. We welcome you, sir. Put your hands together for Dr. K.K. Goel, sir. I request Dr. P.P. Gajjar, Assistant Professor of our college, to welcome Dr. P. Mohanad sir, ADR and Nodal Officer, ICAR, JAU. We welcome Dr. P. Mohanad sir. I request Dr. K.D. Shah, Assistant Professor of College of Agriculture, to welcome Dr. P.M. Chauhan sir, Professor and Head, RE Department and Co-PI, IDP. We welcome Dr. P.M. Chauhan sir. I request Professor D.B. Chawda, Assistant Professor of FMP Department, to welcome Dr. K.B. Jhala sir, Organizing Secretary and Head of the Department, Farm Machinery and Power Engineering. We welcome you, sir. I request Engineer Parth Madhukya of FMP Department to welcome Dr. T.D. Mehta sir, Co-Organizing Secretary and Convener, SSIP Cell and Associate Professor of FMP. I again request Professor D.B. Chawda, Assistant Professor, to welcome Dr. H.G. Savalia sir, Principal of College of Agriculture. We welcome you, sir. Dr. D.B. Chawda will again welcome Professor Silpa Ben Trivedi, In Charge Principal, PGI, ABM of our university. Professor D.B. Chawda will welcome Dr. D.K. Varu, sir, Principal, College of Horticulture of our university. We welcome you, sir. Professor D.B. Chawda will welcome Dr. P.H. Tang, sir, Principal of Veterinary College. We also welcome the guest of honor who have joined us virtually. Sir, we welcome you with the fragrance of flower. Dr. Ganesh Bora, sir. With this, we welcome one and all present with us. Now moving with the flow, to inaugurate this one-day training program, I request all the dignitaries on the dais and guests who are virtually with us to join the light lampening ceremony to inaugurate the function. Let's welcome the positive energy. Ciao, ciao. Let's welcome the positive energy with the lightning of lamp. I request all the dignitaries to open lighting the lamp. आरोग्यं धनसम्पदं शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे दिव्य देवता, जब तक हम हमारा लक्ष्य प्राप्त न करें तब तक हमारी आगे की राह को आप प्रकाश से भर दें और हमें सही दिशा में, हमारे पथ में हमें आगे बढ़ने का बल एवं दिशा अर्पित करें। इसी भावना के साथ हम दीप प्रागट्य करते हैं। ऊंडा अंधारे थी प्रभु परम तेजे तू ले जा। अज्ञान रूपी अंधकार से हमें ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने की शुभ भावना से हमने दीप प्रागट्य किया। Now I will request and invite Dr. P. Mohanad, the Associate Director of Research,
and nodal officer of this project of Junagadh Agriculture University, Dr. P. Manoj. Good morning, all. Dignitaries on the dais, our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Aatmanirbhar Bharat sahab, virtually attended with us, Dr. R.C. Agrawal sahab, Dr. Ganesh Bora sahab, Executive USDA, our guest of honor and key speaker, Dr. K.K. Goyal sahab, our worthy Director of Research, Dr. D.R. Mehta sahab, the co-PI and Professor and Head Renewable Energy, Dr. P.M. Chauhan, Dr. K.B. Jala, the organizer of this very important event, T.D. Mehta, co-organizing secretary, invited Dean of various faculty, Dr. Savalia Sahab, Dr. Tak Sahab, Dr. Varu, all the research scientists and professor and head, faculty members, our IT director K.C. Patel, and my dear friends, and the press and print media. On the occasion of one-day program on Aatmanirbhar Bharat, opportunities in startup and MSME, it is my pleasure to be with you. In fact, this is a dream program we could have planned much earlier, but somehow it has come into the operation with the dream of our Prime Minister, Dr. Narendra Modi sahab. He has insisted Atmanirbharta, self-dependency, and what we have the project National Agriculture Higher Education Project, under which institutional development plan is a World Bank project, and the motto of that project is to equip our UG students for being the entrepreneurs. So this is a very good startup. Under this program, we have provided the good opportunity to the students for international training. About 34 students have been benefited for international training in reputed institutes of the countries, various countries. Apart from this, so many programs within country and on the campus itself to boost up the level of the students for entrepreneurship. Under a pandemic situation also, we could be able to complete almost all the targeted tasks. And the outcome of this program, we can see many of our students have started their own business. And it is noted by the ICAR, NAHEP authorities, and ranked the Junagadh Agriculture University at #1 for consecutive 2 years. Under this program, we have developed
very good laboratory having the advanced technology related to artificial intelligence, drone technology, robotics, machine learning, and developed 3 new courses, pilot courses, so that the student can understand and can do their research work for further master or as well as the PhD program. We have developed 2 incubation center. One is related to automation in irrigation, one is related to farm mechanization. And under that farm mechanization program, we are going to organize this program, and several speakers, renowned speakers I can say, from country or from the abroad are going to deliver the lecture so that our students can be benefited. Friends, after getting degree, you may get or you may not get the services, but by getting the such knowledge, you can start this program. Our chief guest, Dr. K.K. Goel, is very renowned person in the MSME, medium, small and marginal entrepreneurs. He will certainly say about the schemes, Government of India schemes, how we can start our own business, what are the benefits we can get out of this. The whole day you will get the required information, or you can interact in various technical sessions. As far as other programs are concerned, of course, this is the 4th year of the project. It is likely to be completed by 31st March, but we can expect that it can be continued for 1 more year, because many of the institutes could not be able to complete the target due to the pandemic situation. So we are planning the similar type of program in the next whole year, so that you people, all the students, those who are not joining today or from the 3rd year or 2nd year, they will be also be benefited. You are really congratulated to get the chance for this program. I wish for the successful of this program. I thank the organizer to give me the chance for addressing. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir, for your valuable remarks. Now, Dr. Ganesh Bora, sir, is available with us. Sir, we are very fortunate to have you with us, and we would like to listen you, sir. So I request Dr. Ganesh Bora, sir, chief guest of our today's program and executive USDA USA, to share your views on the occasion. Good morning in Junagadh, and here it is 10:54 p.m. So I kind of taking advantage of virtual delivery. So it has been really good to connect with you. And as you know, Professor Godtia sir is my senior in college, so he's so kind to invite me to talk to you and mostly the students. And before I joined as a national program leader in United States Department of Agriculture, I was a professor for 15 years in mostly precision agriculture, and my background is agriculture machinery, and I have taken degrees in 3
different countries. And in India, I did my master's in AIT Bangkok, Thailand, and did my PhD in Kansas State University in US. And has been teaching, and also it has been so honored that I also was involved with a NAHEP project with Rahuri, Mahatma Kisi Phule Vidyapith, and that was when I was a professor 3 years ago. And I had some ideas going on with NAHEP and startups. And it's so nice that my PhD was funded by a startup company. So again, I'm experienced with the startup, and the precision ag digital agriculture has been used in many countries, including India, but has not yet been fully adopted in any part of the world. And with leading the precision ag group in the supposed to be most developed country in the world, and I lead the precision ag program, including AI institutes, robotic initiative, and farm of the future. I'll be talking to you more in details later on in the day. With that, I wish best in this today's program and hope to interact with the students, especially for a long time. Thank you. Thank you so much, sir. And we are eager to have you as a keynote address in our technical session. Moving with the flow, I would like to request our guest of honor of today's program and Assistant Director, MSME, Government of India, New Delhi, Dr. K.K. Goyal, sir, for the valuable remarks. Dr. K.K. Goyal, sir. Good morning to Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. N.K. Gotia. And I'm fortunate that I have been his junior in his college in Jabalpur. Other learned faculty present here, the guest speakers who are on the online mode, connected with us, and the students who are going to be the ultimate beneficiary of such a wonderful program which is being organized by Junagadh Agriculture University. I have traveled all the way from Delhi to Junagadh with a hope to meet the future prospective entrepreneurs, because Gujarat is considered to be the state which generates the entrepreneurship from the birth itself. From the birth of the person, one thinks of the business. So I will like to take this opportunity to share my experience and knowledge, whichever I have acquired during my profession, with the agriculture and allied subjects students. At the same time, I would like to share my knowledge with the faculty, what we actually, the opportunities which are prevailing nowadays in the country can be turned into the successful business. This business can be in the form of startups, or it can be in the form of MSMEs. I have been assigned 2 special sessions, and I will be covering that thing in detail during that session. But my message to all the participants here will be this, that gone are the days when we used to survive on the traditional agriculture. Nowadays, we talk of precision agriculture, use of AI and other techniques, which were not earlier even thinkable to be used in agriculture. So now it becomes more and more relevant that knowledgeable persons, educated persons, having the knowledge of agriculture in the theoretical form, in the university form, should join the farmers who have the practical experience on the ground. And you see, both of them must act synergetically to yield the results. So I will be covering the sessions in detail whenever my slots is available. I will be taking the sessions on MSMEs and startups, what are the facilities, what are the do's and don'ts, how to be successful entrepreneur. These type of things I will be looking for. If I can share my knowledge with you and if it is of some use to you, I will feel that my visit is successful. Thank you.
Thank you. Thank you very much, sir. Sir, this is the land of Saurashtra, which is known for its hospitality. आतिथ्य सत्कार के बारे में ऐतिहासिक युग से सौराष्ट्र की भूमि जानी जाती है। आज हम बहुत सदनसीब हैं कि हमारे साथ डॉक्टर के गोयल साहब उपस्थित हैं। Now I will request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Narendra Kumar Gotia sir, to felicitate our special guest, our guest of honor, Dr. K. Goyal sir. This is the symbol of love and respect. It is said in our Gujarati literature, Kathiawad Kok di Bhulo Pad Bhagwan. We will make you to forget the heaven, O God, once you visit our Saurashtra Bhumi. This is the spirit and zeal of this Saurashtra. We give our respect, our love, our honor to our guest. This is not the symbol of only this program, but the symbol of love and affection of the people of this soil, people of the land. Thank you, sir. Now our team has made an effort to make an e-content DVD, which comprises the e-content of the course material of this program. I will request our Honorable Vice Chancellor and Dr. K. Goyal sir to release this DVD, which contains the content in the e-format, specially prepared for this occasion, which will be very helpful to the participants, students of this program. Thank you. Thank you, sir, for releasing this DVD containing the e-content. Thank you very much. Now we request our Honorable Vice Chancellor, Dr. N.K. Gotia sir, for the presidential address. Good morning. On the occasion of the one-day program on Aatmanirbhar Bharat, opportunities in startup and MSME, the dignitaries on the dais and virtually, our Deputy Director General of the Education, ICR, Dr. R.C. Agrawal, who was the chief guest for today's function, but due to some unavoidable circumstances, yesterday only he has to rush to the Bikaner University, and today he is in the airport or boarded already in the flight. So that's why he may not be able to join us, but he sent his blessings to our students. I am conveying to you just now at the starting of the program from the airport of Bikaner. He told it yesterday only he rushed there and due to some program. So Dr. R.C. Agrawal, DDG Education, Dr. K. Goyal, the Deputy Director of the MSME, Government of India, New Delhi. He is the person who is an agriculture engineer, but converted himself on the entrepreneurship experts and consultant. And being that lot of work he is doing there, I usually came to know from several sources about him. But once when I got a chance to go to New Delhi and I contacted him, he told, sir, I'm organizing a big fair at Pragati Maidan. If you can come over here if you have time. I told, for half day I'm free, and I went there and I saw a very big fair on Pragati Maidan, which includes agriculture and crafts and everything.
particularly on these handicrafts and other things. A very big fair he has organized it. And I came to know about his capabilities and the expertise there. And as I got the chance, I called him that he should convey his expertise towards students for the startups and the MSME related the policies of the government of India. Another, our guest of honor is Dr. Ganesh Bora, who is the senior executive in the United States Department of Agriculture, USA. And earlier he was a professor also. He served as a professor for more than 15 years in USA. He is also a very learned man, did lot for the farm mechanization in USA. And today he is dealing with all the NAHEP policy of the USA in this United States as a consultant and as an executive in the USDA. Just like as ICAR in India, the USDA is functioning in the United States. So, sir, I most welcome to you, Dr. Bora. Another, the guest of honor was today. He's also on the route, so somehow he's not getting the connection. Mr. Praveen Sharma. He's a Flora Consult, Managing Director. He's also an agriculture engineer. He was assistant professor for a month or 2-3 months, I think, at our college, at College of Agriculture Engineering in beginning. And then he left for the South African countries as a consultant in the protected cultivation. He developed a lot. And nowadays, he's running Flora Consult, a big organization which give the consultancy for the protected cultivation, particularly the floriculture, the hydroponic, aeroponic, vertical farming, and all these things. In his lecture, he has a lecture later on in your schedule. He will give you the details about these advanced farming technologies which are coming up very fast, because the land is reducing, so we need these technologies. So these are the major people who are going to give you the keynote addresses today. Apart from them, the 3 real entrepreneurs are there, or those who have started their own startups. They will talk with you. The dignitaries on dais is Dr. D.R. Mehta, the Director of Research, Junagadh Agriculture University, Dr. P.R. Mohanot, the Associate Director of Research and the Nodal Officer of this project IDP, and also nodal for the ICR all schemes in our university. Dr. P.M. Chauhan, Head of the Department of Renewable Energy Engineering and the co-PI of the IDP, Dr. K.B. Jhala, who is the Organizing Secretary and the Head of the Department, Farm Machinery and Power Engineering, College of Agriculture Engineering Technology, Dr. T.D. Mehta, who is Associate Professor in Farm Mechanization and also the convener of SSIP recently, and under the umbrella of SSIP, actually this program is organized with the help of the IDP. And the dignitaries of the dais, Dr. S.G. Savalia, Dean, Faculty of Agriculture, Dr. P.H. Tak, Dean, Faculty of Veterinary Science and Animal Husbandry from Kamdhan University. Most welcome, sir. Dr. D.K. Baru, the Principal Horticulture. Dr. J.B. Patel, the Head of our Seed Technology Division. Dr. H.D. Rath, Head of the Department. Dr. Dhamsania, Dr. Kataria, the Research Scientist of
or cotton projects. Madam Trivedi, who is in charge of Principal of Agribusiness Management, Dr. Punil Gajjar, Dr. Wadher, the media persons, all the participants, boys and girls. Dear friends, today we are approaching in such an environment where it becomes necessary for India to become Aatmanirbhar. And I hope and believe India is one of the few countries in the world, not more, maybe 5-6 countries only in the world, who are really Aatmanirbhar. Aatmanirbhar means if certain problems comes, some problems arises, big problems, even though the country can survive itself. That is one condition. Second is for the survival, not only for the survival, but for the comfort living of these citizens. If the country is able to produce everything and supply them with demand, that is also one way of Aatmanirbhar. On second aspect, we are doing well, proceeding ahead. And one aspect that we survive in any condition with all the problems we proved in last 2.5 years in the pandemic of the COVID-19. India is the few countries in the world which remain economically stable even during these pandemic situations. And we supply cereals and grains to our poor people, maybe around 80 crores. And the government is supplying since last 2 years, and still it is extended for 6 months last day only. Have a great applause to them who are the real backbone of that is the farmers of India, who have produced so much of grain that 135 crores can eat. We supply, we export also, and it is available free of cost at that level. That much storage available with the government of India. This is helping us in supplying not only to the people at the need hour, but it is helping in other sense to the government to procure the more grains and agricultural produce from the farmers to maintain their cost and price. So in Aatmanirbhar, actually there are 5 things which are needed in the Aatmanirbhar. One is your economy. Your economy should be stable. The second thing is infrastructure. You must have that much infrastructure which provide or facilitate all the things, production and other things which can be governed through those infrastructure. So one is economy, another is the infrastructure, and third is the system. We should have very strong systems. System includes everything. Suppose we are saying we are NARESH, National Agriculture Research and Education System. So all over the India, these universities, state agriculture universities are there, and Indian Council of Agricultural Research, ICAR. So we are the system of education, the system of research. That system should be strong, the system of production. Farmers are the system of production of the food grains, vegetables, fruits and vegetables, other cereals which are required, fibers, all they are producing. That is a production system. Another production system is mechanized production system, where we are producing several types of devices which are providing comforts to the people, whether it is a car or a truck or a bus or a tractor or whatsoever we are producing, a syringe or anything, that is providing the facility to the fourth we can say is the services. Service sector is also, Indians, by seeing the nature, the service sector is increasing in India tremendously.
dominating the manufacturing sector. Actually, that is not good also. The service sector is increasing too much. Service sector, we are saying information technology and others sector that is comes under the service sector. That is also important. Services should be at the door of each person. The services should be available as and when he wants. That is another thing which requires to be developed in Aatmanirbhar Bharat. And the last but not least is the demand. We need a big demand. We have a dynamic demography. The population is increasing in India. 35% are the youths. These youths also have strength actually in our Aatmanirbharta. These youths to be educated in such a way that they should have something in hands-on training, so they can go for their entrepreneurship. They should develop some innovations that can be used for the startups. And if you are educated yourself, you will give awareness to 100 to the people, and naturally the demand will increase. The demand will increase only and only when the persons have the information. They have the knowledge of the devices or production or system or other things, and that will go through these students only. So they will increase the demand. Demand is also required naturally. If the demand is, why all the countries from even from the Western world, or now even from the Asian countries, are looking towards India? The reason is demand. We have a big demographic country. Lot of people are there. 135 crores people are there. A big demand is there, which cannot be created in other countries. Naturally, to fulfill the demand, every country has to rush towards the India. That's why few programs has been come up in the India. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, has brought several such programs. Aatmanirbhar Bharat is one of them. Then Make in India. Means even these countries, if the lot of MNCs are coming, the companies are coming, they should manufacture in India. It is not that they manufacture other parts and imports in India. So we have to reduce our imports. If we reduce our import, naturally our money will remain with us and our own people will get the employment over here. So that is another thing that we are saying, that Make in India. Make in India, Aatmanirbhar Bharat, another is Digital India. If we go fast towards the Digital India, as I told, the service sector will increase faster. Nowadays, all the students even, you are just by one hand, you are giving order for Maggie and this and that, and everything is available at your hostel door. So that is also a Digital India. You have to pay digitally, you have to buy digitally, you have to receive digitally. People will send you everything on digital level. You have to read, you have to go your studies on digital mode. Everything what today, suppose we are here, some people are here and some we are on virtual mode with us, even from USA also. So this is all the advantage we are getting of all this, the implemented policies. And Aatmanirbhar is one of them. India is always be Aatmanirbhar. Remember this thing. If we increase our demand, then only the problems comes. If we are increasing our demand, as I told, demand which should be increased, we have to go for Make in India also and our own policies. What is actually what we are saying? Dr. Goyal will tell you in his lecture, but just I want to brief you that what is generally we are saying? Startup. What is startup? Startup is not something which is available and you are manufacturing the same thing. Startup means it should be something which you have innovated. If you have innovated something, some idea, some system, some process, anything which you have innovated, and based on this, if you are starting something, that is startup.
You start up those things with your innovation and then think about its mass scale production. Not remain at small, it's scale up and go for the mass scale production. That is one thing, is startup, and then slowly it can be converted into MSME. That is a startup. For that, as I told, the word innovation has come. What is innovation? For innovation, you need the intellectual property right, IPR. That's why one lecture is kept here also on IPR also. You have to protect your intellectual property. If you have really innovative something, you feel this is first time I did, nobody did earlier, this will be useful in some sector, you go for its intellectual property rights. You will get the rights. Rights are available locally, nationally, or internationally. Yes, you wish, or yes, you feel your innovation is having impact. Accordingly, you can get the intellectual property rights also. Intellectual property rights that serve the purpose that the person who have invented, he will get all the advantage of those things. Others cannot unnecessarily snatch it from him. As it happened earlier, somebody has invented, but others are enjoying and manufacturing or having the big manufacturing firm based on his invention. And if somebody is doing that, he has to pay to the person who has invented that idea or that system or that process or anything or technology, whatsoever the purpose is. So friends, these are the things. And the last but not least, the government has already given earlier that we have to double the production of the farmers. And for doubling the production, naturally, the input has to be reduced. And we are the people, agricultural graduates, who can increase the efficiency of the inputs. So we have to increase the efficiency, input efficiency, all inputs, whatsoever it is. If it is a fertilizer, we know the maximum amount of money, as I told, we have to reduce our import. If we want to reduce our import, there are two major things where the government of India is putting his money in import. One is fertilizer, another is fuel, diesel and petrol. If we can reduce diesel and petrol, is not in our hand, because we are producing 30-40%, others we have to import. But we can change by innovation. We can go for electrified vehicles. We can go for vehicles which can run on hydrogen. These are innovations which are required from the Indian graduates. They have to go ahead on those things. Similarly, fertilizers, we are producing fertilizers, no doubt. Nitrogen fertilizers, maximum we are producing. For other fertilizers, potash and phosphorus, 90% we are importing. We can reduce that by production also, and if not producing over here, we can have our such systems where we can reduce the use of these fertilizers. So automatically the import will reduce. How to go for that? By precision agriculture. All this program, IDP was for that only, that you have to develop in artificial intelligence, machine learning, drones, robotics. In last few months only, you might have seen the drones are used in the university for the spraying of the pesticides. Fertilizer spraying, pesticide spraying, we can use the drones, and very precision spraying can be done with a little amount of fertilizers. Nano fertilizers are coming. Naturally, when you go with drones, you have to go for nano fertilizers, where small amount is required. These are emerging fields where the students have to think over. And don't think that I am a small person. Every student has that capability that he can make a big invention if he can. If he feel I can do it, he will be. So think in that way. Today's program is for that. Another thing, the major thing is coming is the 5 trillion economy. As I told, economy is the first bone of the Aatmanirbhar Bharat. Naturally, Indian economy is around 2.5 trillion to the $3 trillion US dollars. This we have to increase in coming 5 years to $5 trillion. And
agriculture is the backbone of our industries. Naturally, 45% of the export is based on agriculture sector only. So we have to improve our agriculture sector. We have, suppose in Gujarat, we have the economy at today's scene is around 0.26 trillion US dollar economy the Gujarat has, which we have to improve in 5 years to 0.46 trillion dollars. Slightly less than double. Naturally, in other states, it may be more than double also. So that's why we have to double the economy so that we can compete with the world. And to develop that, the agriculture sector has to do more and more, and not only on production side, because in production we are reaching at a saturation. As I told, we have to improve the efficiency of inputs to reduce the input. The natural farming is one of the way it is coming up to reduce the input cost. Prakartik kheti, we are saying, that also can be adopted and it can also be mobilized in the farmers. So input we have to reduce. The production which we get, it should be properly processed. It should go to the production chain, then the process chain, and then supply chain. The logistics should be proper. The cold chain should be developed in India. The proper warehouses should be there for the cereals and grains, and cold storage is required for fruits and vegetables. And then the cold chain is also required to transport them from one place to another where it is required. The demand may not be at that place more. As suppose we are producing the Kesar mango, it may not have that much demand here as it can be outside. So we have to process it, store it properly, and then transport it and make a market available other place. So marketing strategy is also a big thing. And in agriculture, there is another startup. In last 1 month before only, we have gone for the agri-tourism. That is also the new generation which is coming up in the agriculture. They can think over why only agriculture production. Allow people to come in your farm, visit your farm, and pay to you. They should learn and pay to you that what you are doing is really, it should be recognized in the society, and you will earn from that daily through your agro-tourism. So these all are the aspects where the Indian agriculture can support the Indian economy to become the Aatmanirbhar. With these words, I think there is regular lectures for you in the time. So we will talk later on sometimes. I again thank all the people who are joining physically or virtually in this one-day program of Aatmanirbhar Bharat, and hope that our students will get maximum out of this and will show their strength in future by adopting the startups and incubations. Thanks. Vande Mataram. Jai Hind. Jai Jagarvi Gujarat. Thank you so much, Gondia sir, for highlighting the opportunities and scope of Aatmanirbhar Bharat in startup and MSME. Now we are toward the end of the inauguration function, so I would like to request Dr. T.D. Mehta sir, Co-Organizing Secretary and Convener, SSIP Cell, to present vote of thanks. Good morning to all. I welcome you all at the inaugural function of Aatmanirbhar Bharat Opportunity in Startup and MSME program organized by Junagadh Agriculture University under IDP sponsored by World Bank. As we are toward the end of the inaugural program, it is my pride privilege to convey heartily thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. N.K. Ghotia sir, who have sown the seed of this program and provided all kind of support and encouragement for organizing the program. Thank you, sir. I am highly thankful to Dr. R.C. Agrawal, DDG Education, and Chief Guest of today's function for gracing the function virtually. I am also grateful to Dr. K.K. Goyal, Director MSME, Government of India, New Delhi, and key speaker of the program for being with us and sparing his valuable time and expertise with us. Thank you, sir.
I would like to convey my gratitude to Dr. D.R. Mehta, Dr. P. Mohan sir, Dr. P.M. Chauhan sir for being with us and gracing the function. I am very thankful to principal of various college, Dr. S.G. Savalia sahib, Dr. Shilpa Trivedi, Dr. D.K. Varu sahib, Dr. Tank sahib, Dr. Upadhyay sahib, Dr. Rajveer Yadav, Dr. R.M. Sattasia, retired Professor Dr. G.R. Sharma, Professor H.D. Rank, and Dr. N.K. Dhamsania. I am very thankful to all the keynote speakers who will be serving us the important and investigating interesting information on the theme in the coming session of the today, namely Dr. Ganesh Bora, Chief Guest, Executive USDA USA, Mr. Praveen Sharma, Guest of Honor, and Founder Chairman, Flora Consult Pune, Dr. Ashish Patil, CEO, Agrotech Venture Private Limited, Mumbai, Dr. Ajay Joshi, Visiting Faculty, Devi Alia University, Mr. Karthik Iyer, CEO of Startup Agriculture FinTech, and Mr. Amol R. Patil, Officer Patent Office, Government of India, Mumbai. Thank you all, and we are eager to listen you. I take the opportunity to thank Dr. K.B. Zala, Organizing Secretary and HOD FMP, for making this event possible with his painful efforts and guiding all the committee members involved in the organizing event. I am very thankful to all the faculty members from the various colleges of our university for their support and time. I'll convey my thanks to all the student participants for being present here and hope that you enjoy the next hours, which are full of useful information as far as the startup and MSME concern. I am very thankful to Dr. K.C. Patel, Director IT Cell, and his team for all their support. I am thankful to Executive Engineering Office to provide auditorium and community hall. I am thankful to Dr. V.M. Bhatt and Professor Bansi Devani for anchoring and handling the program. Once again, I convey thank to one and all who have contributed directly or indirectly for making this event successfully. Thank you. Thank you, Dr. T.D. Mehta, sir. Now we are going to start our technical sessions. We are very ready, sir, to have the detailed information on the theme. And for this, for the technical session 1, we are having Dr. Ganesh Bora, sir, Chief Guest and Executive USDA USA on virtual platform to address us. Sir, are you audible? Yes, can you hear me? Yes, sir. Sir, hand over. Let me share my presentation. Okay, sir. Can you see my presentation? No, sir, not yet. Sir, yet your screen is not visible. Okay, let me do it another way. I would like to know, sir. Yeah, I somehow cannot do that. I'm sharing my whole screen now, but Yes, sir, now it is visible. We can see your entire screen. Yes, sir, the first slide is also visible. Can you make it, sir, on the full screen? Full screen mode, sir. is it full screen mode now? Yes, sir. The slide is visible clearly. Okay. Only problem now is that I cannot see you, but that's okay. Okay, sir. So what I'll suggest that like I have very few slides, but I want it to be more interactive and all the students better like
I'll go through a little bit of information, but I want your questions so that I can answer and whatever I can do. I'll just talk to you about the data and information and advanced technology which has been used right now in US agriculture, also over like mostly Western Europe and Australia, and also how some of the things we have worked in South Asia and Southeast Asia. So the one thing, if you have seen the screen, like just under my name, my actual title here is National Program Leader. And what we do in USDA, that there are few national program leaders who look after different programs. And my major program is Farm of the Future in USA. And this is a congressionally mandated program. Congress means which is like our parliament. And the reason I'm putting this here, that when I was a kid, and I'm actually originally from Assam, and I used to go to the fields, and my dad, they're farmers. They were, my dad passed away, they were farmer, and we did farming with bullocks. And only reason I took my agriculture engineering degree that I could ride a tractor. The charm of riding a tractor took me to agriculture engineering degree. So now, fast forward 30 years, I look after Farm of the Future program in USA using AI, machine learning, robotics, drones, and we don't do any plowing anymore. These are no tillage farms. So with that, I would suggest that you that ask questions, and I'll be very happy to answer those. And just to give you some ideas, I'm sure everybody knows this. I'm just trying to see that nowadays mostly precision agriculture is called 4 Rs: putting right amount at the right time, at the right place by right methods. And for all those things, you need data. And there are lots of sources of getting data. Nowadays in US, we call it big data because you get all kind of data: soil data, water data, plant data, physiological data, yield data, anything you say, if you collect it, it's a huge data. And there are drones which are used by defense, and this is the largest drone available in the world. It's actually from Israel, and now use it in USA. So this is the drone is used by CI engines, not batteries, and it can go for 50 miles without any control. So just to show, like, if you just fly a drone for 30 minutes, you can get 16 gigabytes. So that's one of the things. How do you transfer those? How do you process those? How do you get those immediately? That's where one of the sources of startups. Again, how do you acquire the data? That can be one startup. How can you store those? How can you process those? How can you transfer those to the farmers where it is needed? Whether you use a like iPad or iPhone, everybody has some kind of these smartphones. So how can you use those information? So get this information from the drone immediately to the clouds, process the data, get it to the iPad, which can be used immediately for decision making. So these are some of the things being used here. Also, if you want to apply, say, chemicals or fertilizer or even irrigation, how you can use those data, transfer immediately to the tractor where that control is there, and apply
whatever it's needed. So these are various information you gather at different points, and data are connected to each activities in the farm. When we say farm, it's either animal systems or plant systems or aquaculture or forestry, everything where food is produced. And the data now is so important to connect to each point, each nodes, and at each node there can be a startup or a small business. And for those, university industry partnership is very, very critical. Last week I was talking about the curriculum overhaul. Mostly, if all the universities, they do like 50% of the courses are required for any degrees. Rest 50% let the students select. Doesn't matter from which college, which department, which major. Any engineering students, if they're taking more business course, that's good. If they're taking a course from the music department, that's good, because they are not only appreciating different aspects of what the business can bring, but also looking into the coordination between different specialties. So if you talk about big data, you need a policymaker, or you need justice department like law, or you might need definitely sociologists and economists and statisticians. So if you can take courses in all these things, including your specialty, that I'm guessing agriculture engineering or veterinary or agronomy or economics. So these are some of the things, like 50% should be, and those other 50% should be of the student interest, so that he can build or she can build skills. And local industry, I'm not saying national, it's the local industry which will provide the help, provide the facilities, and provide the need of the students, so that they can be absorbed in their company looking for placement. Or it also, the company university both gets help. They are helping each other in their curriculum development, as well as having a experiential learning or project-based learning. That's mostly the senior students who are, or final year students who are having a project. Especially when I was an engineering department student, I had a project. And in US, every science major has a project, including agriculture. So if those can be sponsored by industry, that will definitely encourage the students to build their own startup, or go for that company. So it's already looking into their skills based on the particular industry. So that helps a lot. Then can be again molded towards different aspects in due time. And there is project-based learning. Suppose 2, 3 courses should be based on project, not in classrooms. The project should be based on the knowledge got in, say, first year or second year or third year. If you have projects-based learning in the fourth year, then you are ahead of other students. And so what happened in the research, some countries has gone very high, some countries have like not taken that. The research done in some advanced countries cannot be transferred. The technology cannot be transferred to the other country, but the concept can be transferred. So the technology should be developed locally with the concept which has been worked. So I'll just let you know what are those concepts. Sometime, like say you have only 1 bigha or half hectare or half acre land. So for that, you cannot use a drone. You don't have that capability to buy one or rent one. So, but what data do you need? The farmers knows the land very, very well. What has happened about their land, about their crop, where did the crop didn't go well. Say when before harvesting, the farmers goes around with a pen and paper, and they put those
places where the yield was not good, the productivity is not good, just make a point on the make a map on the paper and note down what's not going well. So he gathers those information and use that for decision making. If there is a spot where it didn't go well, why? He knows that maybe there is no water content, that maybe there's some pest infected. So those information, if we can gather and use that, and next time, if things that like it's because of the fertility, so you can apply fertilizer. If it thinks that it's because of some insect, you can use insecticide. So those information can be used no matter how he gathers those information. So that's a concept. You can use that concept to develop technology locally. That's what it is more viable than taking the technology from other countries. I just wanted to give you some slides because the precision agriculture or digital agriculture, this is to make profits. Farmers need profit. We can deny that it's kind of it's a economic activities, income generating sources, so you must have profits. And for that also as environmental benefits because you are not using extra amount of fertilizer, not using excess chemicals. So that will make agriculture sustainable. So when you make profits, you are not using anything extra. You are optimizing your input, increasing the yield. So again, with that also you are reducing stress of the farm as well as the farmers, and you are protecting the environment. This is one of the main thing. You are feeding 8 billion people on the earth. Okay, that's including 1.3 billion in the country. And right now, I just checked a few minutes before. With that, you can get every seconds how this population is increasing. So 7.9 billion people. And if you see on this line that 2011 it was 7 billion people, and we are many of the people in the diocese of this area in 3 billion. And with our lifetime, we have seen from 3 billion to 8 billion people. So almost more than like 2.5 times. And those students might see many more times in the. So with that, as I said, let me make it more interactive. And any questions, I'd be very happy to take it through email or right now I'm available for any questions or you might have. क्वेश्चंस आप ही डील कर लो ना. Did I take out my screen? Students, you have any question to Professor Ganesh sir? Any questions, any type of, it doesn't have to be agriculture or like that. Any questions I'm willing to, I always tell my students when I was a professor that there is no bad questions, no good questions. Anything comes to your mind, that's a question. No question. Students,
I hope that you should ask few questions. इतना देखा है, कुछ तो questions पूछो. हिंदी में भी पूछ सकते हो. हाँ, कोई भी लैंग्वेज चलेगा. हाँ. Anybody? Now I am giving mic to a student, and he will manage. भाई क्या नाम है आपका? उठो. क्या नाम है? हेलो सर. सर आप हमें बताइए कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है? जैसे मैं बताया था कि किसी भी काम पे लाइक कैसे डाटा कलेक्ट होता है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे उसको यूज किया जाता है, कैसे डिसीजन मेकिंग होता है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट. सो एवरी वे यू कैन हैव ए स्टार्टअप. और उसके लिए यू हैव टू नो, जानना पड़ेगा कि वो किस मार्केट एनालिसिस किसका काम में आएंगे, कितना फार्मर्स उसको लेंगे. सो उसके लिए फार्मर्स से बात करना पड़ेगा, फार्मर्स को कन्विंस करना पड़ेगा कि क्या चाहिए उनको, डिपेंडिंग ऑन बिग फार्मर्स और स्मॉल फार्मर्स. एवरीबॉडी कैन हैव ए सजेशन और आंसर्स. तो फैसिलिटीज क्या बनाना है, क्या स्टार्टअप करना है, that will depend on what those farmers need. So that will depend on your market analysis. किसके लिए काम करना वो देखना पड़ेगा. So if a farmer need, okay, I want a drone to be used और मेरा फार्म में करना है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए. So that individualized activities will make your decision to build a startup. Hello, sir. I am Arsil Kokia from a student of final semester in agriculture engineering. I like to electrical power tiller. Now I am thinking about in a final stage of patenting. So if I am developing, if I am getting a patent, then if yes, I am joining. Yeah. इतना देखा है, कुछ तो हिंदी में भी पूछ सकते हो. Hello. Go ahead. अगर मैं पेटेंट लेने के बाद कोई इंडस्ट्री है जो मेरी पेटेंट कॉपी करती है, तो उसके लिए कोई क्रिएटिव कॉमन ऐसी है कि मैंने कॉपी मैंने बनाया है, लेकिन वो मेरे जैसे बना लेंगे शायद मेरे बाद में, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बाद में हम? इलेक्ट्रिकल पावर टिलर. मैं पूरा प्रैक्टिकल आंसर दूंगा. एक पेटेंट इज इंपॉर्टेंट बट दैट्स नॉट द मेन थिंग. मेन थिंग इज द पीपल यूजेस इट. सपोज यू हैव अ पेटेंट, you because you started or you invented it, so you have the first hand on it. So if somebody is copying it, using it, it's for sure that he or she cannot be better than you because you invented it. It's your technology, your brain, and you can do it. And you should be sometime happy that somebody is copying your technology, and that means they are spreading your knowledge and technology. Okay, that will only help you because you have the patent. They're thinking that it is your technology. If anything goes bad, they cannot blame you or they cannot sue you, but still your technology has got name somewhere else. So they are doing marketing for you if they are copying it for you. And
So keep that in mind, that how much market you have, the trust people have on you than the copies is very big important. So don't worry about somebody copying you. Go ahead with your work, and you'll see that those copies cannot build up on that. They cannot modify based on the stakeholders each farmers need. Because what you have done, it needs modification every year. You see everything like your phone, your computer, your tractor, everything is modified. Those who copy it, they cannot modify it. So they will kind of be dead within a year or so, but you will go ahead. Good evening, sir. Sir, as a woman, what are the best opportunities for a startup and how one can do an international exposure? Because I think India is lacking in that. Yeah, I think that's a very good question, very excellent question, because it's not being a lady, or it's being like, it's more of an international exposure, or basically what I will say, that what others accept your skill or knowledge, right? That's what the main focus is. Right now, see, there is a very common thinking or common knowledge that Indians are very good in computers. They develop apps, or they develop kind of data processing technology. And I can say about US, and I have also worked a lot with Eastern Europe and Central Asia, where I consulted a lot. So those people are very, very fond of Indian technology, especially on the computer side, software or processing. So if you can start, say, data collecting, there are lots of ways you can collect data, say, from certain, or if somebody sends you data, you can develop an app or processing part, or data sending by clouds. That would be one of the things, like, you can do it sitting at home with your knowledge or in the computers. Right now, that's very important. Also, if you can write algorithms for artificial intelligence, that would be very, very useful for even big farmers or big companies in India. Thank you, sir. I need to ask you one question related to yield monitoring. How Sure. can we enhance yield monitoring in small farms? That's my question. Thank you. See, if you see one of my slides, yield monitoring is sometime like, I'll tell you the one extreme, the smallest farmer, say you have just maybe half acre land, right? You can go to the farm or take a walk in front, like before harvesting. You can note down where those, without any sensors, without any machines, without any technology, what the farmer can do is collect, say, 10 by 10 feet or something like that, and do harvesting by hand and collect it. And if he can do that about 4 or 5 plots, he can weigh it, then he can multiply it to get the yield. So that's the smallest farmer who does not have any technology, any money. On the other side, like medium-sized farmers or like that, what they can do whenever fully harvested. So you do the weighing, right? How many quintals or how many moons of rice you can get it. And those, which area it has come, every farmer knows that, okay, this plot I have 1 acre, this plot I have 1.5 acre. So if you can calculate those, you can have a kind of approximate yield. Or some of the large farmers, definitely there is yield monitoring system with sensors used on that, basically load cells. And those are for grain crops like wheat or rice, like that. Even for tree crops, you can use some of those yield monitoring systems, which are very prevalent in this country. But
similar technology can be developed in India also. Again, going to the concept. If you know the concept, you can use or develop a technology locally. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for Thank you, Bora sir, for making us informed with the so much useful information and acquainted with the theme. And thank you so much again for the interactive session. Now, moving further, we are having Mr. Praveen Sharma, founder chairman, Flora Consult Pune, virtually with us, and is going to give lecture on agripreneurship in high-tech farming. Entrepreneurs in agriculture is equal to agripreneurs. So now we are very keenly interested to listen Mr. Praveen Sharma sir. Sir, are you audible there? I can hear you. Am I audible? Yes, sir. So, very good morning to all the dignitaries who are present. I could not join the inaugural function, but I can see my fellow colleague, my college mate Kishore Singh Jhala Sahab right in front of me on the mirror on the screen, and Dr. N.K. Gotia. I am thankful to him. He was senior to me 1 year in my college days. And of course, Dr. P.M. Chauhan must be somewhere there, whom I can see. And all the students, this auditorium is not new to me. I had been there in the past, and I was one of the assistant professor in the early days when this college was functional in a shade, long shade, instead of that big building. So I feel obliged to be here today, and it's my honor to be here to address all of you and share a bit of my experiences with you. And the subject today, what has been given, is agripreneurship. So I am an agripreneur who was an agriculture engineer who did masters and who tried to become independent by the knowledge and technology which we have learned in our colleges. So maybe I'll try to share my screen and I'll take you to the journey. Yes, sir. Please share your screen. Yes, sir. Your slide is visible. Can you please make it on a slideshow mode? Yes, sir. Now I am not visible. I can't see anyone. I can see my slide only. Yes, sir. But I want to see everyone while I am talking. So can I again change and put it in some different form? Sir, until your screen is in sharing mode, our screen will not be visible to you, sir. I see. Okay. So no problem. I start from here. Is it visible to everyone? Yes, sir. So the title is Technological Advances in Your screen Agriculture. is not visible. Your presentation is not visible, sir. Oh. I request you to again go on screen sharing mode. Yes, sir. Now your screen is visible. And I am not visible. It's okay, sir. Okay. So now you can see the title, which says Technological Advances in Agriculture, Mission 2050. Since we are addressing to the young students who are the future
of agriculture and agriculture engineering who will be serving this profession for next 30, 40 years, 50 years. We want this mission to be known to them. And before that, the brief introduction which has already been shared. This is the background where we started managing large-scale commercial farms. I also worked in Pusa Institute as a scientist, assistant professor in Junagadh, and in corporate sector, I was vice president, president in a different position. I served for quite a long time. And 97 onwards, I launched this company called Flora Consult, which is offering turnkey solutions for setting up export-oriented projects. Right now, we are engaged in vertical farming, which is very popular in developed countries, and in India also it is getting popular. These are the few projects which we have taken up. Like this one is a 27-hectare farm. It's on hydroponics, and it was growing fresh roses for international markets. Is my voice very clear? Yes, sir. Great. Now, when we talk of protected cultivation, where we want to grow something for the international markets, the most important target for us is to maintain very homogeneous, uniform quality. That's number one. And number two is to cater to market consistently 52 weeks with the same kind of volumes, which is in the demand. So you can achieve by doing that under protected cultivation and with monitoring of various parameters. In that, hydroponics is one of the most advanced methods as on today being used. So we will take through this journey. Now, this project was managed by us. Most of the technical managers, production managers, general managers were all from India, and they were all agriculture graduates, masters in agriculture, and also MBAs. This project was awarded Sainsbury's Best Grower Award. When we talk of Best Grower Award, that means this Sainsbury's is a huge supermarket chain in UK, and they are importing from different part of the world. What they do is they have technical audit of each project which is supplying to them. And when they do that technical audit, they look at multiple parameters of the project, that how project is being managed. Just to give an example, since most of you are agriculture engineers, they will check that to produce one flower, how much kilowatt hour you have consumed. So if you have, they visit 20 farms and they find that certain farm is using, say, higher pumps, which is not required, optimum size of efficiency of pumps for irrigation. Now, someone requirement is at 12 horsepower, but you are using 20 horsepower. So what do? You are wasting energy. So that energy audit they do. They also do like what kind of chemicals you are spraying. WHO has got certain guidelines. Within that only you are supposed to control the pest and diseases. So integrated pest management, how it has been done, how training of your workers has been given, how you are impacting the socio-economic fabric of that zone where you are producing. When you do all this, then they give you an award, and also there is certain rating. And that comes handy for you when your product is displayed in supermarket, because their consumers are very smart and they look at the rating of the product which is being sold. So once they see that higher rating is there, they feel proud that when they are buying, that is contributing to certain society, certain part of the world. So this is what this project had achieved. There was another project that was in Kenya, 37 hectares. It is again on hydroponics, where the media was used as a cocoa peat and perlite. These are the fresh roses which are being exported from Kenya to different part of the world. 640 workers were working in this project. So, to manage 640 workers, again, a very important thing, you have to ensure that every individual who gets into the project has got well-defined tasks and his work is appraised, is awarded time to time, and they are trained well.
here again you can see we had a lot of Indian professors who were working. So you always award the best in the project and encourage. So when you encourage your team, then you also get awarded. So this was the award we received in Holland, which was known as Dutch Flower Award in the import category. And we were the one to receive on behalf of the project. These were some other projects in India where we started in '99. It was the first hydroponic project in Pune, and it was also known for international market. They were exporting to Japanese market very regularly. Even now they are in the market. This is a project which was done in South Gujarat. This was in Karnataka. These are all hydroponic projects which during their period received various awards. Professor Swaminathan greeted them. So now we come to our main subject, that is the challenges which we have, that is world population growth. You know, right now we are around 7.8 billion people. I will just play the clock. So we are now 7.9 billion people. मतलब 790 करोड़ लोग हम इस धरती पे हैं अभी, और हर रोज करीब 1,11,000 1,12,000 लोग बढ़ रहे हैं. तो नेक्स्ट बाय 2050 ये फिगर हमारा करीब 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा. हालांकि एस्टिमेट है 9.2 9.5 बिलियन, बट जिस हिसाब से हम लोग वी ऑलरेडी रीच 8 बिलियन एंड इट इज 2022, so growth is quite fast. So now the next challenge which we have is, जो पूरी धरती पे जितना पानी है उसमें से 70% पानी हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं. 70% of water is consumed for agriculture. So that is our account. एग्रीकल्चर इंजीनियर्स के अकाउंट में 70% पानी है पूरी धरती पे. और जो अभी डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से 60% पानी वेस्ट होता है. जो हमारे पास 70% है उसका 60% is wasted. Wasted means it is lost because of poor water application efficiency. So you can imagine what kind of challenges we as agriculture engineers have. Next is the growth in urban population. As we all know, nobody wants to live in villages. Right now, around the globe, we are 50% who are living in urban population and 50% in rural. But by 2020, 2050, we are going to reach 70% in urban and only 30% will remain in the rural. मतलब गांव में खेती किसानी करने वाले लोग कम हो जाएंगे, लेकिन शहर में रहने लोग ज्यादा चले जाएंगे. पॉपुलेशन आपकी 8 से 10 मिलियन हो जाएगी और आपका खेती का करने वाले लोग कम हो जाएंगे, खाने की डिमांड बढ़ेगी. वो सब चैलेंजेस अभी हमारे ऊपर आने वाला है टू रेज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर लैंड की अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग 13 बिलियन हेक्टेयर, यस 13 बिलियन हेक्टेयर मीन्स 1300 करोड़ हेक्टेयर पूरी धरती के पास जमीन है. उसमें से 4.88 बिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर का लैंड. अब ये 4.88 बिलियन जो आज की डेट में है वो हर साल धीरे धीरे कम होते जा रहा है. एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूसिंग, दिस इज अलार्मिंग. इंडिया का ही हम डेटा लें तो करीब 2 लाख हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से करीब 8 लाख हेक्टेयर धरती हमने एग्रीकल्चर की जो मिट्टी है हमने लूज कर दी बिटवीन 2008 टू 2011. तो ये सिर्फ इंडिया का डेटा है और एवरी ईयर इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है. हम लोग हाईवेज बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, उसके हिसाब से नए नए एग्रीकल्चर लैंड को हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं. तो अगला चैलेंज क्या हो गया? नंबर 1, पानी का सही यूज करना है. एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है. एग्रीकल्चर लैंड आज जो 7 बिलियन 8 बिलियन को फीड कर रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन पॉपुलेशन जिसको फीड करना है वो 10 बिलियन तक पहुंच जाएगा. तो दिस विल बी अगेन बिगर चैलेंज फॉर अस. तो कम जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन हमको कैसे लाना,
कम पानी से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे लाना, यही हम लोगों के मेन चैलेंजेस रहने वाले हैं के साथ। तो इफेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन हम सबको मालूम है। अभी एग्रीकल्चर हमारा दो कैटेगरी में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, एक है फूड ग्रेन और दूसरा है हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट भी हमारे डेली थाली में हम खाना खाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और फूड ग्रेन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, 2007 और 2014, 2004 में पुणे का एक ही जगह से लिया हुआ फोटो है, पूरा ग्रीन था। 2014 में ये कंक्रीट का जंगल बन गया, और अभी ताजा फोटो लेंगे तो और भी ज्यादा कंजेस्टेड दिखाई देगा। तो ये सभी जगह का सीन है। आप अभी जूनागढ़ का भी टॉप व्यू लेंगे तो आपको यही सीन देखने को मिलेगा, अगर 10 साल पुराना और अभी का देखें। So this is the urbanization which is going quite fast. Now, what is urban horticulture in today's scenario? As I explained you, horticulture and food grain. Food grain has got long shelf life, we can store them and also serve them. The vegetables, they are perishable. So if it is nearer to the town, it is good. But in today's scenario, what is happening? All the sewage water which is going out of the cities, the people are growing vegetable and serving to the city, and that sewage water is having lot of toxicity, which are not the right thing. Heavy metals are there, which is cause of cancers in human being. The vegetable looks very healthy and green, but it is not healthy. So these are the challenges which you can see. One of the headline in Times of India: more vegetables today have high pesticide level, up to 100% contaminated samples. Mumbai, Delhi among the worst hit. So this is another challenge. As an agriculture engineer, we have to find out ways that how we can get into this kind of horticulture product, which can be served into the most populated urban cities at the most healthiest way, most hygienically grown. Now I'll just scroll a little faster because I will try to explain where we are going wrong, which is one of the most common things. Flood irrigation, you must be studying in your courses. When you flood irrigate, what happens? You have very poor water application efficiency. आप अगर 100 लीटर देते हैं तो प्लांट को 50-60 लीटर ही मिलता है, बाकी का डीप पर्कोलेशन लॉस और इवापोरेशन लॉस में चला जाता है. तो दिस इज वन ऑफ द inefficient method which should not be done. ये इसमें जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, that is the loss of water. Furrow irrigation, even in this, what happens? The initial plants get the longer duration, the last one get the lesser duration. Even here there is a loss, but it is little better than flood irrigation. Then sprinkler irrigation is far better than all these two, because here when you put the wall on, all the sprinklers operate together, the water application efficiency is better. It goes as high as 80% and above. Wind distortion and bit of evaporation is the loss which we face. So here you don't see that huge red color. This is a center pivot irrigation which we were using in Saudi Arabia when I was there in 1986. This single center pivot can irrigate in single circle around 50 hectares of land. And here again the water application efficiency is quite high, and application of water can be decided based on the evapotranspiration you have, and based on that you can plan the rotation speed of the center pivot. If you run it slower, you want to give higher millimeters per hour. If you run it faster, so all that is done through a controller which is at centralized place. So this controllers can plan the application rate. Drip irrigation, we all know it is one of the most popular as on today, and here efficiencies are the highest. We reach as high as 90-95%. How much you apply and what kind of emitters you are using, that is the challenge we have. Next step is again to prevent the evaporation from the land, we use the mulching, which stores the moisture. Then also it prevents the weeds from coming, give you very good root temperature. So this mulching is the thing which is now gaining popularity, and lots of companies in India are manufacturing this mulching films. This also is one of the business an agriculture engineer can take, making mulching sheets and different kind of sheets.
These days, a lot of recycling material is used even in manufacturing of drip lines and this kind of sheets. So, and this can be a small scale industry which can be set up. Now, this is another way when during the peak winters, during the heavy rains, you can make low tunnels, and these low tunnels can be made locally with local artisan. You need not to hire a big company from far to do this job for you. You can see here this gentleman has used bamboo sticks to cover his horticulture crop. At the same time, you can use the PVC pipes, which can be also used in this kind of low tunnels. They are walk-in tunnels you can make. These are again very low cost, and it is like a retractable greenhouse. You can roll out the plastic when you want sunlight, and you can cover it whenever you feel it is required. And during the rain, you can also protect. So this kind of appropriate technology can be adopted to get better production as compared to what is being done in a normal open field. Smart tunnels. Now you can see this. This is a nursery guy who made a retractable tunnel by himself, where he rolled up the curtain or rolled down depending on the requirement. But it was done by himself because he felt there is a need for this, and this added value to his business. He did not consult any agriculture engineer. He did not go for subsidy to any government, but he knew that this is going to help. So he got it done himself at his own place. So this is how we have to be innovative in thinking and finding the problems and then solutions. Now we come to the protected cultivation that's in the greenhouses. This is the most popular method, that is normal horizontal growing inside the greenhouse on soil. What you see here is the lettuces being grown, different types of lettuces, which are salad product, and they are being grown on the soil, and they are grown into a huge greenhouse, which is almost 6.5 meter at the crest and 4 meter at the gutter. And this product, which is quite exotic and high value, is being grown here. So when we grow such product in soil, though people say the soil and organic has got a better value, but especially when you grow the salad products on soil, soil has got bacteria, pathogens. There is a possibility of some contamination of dust on the plants. So these are the products which are eaten raw. You don't boil them, you don't fry them, you just take them raw. So they should be grown in most hygienic way. And that's when the hydroponic technique, which is now becoming quite popular, is being used in growing this kind of products. Now, what is hydroponics? Again, you go to the books, you will know that hydroponics is white term which denotes to soil-less cultivation. The plants may or may not be placed in a media or for root support, but objective here is the moment you take up hydroponics as your growing technique, you are taking responsibility of feeding the plants right nutrient ratios through the roots. There is no mother earth. When you grow them on the mother earth, Dharti Mata, you are applying water, there's already nutrient in the soil. So even if you miss certain days application of nutrient, plant knows how to extract on the mother earth. But when you are in hydroponics, if you miss feeding the nutrient, your plant is not going to respond. So here you take that responsibility of growing the plant. We also call it white-collared agriculture. We also call it urban farming, and there are many names which are coming up. Reason being that white-collared means you don't have to play with the grass, you don't play with the soil, you are not uprooting grass here and there. You are working in a very neat, clean, dust-free environment. You can put music in there and you can still grow vegetables. Hydroponics again is of multiple types, which you will see in the books also, but I will just read them out faster. The substrate cultivation where you use media, then nutrient film technique, then you have deep water culture, wick pot system, aquaponics where we use fish and the plant growing together, then aeroponics and vertical aeroponics. Then again there is a low pressure aeroponic and high pressure aeroponic, and A-frame and vertical stake NFT. So these are the various methods, and many more new names are coming. Recently we have started one more technique, which is we have already done some commercial farms, that is known as revoponics, where you have revolution and then aeroponics combination. That you'll see in the next slide.
So substrate cultivation, I have already shown you the roses we have grown into mass, and these projects are large-scale projects. It can be as high as 70 hectares, 100 hectares. Like in Africa, we are doing it because there we have a market for the produce which we produce. And in this, very simple components are there. You have a tray, you have a stand, and then you fill them with media into it, and the plant grows into it. Media means mostly it is coco peat or perlite. And when you grow, the crop comes very uniform. You can plan your production. You can plan to meet the international market demand. Like here, you can see these are the roses. So roses, around the world, we know there are certain occasions when roses are consumed the highest. Like there could be Mother's Day, there could be Christmas, New Year, and above all Valentine's Day, when the demand all over the world goes to the highest and the premium price is fast. So you can plan your production in such a way that entire production comes during that window of say 25th January to 10th February. So all that production which you produce between 25th to 10th February can be exported, and you can fetch the premium Valentine price. Now, those who are having pen and paper can note down this. The potential of 1 acre project. If you have a 1 acre greenhouse and you are growing roses, you have potential to produce 100,000 roses in that window of 15 days. 100,000 roses, if you produce in that window, the market price, those days, like in India this year, the domestic price itself in wholesale was 20 rupees. So 20 rupees into 100,000, that is 20 lakh rupees turnover you can make in those 15 days. That is the potential from 1 acre flower farm. Now, when we talk of 20 lakhs turnover, the operational expenses for that 1 acre for entire year is almost say 1 lakh to 1,20,000 per month. So you can have around say 14 lakh rupees the operational expenses for 12 months. You have made 20 lakhs just in those 15-20 days. You have remaining 11 months where still you will make some profit, provided you plan your things very properly. When we talk of Gujarat, in Gujarat, what is happening? We have very harsh summer. So summer is the time when you can't produce very good quality roses. But your winters are very good because from say October, November, December, January, you can produce very good quality roses and still feed the market. But yes, rose growing is very complicated, where you have to have very good idea of pest and disease management, nutrient management, post-harvest. A lot of activities, lot of training is required. But this is the field where around the globe, when you talk of protected cultivation, you will know that 70% of the world greenhouses are occupied by roses. Reason being, rose is a very long life crop. You plant it today, it will give you 7 years non-stop production after 6 months of planting. So it is like an investment in capital. Unlike any other crop, like you grow some, say cucumbers, it is just 5-6 months. You grow bell pepper, 5 to 6, 7 months. You grow gerbera, it will give you 2.5 years maximum. But roses we have got certain farms which are as old as 10 to 12 years, still giving commercial viable production. So that is the beauty of this product. And next is, it is always in demand. You can sell roses year round in the market. International market is always available, where you can even ship hundreds of thousands of roses. There will be consumption for that. Fertigation, you must have known that fertigation is one of the key for hydroponics, where you maintain the temperature, radiation, EC, pH, how much cubic meter to which greenhouse, which crop, what stage. All this data is being controlled here and monitored through a centralized point. We were discussing artificial intelligence in our previous lecture, Dr. Ganesh was talking about. So all that depends on when you are managing a project, you can get this data and you can develop the alarm kind of thing in your system. Like, there are certain fungal diseases which erupt during certain period.
when the temperature in the night is a certain level and the daytime something, and then humidity is fluctuating, and you find certain spores of fungus they develop. So whenever you have such disease, you can go backward and study what variables were there. You can freeze those variables and declare an alarm for it, so that next time similar set of variables come, the alarm blinks on your screen that this disease may occur, so you can go ahead with the preventive sprays and avoid that disease to come and spoil your crop. So this is a project in Kenya where it is being done on light. So we are talking about substrate cultivation where monitoring is done very regularly. You also monitor the drainage which is being applied. Like, in this trays, when you're applying say 10 liter, so the 3 liter will come down. The 7 liter will be consumed by the plant. But there will be time, if you apply 10 liter, the 6 liter may come down. So you have to monitor the drainage in such a way that it never exceeds 3 liter. 3 liter is acceptable, and that drainage which comes is again collected into a recycled reservoir, and again we use it into the feed. So we have a closed circuit substrate cultivation, and we don't lose water into it. Now we'll just see the comparison. Being in India, how we are different than the world. Now this is a typical Dutch greenhouse in Holland, where they are doing substrate cultivation. This is cocoa peat, but they have a very complicated system there. You can see they have a glass house. They cannot use our greenhouse where the plastic cladding material is used. They have to use the glasses because they have heavy snowfalls there. So plastic cannot bear the snow loads. So they make the glass houses. So high capital cost in making the glass house. That's the first limitation. Second is when September to March, when they have a peak market season, all these seasons come in, they have very poor light. So low light conditions are there. So they have to provide artificial light. So again, cost of energy. Then the temperature goes below zero. They have to heat their greenhouses. So again, heating means they have to burn the gases and oil to maintain the temperature in the greenhouse. These pipes which you are seeing below are the ones which are used for the heating the greenhouses. And then labor is very expensive, as high as 20 euro per hour. So in all, the cost of production growing on substrate cultivation in European countries and developed countries is very high because of this factor. So when we do it in India, we do the same setup, but we don't use artificial light, we don't do heating, we don't do cooling even, and it is done in naturally ventilated greenhouse. And the kind of structure you make is again very simple. You can see that the iron bars are used, and then the sheets are used for making the trough for the trays, and they are made at the farm itself. We buy the sheet and shape them in a tray form. So our cost is very minimal as compared to similar project done in Europe. That is the advantage we get, and of course, workforce is always cheaper as compared to the European workforce. We further go a step ahead to bring down the cost. See, end of the day, what we are doing, we are growing roses. The rose should be grown in the most appropriate way, giving right kind of feed. Here, instead of metal greenhouses, we have gone with the wooden greenhouse. And also we have gone with bamboo stands instead of a metal stand. Further, we avoided the plastic, we went with the earthen pot, which are even better because earthen pot does the cooling at the root zone, and there's a bit of aeration into it. It gives that typical matka effect to the plant. We found that it is far better than any plastic pots for growing substrate cultivation. Now, beauty is that this can be done in India very easily, but if you want some Israeli company to do that, they can't do it because they don't have local artisans who can make this kind of earthen pots. In India, every village has got artisans who can make this kind of earthen pot. So you can generate employment and hydroponic project at the same time. You have something which is appropriate for growing. And bamboos are also locally available. You can see here, this is a semi-closed system where the drainage is supplied to an open field crop.
So advantage for growing on hydroponics, these dosages, they come very uniform, homogeneous, and they look as if they are being produced in a factory. As I was explaining you, all the international buyers, they want to see how you are growing. This is a delegation of Japanese who came and they audited the project, they had seen everything. They are one of the regular importers for us. You have to do the research time to time and compare why hydroponics. So this is the research we did that we planted same variety on the soil, very good raised beds, and we planted same variety in hydroponic system in the same day, same time, and same kind of climate. And what we found that the production in hydroponics was almost 15% higher as compared to the soil based because of the faster growth of the plant and the crop cycle was faster as compared to the soil growth. This is how you produce the export bunching of products. They should look very uniform, homogeneous. It's a gift product, so it should be very nicely quality controlled when you are exporting. Now, we were talking about substrate up till now. We come to the next system, which is called nutrient film technique. Here, what happens, the roots are submerged into the flowing nutrient water and the plant grow. This is one of the most popular system. If you go to Europe, wherever you see hydroponic, it will be on this system. You go to US, it's one of the most popular systems. In India, also right now, most of the countries, almost 80%, are doing project on this kind of system. This is called horizontal NFT system. For us, we call it orthodox horizontal NFT system. Reason being for us, it is obsolete. It is like iPhone 4, iPhone 5. When we have iPhone 12, why to talk of iPhone 4? So the reason being here, what you see, if you are growing say lettuce heads, you have 15 to 20 plants per square meter. That means if you are having a greenhouse of 1,000 square meter, you will be able to grow almost 15 to 20,000 lettuce heads in 1 month. So that is a typical NFT system. This is a deep water culture where you have a nutrient filled into reservoir and the water is changed slowly into it and crop grows. It's a low energy consumption. And here again, the same plant population is acquired. This is the vertical form of NFT system where we have A-frames. Here we have as high as 25,000 plants against 15 to 20,000 into NFT system. Reason being, we make it a vertical in the A-frame size so that we get more number of plants in the same area. This is a wick pot system. Wick pot system is the water nutrients taken by capillary, and this is also one of the systems, though it is not very precise application, but yes, it is having its own importance. Aquaponics, we have already mentioned. Aquaponics means we grow fish. Fish is the main product, and the greens are the byproduct. The water which moves from the fish is good for the greens, and water goes out from the greens is good for the fish. So it is a self-supporting system, but it has got its own limitation. You have to have good knowledge of aquaculture. So this is the most advanced method, one of the advanced method I'll call it, where we do vertical NFT system. The objective is, like you saw the first slide where I had shown, lettuce being grown into a greenhouse which is 6.5 meters. So the volume of greenhouse is not being used. You invested huge money on a greenhouse, but entire volume in cubic meter is not used. So in this kind of system, we plan to use the volume of the greenhouse. So this was a project which we had done in heart of city of Baroda in 2012, where basil was grown, and it was in the near a warehouse where the promoter was exporting fresh, growing fresh basil and frying up and exporting as a spice in European market. So advantage here is you have as high as 42 plants per square meter, and 1,000 square meter you can have as high as 42,000 plants, as against 15 to 20 in a horizontal system and 25,000 in A-frame. We come to the next, that is the most advanced technology called aeroponics.
Now, this is the technology which NASA has shortlisted for growing over the Mars. In this, roots are hanging. Spray of well-defined refined nutrients are done to the roots, which is intermittent, either spray or shower, and which is monitored through a thermal sensor, so that frequency of the showers and sprays is monitored and calibrated based on the location it is being done. In this, what happens? The energy consumed is minimal, the nutrient and the water consumed is minimal, and the growth is very fast because the roots are enjoying very good aeration. So this is the reason NASA is shortlisted, because when they will have a manned mission to Mars, they want to go with minimum payload for a longer stay for their astronauts on the planet. So this technology will help them with less input and longer stay. They can produce their food for a longer duration. So right now, we are fully engaged in setting up projects in this technology. It is divided into two types. One is called linear, another is called vertical. When we call linear, linear is used for growing vertical crops. What is the vertical crop? Like capsicum, cucumbers, cherry tomatoes. These crops they themselves grow vertical, so they occupy the volume of greenhouse, and you get the production in every cubic meter of the greenhouse because they grow vertically. So you need not to have your grow system vertical. Though we have got a new technique called thrust production of tomatoes, in that we are still using the vertical grow technique. Now, one of the major advantages that you can grow this kind of wonderful cherry tomatoes on top of a factory or a hypermarket. You know, you have a big supermarket, on top there is a roof available. You grow cherry tomatoes on the top and sell at the below, which can be very fresh product for us. So this is the model for urban farming. Now this photograph which you see is on top of a garment factory, and they are producing 64 tons of cherry tomato. You can grow various types, and many agriculture engineers, they grow this kind of thing. They attract people from all over the world. You might be knowing this gentleman. So he is in love with our technology. He is in love with agriculture engineers, and we should be proud of our profession. This is one of the urban farms where we have young urban farmers who is a fresh agriculture graduate and an MBA who has set up this aeroponic farm. So if you want to become an agripreneur, this is one field where you can get in. See, this is like a black box of flight. Like in your flight, you have a black box which collect all the data. So this is our own proprietary design, which is being used in the greenhouses, where you put this box in the greenhouse, and even after 6 months, you go and you remove the memory card, you will see a graphical presentation of these 4 major parameters of the greenhouse. What are these 4 major parameters? One is called quantum light, temperature, humidity, and carbon dioxide levels. And these are the 4 major parameters which determine the productivity of the crop. You know, if the light is less, the production will be less. The temperature is high, there will be an issue. All that can be synchronized with your production trend, and you will know what is the right kind of climate suitable for my crop and which is affecting my productivity. These are the typical sequential controllers, which are again proprietary, which is meant for the aeroponic system, where we do the calibration of the root temperatures and plan operation of the showers and sprays. So these products which you produce on these systems are very much in demand. They meet all the international quality parameters. Like you have all this food chains in India, they procure, they want to buy from people like those who are growing in this technology. Because like, you know, tomatoes, if you in a burger, is a year-round 365 days people consume. And their requirement is same throughout the year. But you might have experienced that tomato supply in the market fluctuates. Sometimes
There is a lot, and sometimes it's not there. So these companies love to have a contract with those growers who can offer them 52 weeks, very consistent quantity. So this technology helps you in achieving that 52 weeks uniform production. This is the next step, that is the vertical aeroponics, and this is where our company is deeply engaged in present times, where we have reached the production of the NFT, what you have seen, 15 to 20,000 plants, 25,000 in 1,000 square meter. Here we reach in a normal greenhouse as high as 75,000 plants. So production goes 5 times more. Then the advantage is, as compared to other systems, here you can grow even the fruity products. Fruity in the sense you can grow strawberries, cherry tomatoes, jalapeno chilies. Right now we are also working on ghost pepper, which is very expensive in the market, and of course all the leafy greens. So when you do vertical like this, you are making use of entire volume of your greenhouse. So what happens? You consume less manpower because it's a composite. One place person has not to walk all over. To produce 75,000 saplings for NFT, you'll require 5,000 square meter of greenhouse. Here you do same thing in 1,000 square meter. Second is the energy consumption. To climate control, if you use fan and pad, for 15 to 20,000, you are spending fan and pad operation. The same operation will be catering for 75,000 plants. So the energy consumption per plant also reduces. So there's win-win throughout this kind of grow system. Strawberries can be grown here. Cherry tomatoes, as I was mentioning, we have a thrust production technique. This is at our R&D center. We have a center for innovation on vertical farming and training at Pune. Now, another important aspect is this product which is grown here, always there is a debate whether it's organic or non-organic. So as I explained you, this is one of the most hygienically grown product, does not grow on soil. It is very crispy, very fresh, free from any kind of pesticide, very healthy. So we don't call ourselves organic. We call ourselves as a beyond organic. And we don't fight for organic label for ourselves. Because those who know we are growing in this technique, they value this product. Again, if you want to see the career in this field, so yes, this is the industry for future. It is going to be almost 18 billion US dollar around the globe by 2026. Right now it is around 10 billion. Aeroponics is also fast growing. In the hydroponic sector, it is going to be also around 3.5 billion. This is a time lapse. You will see how the crop is grown in 30 days, just for you to understand. I'll be a little faster. Every day the crop is growing. So 30 days, your crop is ready. So 30 days, if your crop is ready, that means you produce 75,000 lettuce head in 1,000 square meter. And 75,000 lettuce head means one lettuce head in the market. If you buy from a supermarket, it costs around 50 to 60 rupees. In wholesale, even if you sell at 20 rupees, 75,000 into 20 is 15 lakh rupees revenue just for 1 month. So 1.8 crore turnover you can generate just from 1,000 square meter. This is a theoretical calculation. In India, this produce is not very popular. So 75,000 in a month selling is a big challenge. But I am talking about the potential of this. Whereas if you have similar project in a country like UK or US where the lettuce is being consumed, this economics work very well. In India right now, these products are not very popular. This is another urban farming model for everyone to see.
This is a GIDC in Surat. You can see that everywhere there are textile industries, and in the heart there is a greenhouse on the rooftop where son is an electronic engineer and father owns the factory, and they have set up a project on rooftop. So if an electronic engineer can get into agriculture, why not agriculture engineer himself? This is all being grown on the rooftop. Cherry tomatoes, basil. Sorry. So this is the potential. The strawberries, this project we have done in heart of city of Dubai. A dream for an agriculture engineer to work in a city like Dubai in the heart. Mostly when you choose agriculture engineering, you feel that you will be somewhere away in the site, playing with watershed management or the farm machinery. But now we have our own farms in the heart of the city. You can plan a huge farm in the city of Mumbai or Dubai, or it can be in any part. So the strawberries are being grown in the heart of the city. Jalapeno chilies grow wonderfully well on this. So this is another name, we call it 3D farming, grow per cubic meter. And this is our farm there. Farm means what? It's a huge warehouse of 1 acre in the heart of the city. We do it inside, so we have to provide artificial light. From 1 acre, you produce 500 tons. That is the potential capacity of production from 4,000 square meter. This is the farm. Oh, sorry. This video is not playing, but I'll just. You can see that they are using Caesar lifts. You know, this lift can take you up and down. And we have got quite a few young agriculture graduates whom we have recruited there as fresh interns. This is the latest technology. We call it revoponics, where we have this growing things, they rotate so that they save on the light cost. If you don't rotate it, you put the light on the 3 sides, so capital cost is high. Instead of that, we put only 1 light and we allow plants to rotate and take the light from the standing tube light. And this is going to be a true urban farming. Most of the people are staying in flats. So in your terrace, you can have your own cherry tomatoes and salad green. And every morning you can enjoy fresh produce which is grown by yourself. So this is the next model which we are going to promote, but this requires a thorough training of the people who want to make use of it. So thank you for your valuable time. Thank you so much, Praveen sir. It was really wonderful and informative presentation delivered by you. And our students are requested to ask the question. If you feel any query, any question, you can ask. Our one of the representative has gone to students community. Kindly ask the question. Yes. Lakhani, could you please go to the left corner of the auditorium? Good morning, sir. Is there any government policy for hydroponics? Yeah. So what happens? The kind of technology this one is right now. Hydroponics, government has got a subsidy of around 50 lakhs for promotion of hydroponics, and there are certain procedures which one has to follow. But yes, they have got certain subsidy which is as high as 50 lakh rupees or 50% of the
project cost. Sir, where we will find market for selling the products? See, the product what you have seen here is mostly exotic vegetables, and exotic vegetable market is growing in all the metro cities at a very fast pace. So marketing is a challenge, as I told you in the beginning only. In India, the exotic greens and vegetables especially is still a growing market. So one has to have very good marketing strategy right in the beginning before he gets into the project investment. So in case if you decide to go for this kind of project, you must allocate almost 15% of your capital cost for market promotion and development. Number one. And number two, you should imagine that in the first year, you won't be able to generate very good revenue. So you should have enough operational expenses to meet your project cost for 1 year in your safety. Though you may start earning the revenue from very first month or third month or 4th month, but to make sure that you are consistently present in the market, you should not plan a project in a way that you will sell and money will come and then you will put the money into your project. So when you run it continuously, 12 months without any break in between, and you maintain the consistency, you develop reputation in the market and people start respecting you and you generate a market base for your product. So yes, marketing is the key here. If you are not confident of marketing, then most of the people fail because they fail to market the produce. Very nice to hear you. PM Chauhan. Namaskar, Chauhan Sahab. I can't see you. Okay. Wish I could see you. Now you can, I hope. Friends, Praveen Sharma એ અમારા senior colleague છે. CTI ઉદયપુરમાં he was doing MTech in soil water engineering. અને એ ટાઈમે તેઓ એક નેશનલ બાસ્કેટબોલ પ્લેયર પણ હતા. અને he was આ બિઝનેસની અંદર મને જ્યાં સુધી ધ્યાન છે ત્યાં સુધી ઇન્ડિયામાં એક ટોપ કન્સલ્ટન્ટ છે ગ્રીન હાઉસના. અને નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા બટ કેન્યા, હોલેન્ડ, યુરોપિયન અધર કન્ટ્રીઝમાં પણ ઇઝ ગિવિંગ ગુડ સર્વિસીસ. એટલે એક એગ્રીકલ્ચર એન્જિનિયર હોવાથી તમને એક ખૂબ ઇઝી એસેસ મળશે એમનું. કે જ્યારે પણ તમને એમની જરૂરિયાત હોય તો યુ કેન ડાયરેક્ટલી કન્સલ્ટ હિમ. ધીસ ઇઝ ધી a very good opportunity for you people that you can connect with the agriculture engineers in number of entrepreneurship field. એક અમારું એક ગ્રુપ છે CTI, એની અંદર ઘણા એન્ટરપ્રેન્યોર્સ એગ્રીકલ્ચર એન્જિનિયર પણ છે. એટલે I request to the organizers also that they can develop a similar entrepreneurs type of the WhatsApp group and put the young engineers in that group so that they can interact with this kind of the successful entrepreneurs in agriculture engineering area. यहाँ સુધી प्रवीण शर्मा जी का सवाल है, तो he has recently delivered his good lecture at CTI Udaipur also, and he is actively interacting in CTI group, and he is giving his good service towards the hydroponic cultivation and vertical cultivation in India as well as in abroad. And he has rightly said that lettuce and other type of vegetables can be grown in the city area and urban area where there is a difficulty of getting the vegetables, particularly in Leh and Ladakh region, where there is a very much difficulty in getting the vegetables. If you can have an opportunity to interact with the
Leh Ladakh hotels, then you have a very good opportunity in vertical farming and greenhouse technology, I think. So it's a very nice to listen you, Mohanji, and thank you very much for giving your time in this lecture. Thank you. Thank you so much, Dr. Chauhan. Thank you so much. Thank you. I feel as if I am in the campus right now. Guna Tirtha Society just nearby. I just came from there. That's what I feel. So thank you, Dr. Chauhan. Yeah, ma'am, you can go ahead. Yes, sir, and we indeed feel that you are the part of this university. Now, thank you so much, sir, for Myself, Praveen Sharma, PK Singh have joined together in university, and we were staying in Gunatit Nagar. Thank you reminding me. Yes. पुरानी यादें ताज़ा हो गई, sir. Thank you so much. Yes. Thank you so much, sir, for the wonderful presentation. Kishore Singh Jala over here. Students have shown the potential of this business. Looking to that potential, the questions from student side should be there. How you can be involved in this sort of business and fetch maximum out of it. I was expecting many questions from your side, but none of the question has come up. Is there anyone who wish to raise the question? Okay, good. Very good morning, sir. Hello. Very good morning, sir. Very good morning. Sir, you told several technologies which are like hydroponics, aeroponics. I think these technologies are required to control environment. That is nothing but greenhouse effect. But after that, 1980, sir, when we adopt a greenhouse technology in India, but we are limited in the level of universities, then what are the problems we are facing that we are not using more and more greenhouse effect? And also you told several technologies like vertical farming, aeroponics, we use agri houses. But so my question is, here we use different types of sensors and different modern technology inside it. Then and in India, most of the farmers are marginal and unskilled. If they adopt these technologies, then how they overcome? And another my main concern is what are the plans of government of India to boost in this field? Thank you. Yeah, very good question. Am I audible? Yes, sir. Yeah. See, this question is repeatedly asked to me, and that's the reason in my presentation I started from a typical open field cultivation, and then we came up to the vertical farming. So our objective as an agriculture professional is that suppose you move around a village and you come across a group of farmers who are growing vegetables. Now those farmers are growing vegetable through generations, but they are using certain traditional method. So if you go and you tell them that you put a greenhouse and put vertical farming there and you will be very successful, it will not be right thing to do. Right thing will be that if they are growing say simple check basin system of cultivation, you suggest them to go with say low tunnels or walk-in tunnels. That's the first graduation. We call it they have to be graduate from one step to the next step. So step number one, if they are doing certain activity, you just try to improvise and find out their pain areas. Pain area means what affects their crop, why they can't take the 52 weeks the same production, what are the limitations they are getting. So you work on improvising that to step number 2, and then step number 3 is you keep on reaching to then vertical level. Because these vertical farmings are very high investment projects. That's why you see that projects what we do are in Middle East, where they are depending on the 100% imports. But in India, we do it very carefully. We talk to our clients very clearly that the produce will be there, but you should be able to market as a brand in the market, and it will be a long term. So in India also, if you want to go to farmer with this technology, this is not the right time. But there are ways you can
help the farmer to improvise in their precision farming and protected cultivation by graduating them from the existing method of cultivation. So yes, it will take time, but again, like we have a Star Bazaar. Star Bazaar has got their outlets in Bangalore, Hyderabad, Mumbai, and they have well-defined consumption of lettuces, cherry tomatoes, and all the exotic greens. They know that this much they require every day. It is very well-defined demand. So if you can have a production facility which can cater to that demand and have a deal with them, yes, it is going to be a win-win situation for both. If you produce and you are after production, you look for the market, you have to have patience. So that should be done by the entrepreneurs who have got that kind of mindset. Farmers, you have to work with the technology graduation step by step. I hope I answered you. Other than this, any question? Fast. Sir, what are the key knowledge we should have before starting a startup? What are the key knowledge should we have before starting a startup? Before starting a startup, the first thing is you have to have a very thorough study of the field where you want to jump in. And then once you have full confidence that you can do that, you have to have self-discipline to ensure and the strong willpower to achieve. The startup, what happens as on today, there is a wide flow of startups. There are so many people are jumping into it. They are pitching for the investments from all over, but not all of them are successful. So yes, you have to have very strong belief on that. And always we suggest that the fresh gentlemen should first join as interns in certain big organizations, understand the trick of the trade, and then only they should jump into startup. So I don't recommend fresh students to jump straight away. If at all you want to jump in, then you must have a mentor who has got a good experience, and he should be part of the startup. Then it can be channelized well. Thank you, sir. Yeah, thank you. Just to add on, you might have known one of the biggest successful startup, that is Big Basket. Big Basket founders, one of them is an agriculture engineer. And recently we had him in one of our alumni meet. And his view was same, that you should look for the pain area. Pain area in the sense, like when you're in a village and you're among the farmer, you have to see what is troubling them. And if you find a solution for it, the solution should be such that which should give a startup. It should be a business for you as well as it should help the farmers. So that kind of opportunity one has to look. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि ये जो आपने टेक्निक बताई वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर एंड एक्सोटिक वैरायटी के लिए लिमिटेड है कि वी हैव अदर ऑप्शंस टू, और इफ यस देन इज इट अफोर्डेबल टू फार्मर्स? See, right now we are growing, like you saw cherry tomatoes, you can grow even the table tomatoes on that. You grow Olepino chilies, so you can grow even the Deshi chilies on that. So technology for growing is there, you can use it. Objective is that the kind of productivity which you'll get and the marketing, how comfortably you can do and what revenue you can generate. As far as technology is concerned, yes, it is proven and it can be used for growing. Even cucumbers grow very well. The watermelon can be grown, and you can grow different kind of vegetables on this. So yes, you can grow, but you have to plan the marketing and production scheduling in a proper way. Sir, but it requires a high initial investment. So is it available to farmers? No, we don't recommend it for the farmers as of now. Okay, sir. Is there any another question from students' side? I would like to question to Sarmaji.
Sarmaji, in what way you can help me in providing this sort of training to my students if at all they wish to have this sort of training? Yeah, that's the best question, sir. And see, right now we have got a Center for Innovation in Vertical Farming and Training, which is in the formative shape. The training is in the formative shape. We are going to launch that training officially, mostly by month of May. And once we launch it, then there will be a sort of training modules for 1 month, 3 months, and also 1 week. So based on that, we will be circulating to all the agriculture universities also those modules where they will be residential type. There is one module where there will be a technopreneur module where somebody can come and learn right now from how to raise a greenhouse, how to install a total system, and then after that how to grow also. So we will be we are right now it's under preparation, and yes, once we are through, I will be circulating to all the universities, and we'll be very happy to have a student from our university in Junagadh. Okay, let me be somewhat selfish. Can you provide the training to senior citizens? Of course. Senior citizen, we are all now 60, so it will be fun. Whosoever is going to retire or something like that? Yes. Yes, that will be like a risk. You have yoga centers, so we'll be having training in such a way that you come, relax, and also learn something and go back. Because our center is at Lonavala, and then there will be a small pilgrimage to Dharampaji's farmhouse to shake hand with him and come back. Okay, in that case, I may be the first one to approach you. Yes, you're most welcome, Jala Sahib. One more thing I would like to let you know that I am having Dr. Gulshan Sharma over here. Oh. Namaskar, Dr. Gulshan. Namaskar, sir. Namaskar. Nice to listen to you, sir. So nice to see. I am in Junagadh right now. Yeah. So nice to see you, Dr. Gulshan. Or sir, everything is fine. Yes, everything is fine. I understand you have retired now. Yeah. You are still active. That's good to see. Yeah, you can add the name in the senior citizen, G.R. Sharma. So I will join the training also. You are our senior, sir. Thank you, dear. We'll meet later. Thank you, sir. Thank you. Sir, we have one more question from our student. Good afternoon, sir. Sir, Very good afternoon. as we are seeing that water is deficient in our society now day to day, and so why one should switch to an hydroponic? Because in agriculture also we are looking for the ways to how to minimize the use of water, and we are switching to hydroponics. So what's your review on this? See, switching to hydroponics that's what we have categories like food grain. We have seen what kind of technology you use for water application. But when it comes to hydroponic, advantage is that whatever water you are giving to the plant consumes, and the remaining is again back to you. Those I don't know on which are you in final year or in third year, but in irrigation management we are taught how to find out the water requirement of a plant. So we have different methods like Blanick Cradle method, modified Panman method, radiation method, and above all, there is a basic method called lysimeter. So in lysimeter, what we do, we put the plant, we apply the water, and we wait, and then we see how much water is being consumed by the plant. Here in hydroponics, advantage is that you can really measure how much water is being consumed by plant on a daily basis. So this technology, yes, it is the future of farming, but it has got very high capital cost, which is the limiting factor. Today, the vertical farming models which you have seen, just for making a normal greenhouse, it costs you 1.4 crores for 1,000 square meter. The investment is huge.
But again, returns are equally good provided you have a market for these products. So hydroponics, yes, it is gaining popularity, and like Dr. Jhala said, that senior citizen also want to do something in their own field. Kitchen gardens are going to be popular, so you can start growing your own vegetables. So that kind of hobby groups can also become part of urban farming community. So that is the future, which with time you will have most of the people will be self-sufficient. Like in energy, we are trying to have our own solar power unit on the top. We generate our own electricity. Same way, people will be working on how to produce your own vegetables at your own limited spaces. So yes, that is the future, and with time it will come because it requires knowledge, training, and adaptability with time. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir, for answering the questions from student side. And thank you so much for the kind words and the presentation. Now, moving with the flow, we are having very esteemed personality with us who is engaged in MSME. This whole day program is emphasizing on Aatmanirbhar Bharat, opportunities, startup, MSME. So how we can link these words? So highlighting these things, important of the words, we are having with us Dr. K.K. Goel sir, Assistant Director, MSME, Government of India, New Delhi, who is going to deliver very useful information to our students. Before that, I would like to inform our students that you are going to have very useful information for which you are going to receive 2 certificates, one from our side and one from the patent office. So who will be attending the entire sessions will only be receiving the certificates. Our volunteers are coming toward you to collect the attendance. So kindly attend the training with silence and cooperation. Now I would like to request Dr. K.K. Goel sir. We welcome you, sir. Thank you, ma'am. Good morning. Good morning, everybody. I was expecting this type of response. Hello, am I audible? Yes. Am I audible? Okay. Good morning, everybody. Oh, my goodness. I was expecting this type of thing. Good morning. Great. I can understand here. I also have been a student of your age. And after having such long sessions, one can get really bored. And probably the organizers were also thinking like that. That's why they have to announce some incentive just before my session. Thank you, ma'am. You have announced an incentive, you will be getting the certificate. And not one. How many? How many certificates? 2. So you will be getting 2 certificates. But my suggestion will be, don't just stay up for the certificates, please. Okay. Okay. Hello. So please don't stay on just for the sake of certificate. Please attend the session, and not just attend the session, rather participate in the session. Because these are the opportunities which are generally not available otherwise. Maybe you are spending few hours with us, but you will be getting a lot of knowledge. Like we had seen our 2 earlier speakers, and not only 2, rather actually our Honorable Vice Chancellor also, because he has covered the entire topics in very short time. So my suggestion will be, please be attentive and please participate in the program. Don't just simply attend. Because gone are the days, जबकि हम कुछ भी कर लेते थे, कुछ भी समझ में आ जाता था, and everything was settled. Now you have to struggle for that. Are you ready for that? Sure. So I would like to change the strategy to cover the session. If you please permit me, and I seek this permission from the organizers also, because these sessions are usually long, very long.
I will like to stop intermittently sometime in between and they give the opportunity to raise the questions. Agreed, sir? Permitted? Okay. So, friends, my topic is to cover MSMEs and startups. Again, this is a bit different than pure agriculture. So, first of all, I would like to break a myth that you being qualified agriculture professional need not to venture into the field of agriculture only or any field related to agriculture enterprises only. Clear? You are having a professional degree, you are having professional knowledge, and you can enter into any venture of your interest. It need not to be directly related with agriculture. You can venture into your own interest because you have got admission into this agriculture colleges, maybe in the agriculture, maybe in the agriculture engineering, or maybe in some other field. That's why you are studying this subject, but maybe you are having a different subject. You remember Three Idiots? Okay, so Three Idiots used to cover this type of thing, and I strongly suggest please pursue your interest. I will like to quote my own example. I have studied agriculture engineering. But later on, I switched over to industrial management in IIT Kharagpur. I could have gone into any branch of agriculture engineering, and it was really tough to get into industrial management, but I had a liking towards entrepreneurship. So I opted for industrial management, which was the subject available in IIT Kharagpur. And I pursued it to the extent that I found that motivating the entrepreneurs, particularly in a small sector, is my passion. Friends, I don't have a hesitation to share. Even I started my own entrepreneurship in 85, 87. Okay. And I utterly failed. Can I use the mic, sir? Any cordless mic? Okay, so I really entered into entrepreneurship and I failed because I had not done the calculation. I manufactured the product with the engineering knowledge, everything was okay. I could produce it at a very competitive rates with good quality, but I failed in one thing. Am I audible? Am I audible now? May I request you, backbenchers, please come forward. Backbenchers, please come forward, otherwise I will have to go to that side. You want me to climb the chairs? Stairs, you want me to climb the stairs? Because I can come to that side. You see, I have a very bad habit, sir. I have a very bad habit because I understand the backbenchers are the smartest persons. So I will have to go there. Sir, there is no restriction that I have to be here on this stage. So shall I go to that side or you are coming forward? It is a sincere request, dear. Please come forward. And I can assure you, in my session, you will not get bored. एक चीज है, नहीं कोई बात नहीं सर लेट मी दोस्तों हम लोग भाषा क्या रखें शुड वी यूज इंग्लिश और शुड वी यूज हिंदी अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो गुजराती so otherwise we can use one thing Hindi English mix so what you want Hindi or English or mixed oh great आप लोग को पता है कि राष्ट्रीय भोजन क्या है इंडिया का आपको पता है ना राष्ट्रीय पक्षी क्या है नेशनल बर्ड प्लीज यार आप लोग आगे आ जाओ प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है यार आना चाहोगे नहीं लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली हेल्पिंग नहीं आओगे कोई बात नहीं चलो ठीक थोड़ी देर बाद सही सर्टिफिकेट के लिए सर उनको एक सर्टिफिकेट दीजिएगा मेरी एक रिक्वेस्ट है मैडम पीछे वालों को एक सर्टिफिकेट दीजिएगा आगे वालों को दो पीछे वालों को ठीक अभी आ जाओ आना है तो किसी को नहीं ओके चलो खैर एनीवे तो आप लोग बताओ व्हाट इज द नेशनल बर्ड है मोर ओके so you know national flag etc do you know what is national food of India khichdi okay so we will be speaking in khichdi language that is Hindi and English you have opted for that easy to digest है ना it is very easy to digest oh thank you dear आप लोग का नाम क्या है यार एक किसी का नाम बताओ जरा विजय थैंक यू विजय अरे यार अमिताभ बच्चन का नाम हुआ करता था
थैंक यू अमिताभ बच्चन। वो जय विजय उनके नाम हुआ करता था ना, अमिताभ बच्चन के। माय गुडनेस। और भी कुछ है पीछे कोई बैठे हुए अमिताभ बच्चन और आगे आना चाहेंगे जो? एनीबडी एल्स? प्लीज कम फॉरवर्ड। एनीवे चलो कोई बात नहीं, चलो बाद में देखते हैं। अच्छा दोस्तों, तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, ये कि एमएसएमई काफी आता है। व्हाट इज दिस एमएसएमई? कैन एनीबडी हेल्प मी? व्हाट इज एमएसएमई? Micro, small and medium enterprises. Very good. But what is micro, small and medium enterprises? दोस्तों आपका जो जवाब है ना, ये मुझे एक चीज याद दिलाता है। जब हम लोग स्टूडेंट थे, ओह थैंक यू, मैं तो डर गया था। एनीवे, तो जब हम लोग स्टूडेंट थे ना, तो एक इंग्लिश का पेपर था, उसमें एक वर्ड आया, यूज इन और सेंटेंस, एंड द वर्ड वाज परफॉर्मेंस। व्हाट वाज दैट वर्ड? परफॉर्मेंस। एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स डिडंट नो द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। उसको नहीं पता था कि परफॉर्मेंस की मीनिंग क्या है और कैसे उसको यूज करे, बट ही वाज ए स्मार्ट गाय लाइक दोस बैक बेंचर्स। उसने क्या यूज किया? सर, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस। दिस ही हैज यूज्ड द सेंटेंस। वो गलत कर सकते हैं उसको? नहीं। So the same way, MSME, saying that MSME is micro, small and medium enterprises is just like that. But I have a question. What is MSME? What is micro, small and medium enterprises? Can anybody from Junagadh University help me? Challenge to Junagadh University. Come on, Junagadh. Oh, very good. What is your name? आशुतोष के हाथ में इज्जत है। और कोई? एनीबडी एल्स? और कोई भी नहीं? आशुतोष, तुम्हारा नाम सचिन तेंदुलकर होना चाहिए या बस धोनी होना चाहिए? नहीं, तुम्हारा नाम आशुतोष नहीं हो सकता। धोनी नाम तो नहीं है, हैं? आशुतोष धोनी। और कोई? एनीबडी एल्स? फ्रेंड्स, इट इज वेरी इजी। आई एम श्योर आशुतोष also may not be knowing it. Let me tell you very frankly, आशुतोष also may not be knowing it. तो आशुतोष भाई, आपकी इज्जत दांव पे लगा दूं? बोलो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सर थोड़ा सा हम लोग को इसलिए इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इधर आओ यार, ऊपर आओ यार, कमाल है। आप तो बल्कि वहां बैठो सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ बोलो। If in a company there is a 3 to 5 people, then it is micro enterprise. Then it is 5 to 25. Then it is medium, small enterprise, and more than 25. Then it is medium enterprise. वेरी गुड। समझ गए? सब लोग को समझ में आ गया? जाओ मत यार, ठीक है? सब लोग को समझ में आ गया? ये इंफॉर्मेशन गलत है, कोई बात नहीं। बट आई अप्रिशिएट आशुतोष फॉर वन थिंग, आई विल टेल यू व्हाई। अच्छा, ये चैलेंज फिर से ओपन है सबके लिए। कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द करेक्ट थिंग? हु विल लाइक टू आंसर? यस, कम ऑन फर्स्ट। इसलिए वो बोला था यार, यहीं आ जाओ। हाँ, और कोई? अब मैं बाद में अलाउ नहीं करूंगा आगे आने के लिए, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आगे आते जाओ। हाँ। It's enterprises you can classify on the basis of turnover. Turnover, very good. Good. First, micro, small, and medium. हाँ, you can classify. तो कितना? वो तो बताओ। So I don't know exact figure, but चलेगा। देखो दोस्त, मैं आपकी भी तारीफ करूंगा। नाम क्या आपका? जय, चोटलिया जय। चोटलिया जय। चोटलिया जय, ओके। हाँ ठीक, बताओ अंदाजा बताओ कितना होगा? कोई बात नहीं, जो समझ में आता बोलो। 1 करोड़ बोलो। 1 करोड़ 1 करोड़, वेरी गुड। 1 करोड़ और ठीक है, चलेगा। और 1 करोड़ 1 to 5 करोड़ and more than 5 करोड़। अच्छा, शाबाश, कुछ तो बोलना है। वो होता था ना एक एग्जाम में कि पेपर भर के तो आओ, टीचर अपने आप देख लेगा मुझे दिया था क्या हुआ, उसको तो आंसर आता होगा, कहीं ना कहीं तो तुक्का लगेगा। ठीक है, लेकिन दोस्त मैं इसका भी तारीफ करूंगा। आप भी आओगे? आ जाओ, जल्दी से आओ यार, जल्दी से आओ। धीरे धीरे यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी कि मुझको कहते आप बाहर जाओ, ठीक है ना? हाँ बोलो। माइक्रो एंटरप्राइज वो है जिसका इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट और मशीनरी इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, 10 लाख से ज्यादा नहीं है। आई शाबाश। हाँ। स्मॉल एंटरप्राइज वो है 10 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम। ओए बाप रे। हाँ। और
मीडियम एंटरप्राइज वो है 5 करोड़ से ज्यादा, बट नॉट एक्सीड 10 करोड़। आपका नाम क्या है? हर्षित गजरा। अच्छी, वेरी गुड। चलो ये भी गलत है। और कोई बोलना चाहेगा? जूनागढ़ क्या हुआ? माय गुडनेस यार, जूनागढ़ कोई फायदा नहीं सर। असल में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मत बिठाया कीजिए। ये जो है ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बिठाइए, उनको ज्यादा पता होता है। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे ना तो ज्यादा पता होगा। फाइनल ईयर में तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर 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 क्या रखा है दूसरी चीज में। सर कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाएगी। बताओ और कोई बता सकता है? एनीवे आई अप्रिशिएट दिस थ्री गाइस बिकॉज दे हैव शोन एन एंटरप्रेन्योरल क्वालिटी। इन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी बताई, इनिशिएटिव लिया। दे हैव ट्राइड टू टेक द इनिशिएटिव। थैंक यू डियर, but the information is wrong. Let me tell you what is the right information. Correct? Yes. Next. There are so many MSME. बेटा आप आराम से बैठो, यहाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हमें और जरूरत पड़ेगी बार बार ना। नहीं देखिए, मैं कभी किसी के हंसी नहीं उड़ाऊंगा। बेटा इधर ही बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आराम से। लड़कियों के बगल में तो नहीं बैठना है ना, ऐसा तो नहीं है? ठीक, देखो बिठा दिया तुमको। शाबाश। अच्छा सुनिए, ऐसा है कि वी मस्ट रियली अंडरस्टैंड कि हम लोग लर्निंग विद फन करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? और थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से हमें जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी कोई फायदा। तो पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो ना? एमएसएमईज हैं पूरे इंडिया में, बहुत सारी एमएसएमईज हैं। कितनी कितनी एमएसएमईज होंगी? बोलो जोर से। 6.34 करोड़। ये सारी के सारी रजिस्टर्ड भी नहीं है, ठीक? एक अंदाजा है कि 6.34 करोड़ होगी, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स वाले आप लोगों से स्टेटिस्टिक्स पढ़ी किसी ने? हाथ खड़ा करो जिसने पढ़ी है। यार हाथ खड़ा करो तो ऐसे करो ना सर। स्टेटिस्टिक्स का पेपर ही नहीं है आपके यहाँ? अच्छा पढ़ी नहीं है, रटी है, हैं? चल पास हो गए, वेरी गुड। पिछले क्वेश्चन पेपर देख के 3 साल के 4 साल के 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो, क्वेश्चन तो वही आएगा, ठीक है ना? और आजकल तो ऑनलाइन का हो गया, विदाउट एग्जाम पास। सबसे बढ़िया हिसाब, कितना बिंदास हिसाब किताब है। नहीं क्या जरूरत है सर पढ़ने लिखने की, वैसे ही पास, मास्टर पास, स्टूडेंट पास, सब लोग पास। अच्छा खैर, ऐसा है कि ये स्टेटिस्टिक्स वालों का अंदाजा है, क्योंकि सारे की कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है। और गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के अपने एमएसएमई चला सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपको अपनी एमएसएमई चलानी है तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट लेना है, कोई इंसेंटिव लेना है, कोई सब्सिडी लेनी है, तो आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। क्लियर? क्लियर हो गई मेरी बात? चलो नेक्स्ट लीजिए। ओह माय गॉड, सेम क्वेश्चन यार, ये सर बार बार इसी पे अटके हुए। नेक्स्ट दिखाओ मैडम, जल्दी से दिखाओ, नहीं तो गाली देंगे सब लोग। नकल मारो जल्दी से, ओपन बुक एग्जाम। जो में 2 दाढ़ी वाले बैठे हैं, वो कहता है इशारा ऐसे, इधर बाजू वाला, इधर वाले से। हाँ बताओ, पढ़ो पढ़ो बेटा, खड़े होकर बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। व्हाट इज एमएसएमई? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। 3 कैटेगरीज, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो के लिए कितना है? 2 क्राइटेरिया, सॉरी 2 क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट और एक क्राइटेरिया टर्नओवर। दोनों क्राइटेरिया साइमल्टेनियसली एक साथ में पूरे होने चाहिए उस कैटेगरी में आने के लिए। एनी डाउट? नो, गुड। अच्छा अब माइक्रो के लिए क्या क्राइटेरिया है? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़, गुड। स्मॉल के लिए 10 करोड़। 10 करोड़ व्हाट? तो बोलो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़। वेरी इजी टू रिमेंबर, 1 10 50 5 टाइम्स टर्नओवर। सब लोग बोले एक बार, 1 10 50 5 टाइम्स टर्नओवर। बोलो 5 टाइम्स टर्नओवर।
क्लियर हो गया? नाउ आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, और आप लोग को हाथ खड़े करना है। प्लीज सब लोग हाथ खड़ा करेंगे जिसको आंसर पता है। जो हाँ बोलेंगे हाथ खड़ा करेंगे, जो ना बोलेंगे हाथ खड़ा नहीं करेंगे। और हाथ खड़ा करेंगे तो ऐसा करेंगे सो दैट आई कैन सी दैट। एग्रीड? मेरी एक इंडस्ट्री है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 80 लाख, 80 लाख, टर्नओवर 6 करोड़। कौन से टाइप की हूं? माइक्रो, हाथ खड़ा करें जो माइक्रो वाले हैं। स्मॉल, मीडियम, और जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया जाके डॉक्टर को दिखा लेना, क्योंकि उनके हाथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ऑर्थोपेडिशियन के पास जरूर जाना है, क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम, हाथ उठते ही नहीं है। अगर मान लो बाबा रामदेव के पास जाएंगे ना तो बाहर, तो क्या बोले इसका हाथ ही नहीं उठता, इसका क्या करूं? फिर से पूछता हूं, माइक्रो वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। स्मॉल वाले? अब तो खड़े। वाह, आई एम गुड डॉक्टर सर, तुरंत इलाज किया, तुरंत। क्यों? हाँ, स्मॉल वाले कितने हैं? हाथ खड़ा करो। नहीं स्मॉल नहीं यार, क्यों नाराज हो रहे हो यार? अच्छा, माइक्रो में है या मीडियम में? अच्छा, मीडियम वाले कितने हैं? ये त्रिमूर्ति जो बैठे हैं ना, ये कहता सर मुझे क्या लेना देना, कुछ भी होंगे। एक जोक याद आ रहा होगा आप लोग को कि स्कूल में एक इंस्पेक्टर पहुंचा और पूछता है शिवजी का धनुष किसने तोड़ा? याद आया आप लोग को? है ना? तो उसमें से जैसे टीचर बोलते हैं, वो स्टूडेंट्स बोलते हैं, एक कहता बोला साहब मैं तो उस दिन आया ही नहीं था। एक कहता बोला कि साहब मुझे नहीं पता, किसी ने तोड़ा होगा लेकिन मैं नहीं तोड़ा। तो इस टाइम के बाद बोला साहब मुझे क्या लेना देना, आप पूछते रहो ना। बोला हमको तो 2 सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आगे आके बैठे। क्यों? अरे आप लोग किसी में तो हाथ खड़ा करो, माइक्रो है स्मॉल है बोलो तो बोलो। हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? हैं? नाम बताओ आपका क्या है? हैं? बेटा अगर इंटरेस्ट नहीं है तो बाहर जाओ। देखो दोस्त, मैं सबसे ओपनली बोलता हूं, जिसका इंटरेस्ट नहीं हो प्लीज बाहर चले जाओ, ठीक? या फिर आप लोग इन्वॉल्व होइए। मैं दिल्ली से चल के स्पेशली इसके लिए आया हूं क्योंकि आपके जो वाइस चांसलर वो मेरे सीनियर रहे हैं। उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था, बोले किरण तुम्हें जरूर आना है, लेकिन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आई एम वेरी सॉरी, आई विल हैव टू टेल योर वाइस चांसलर कि सर आप यूनिवर्सिटी नहीं चला रहे, यूनिवर्सिटी में कोई दम नहीं है। प्लीज आप लोग या तो रिस्पॉन्सिव बनिए, या इंटरेस्ट नहीं हो तो आप लोग चले जाइए। व्हाट यू वांट? आप लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं या नहीं? मैं सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों को, सर आप सर्टिफिकेट सबको दे दीजिएगा, जो इंटरेस्टेड है खाली उनको रोक लीजिए। अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आई विल लाइक टू डिसकंटिन्यू। भैया मैं ऑनलाइन से नहीं पर्टिकुलरली हुआ हूं क्योंकि आई हैड द इंटरेस्ट टू शेयर माय नॉलेज विद यू। शुड जस्ट ₹50 करोड़ है या 60 करोड़ है, ठीक? और मशीनरी भी जो है मेरे पास में 60 करोड़ की है। कौन सी कैटेगरी हुई? मीडियम, ठीक है। अब इसमें एक चीज बता रहा हूं, हियर आई विल लाइक टू गिव मैसेज। समबडी ऑफ यू वाज आस्किंग, प्रवीण शर्मा जी, कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है हाइड्रोपोनिक्स में सब्सिडीज वगैरह देने के लिए। तो दोस्तों मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहूंगा, राजन जी आपको भी, ठीक है? गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम हो बहुत थॉरोली पढ़नी चाहिए। सुपरफ्लुअसली पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? इस स्कीम में यह है कि अगर आपका टर्नओवर में एक्सपोर्ट्स का टर्नओवर भी शामिल है, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा डेफिनेशन के पर्पज से। मेरी बात क्लियर हुई? अब अगर मान लीजिए से जो मैंने माइक्रो यूनिट का लिया था एग्जांपल, जिसमें 80 लाख का इन्वेस्टमेंट था और 6 करोड़ का टर्नओवर था, 6 करोड़। आउट ऑफ दैट से 2 करोड़ इज टर्नओवर फॉर एक्सपोर्ट्स, 4 करोड़ विद इन इंडिया। वो कौन सी कैटेगरी में हो जाएगा? माइक्रो। तो इसलिए वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। जब भी आप किसी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ेंगे, किसी गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम को, किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को, किसी गवर्नमेंट के एक्ट को पढ़ेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस।
उसके नीचे की जो बारीकियां हैं उसको जरूर समझना। यहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स फेल हो जाते हैं, दिस इज माय एक्सपीरियंस। उन लोगों को पता नहीं होता, बाद में वो कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था। उनको दिखा दिया जाता है कि आप देख लीजिए गजट नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली पॉइंट नंबर 7B1 लिखा हुआ है, उन्होंने सिर्फ पॉइंट नंबर 7 को पढ़ा। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। दोस्तों जो मेरा सेशन है ये हो सकता है आपके लिए जरूरी ना हो, you may not be directly the beneficiary of this, but maybe your parents, maybe your known persons who are running their own MSMEs or startups or the business can be the beneficiary. So I will request you please try to gain the knowledge and try to share this knowledge with them. You will be getting more regards. This session will be more fruitful if you are going for that. So I hope the definition is part is clear. Is there any question in this? Next, दिखा दीजिए बेटा. This is the graphical representation of that. Same thing shown in a different way. Any doubt in this my definition of MSME? Any doubt? Next. MSMEs are very important for the country because they contribute to the maximum thing. Almost half of the exports from the country is through MSME only. This figure will go even higher if the statistics are properly connected. Okay, next dikhaiye ma'am. Now this is also one thing which is generally asked for, startup. Even I remember your vice chancellor was mentioning this startup. And ma'am just a minute, इसमें बी प्रेस कर दीजिएगा, बी जो लेटर है प्रेस कर देना और बाद में बी प्रेस कर देना, बी तो ये स्क्रीन जो है ना आउट हो जाएगा, फिर चल गया। स्टार्टअप आप लोग को पता है ना क्या है? I have started a factory. You see, Mr. Rajan has come. He has started a factory. Is it a startup or not? Say yes or no. देखो आपका गलत आंसर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्लीज आंसर नो। Why it is not? Why it is not a startup? He has started the business, bhai. He has started the factory. Why it is not a startup? Any reason? Come on, आप लोग बताइए क्या क्यों नहीं है? Why it is not a startup? You are saying no, or you are saying yes. I say yes, it is a startup. You are saying no, it is not a startup. How can you say it is no? Any reason? Can you give any reason for that? कोई जवाब नहीं. My goodness. Sir, something is wrong with me, I must say. Something is wrong with me. Anyway, चलो, oh, please उसको ऑन करो. Let us cover it that way then. So, keep on reading that simply. I don't need to cover it up. Oh, thank you. You also can respond to it. Can you give mic to her? Huh? Yes. If it is innovative, then it will start. Yes. So why the answer was there that actually it is not a startup. I have not said whether it is an innovative idea or not. So you cannot outrightly say no. This is wrong. जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो उसके बारे में आप कंक्लूसिवली रिमार्क्स नहीं दे सकते. So the same way I was telling कि Mr. Rajan has started a factory. Can it be known as startup? You said no. You should have asked the question to meet the criteria. What are those criteria? Whether if these criteria are being met, then it is a startup. Otherwise, it is not. Are you getting my idea? Are you getting my point? You should not simply in one sweep say no or in one sweep yes. You have to have logical. You have to understand what exactly is a startup. So what is a startup? First condition, it should be registered as a partnership firm, a limited company, an LLP, or even as a one-person company. Clear? Next,
No, you are not next. Okay. Next criteria, go back. Next criteria is that turnover limit is there. What is the turnover? Turnover limit 100 crores. If it is exceeding this limit in any financial year, then also it is not a startup. Clear? Next one is that. What is that? And it should be up to 10 years from the date of its incorporation. This is a very important point you must know. अगर मान लीजिए राजन जी ने 3 साल पहले इनोवेटिव कोई आइडिया शुरू किया था, वो आज की डेट में भी स्टार्टअप कहलाएगा, though it was started long back. Clear? Next point, which is the most important point, the startup should be working towards innovation. उसमें सिर्फ innovation नहीं है. You don't get confused. Generally, the confusion is there. It is just the innovation. It is not simply the innovation. Improvement of existing products. It has to be slightly improvement even, like hydroponics idea. If it is not applicable in Gujarat, if you are bringing that to Gujarat, it is an innovation. It is not invention. It need not to be invention. It has to be innovation only. And improvement of existing product services and processes, and should have the potential to generate mass employment, more and more employment, even if it is generating more and more employment. In India, as per the startup definition, which is managed by DIPP, Government of India, it is recognized as a startup. And there are certain incentives, certain facilities, certain concessions which are given to those startups. Next point says, it should not be like this, ki I have already have a larger organization with lot of innovations and I start bifurcating it, a small part of that, so that I meet the criteria of 100 crore. I have the turnover of 500 crore. I split the company into two parts. One is a smaller one, having a turnover of 50 crore, and other one is 450 crore. It cannot be given the status of 50 crore, it cannot be given the status of startup. Is it clear? Any doubt in this? I think there should be so many questions related to this, and I will like to stop here. If there is any question. किसी का कोई question है? हाँ, पूछो. What is the difference between business and startup? Business is a wider term. Okay. Business is a superset, you can say. वो ज्यादा बड़ी चीज है, and startup छोटी चीज है. Startup business के अंदर में है. जैसे कोई भी चीज का बिजनेस है, ट्रेडिंग का कोई काम कर रहा है, तो that is business. Okay. Anything whichever is done for the commercial purpose can be described as the business. And any business cannot be said to be a startup because it has to meet these criteria. If that business is meeting these criteria, then it can be given as a status of startup. I hope my part is clear. Any other question? Yes. So can startups be recognized as government? Can start? No, startups are not the government agencies, but the startup recognition is given by the government. A certificate is issued by DPII, which is this one, government agency. They give the recognition, they certify that so and so organization is a startup or not. Any other question? Yes. Sir, please. You have any question? Please ask. Now the question is this, a wonderful question I must say. It is as clear that if you are running a successful business, then why you will be aspiring to be known as a startup? First of all, let me tell you, startup is a little bit misnomer. Startup से हमें ऐसा लगता है कि वो कंपनी अभी start हुई है. Probably your question is this, that you are running a company, a business, which is a very successful business and which is innovative idea also, which is meeting the criteria of a startup. It can be given the status of a startup. और वो 3-4 साल 5 साल हो चुके आपको, तो why should you go for that? There are certain incentives, certain advantages, certain priorities
which are given to startup agencies only, startup organizations. So if say your business is registered as a startup also, so all the benefits which you are already availing will be further added by startup. For example, I will say one of these things, you must be paying income tax. If you are running a business, you are generating income and you must be paying the income tax. If you are recognized as a startup, you need not to pay income tax. Bajaya, sir? You need not to pay income tax for 1 year, no. For 2 years, no. For 3 years. Any continuous 3 years, during this 10 years time, you will be exempted from paying income tax. Is it not a great incentive? Say if you are participating in a government tender, generally there is a condition that you must have done this much work, this much volume you have done. Then only you can participate into this. If you are a startup, this turnover condition is waived off. So even if you are new, you have not started the business, you have not done the high turnover, then also you can compete with other agencies which are having this one. And there are so many. You can visit the website and then you can find out. There are so many advantages like this. Okay? Any other question? I will appreciate the questions. Had I been in your place, I would have definitely asked the questions because those clarify the things. और आप जो क्वेश्चन पूछेंगे ना हो सकता है सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो दूसरे लोगों के लिए भी हो so please ask the questions. Any question? Sir, हाँ. one has idea, investment, and capital. Then to get registered under Not MSME. capital, madam, turnover. Yeah. Then how he or Because she there should is no start? criteria of capital here. Then how In he or MSME case, just a minute, again, let me clarify. In MSME case, investment is the criteria. But in this case, investment is not the criteria. उसके पास सब कुछ है लेकिन उसको पता नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है. Then what would be the steps to be followed? मतलब registration process क्या रहेगी उसको क्या चीज करनी पड़ेगी? Your question, let me further clarify that for the sake of everybody and to understand myself also. You are saying that you are having an idea. Okay. You know that you will be falling into the category of startup. Now your question is this, how to go ahead, how to start with. Okay. Am I right? You see, until unless you start, you will not be given the startup status. Though now an amendment has come that even at the pre-stage also, you can be given this one. But you will be given the incentives, the benefits only after you have started the business. I hope my point is clear. Now what you are asking is the process of entrepreneurial setup. It is not a startup setup. It is not a startup. Startup setup is something else. If you are going to start any business, any entrepreneurial activity, you are asking for that, how to go about it. Like some of the tips have been given by Mr. Praveen Sharma also. And there are so many ways to go for that. जैसे ईश्वर प्राप्ति के कई अलग अलग तरीके हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक? One of the ways is this, you should gain the experience. Because you are hesitating, maybe because you lack in experience. You may be having theoretical knowledge, but you don't have the practical knowledge. Where from you will get the practical knowledge? Through some training somewhere. Practical training somewhere. The best practical training is that you join an organization where that practice is followed. उस टाइप के काम या उससे मिलता जुलता कोई काम, same or similar products and services are being manufactured or provided by this organization, you join as an employee. When you join as an employee, don't look for the package because your purpose is different. You are going to join that organization for the sake of learning, not the sake of earning. You don't look at the package, but look at the opportunity that you are learning at the same time you are earning also something. So you are learning at the cost of the company. When you join that organization, don't restrict yourselves to the job assigned to you. The responsibility is assigned to you.
try to go beyond that because you have the entrepreneurial characteristics. You will like say, if you have been involved into marketing, you try to have some knowledge about finance also. Try to have some knowledge about the production thing also. Try to have some knowledge about the legal aspect of that business. Then you will gain some confidence. And one more thing, there should not be analysis paralysis. Overdoing of analysis is paralysis. Then you will never be able to jump into the actual business. So if you really want to gain knowledge in that, you have to say enough is enough. Now I must jump into the business. Otherwise, you will keep on getting the knowledge. There is no end to getting the knowledge. All my professors will be saying this, कि सर अभी तक पढ़ाई पूरी नहीं हुई. कितना भी पढ़ लीजिए उतना ही कम है, कितना भी सीख लीजिए उतना ही कम है. You have to identify an optimum level of learning, optimum level of experience. Then you should jump into that. Say if you have to go from here to Rajkot, you cannot ensure that entire traffic will be clear, entire things will be clear. Then only you will be able to reach. You must gain the knowledge how you can reach there, what is the cost component, what are the stops, how much time will it take, what is time, etc., little bit, and then you have to put your foot on the journey. Then only you can. सर तीन चीजें हैं हमारे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एक होता है बिजनेस, एक स्टार्टअप. तो एक नहीं, सॉरी, आप खाली दो ही चीजें मान के चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस. असल में ये भी दो भी नहीं है, बल्कि अगर सही माने देखा जाए तो बिजनेस कहेंगे. बिजनेस के दो पार्ट है, एंटरप्रेन्योर एंड नॉट एंटरप्रेन्योर. तो आपने जैसे शुरुआत में बताया कि ये चीज स्टार्टअप डायरेक्टली आपके लिए यूजफुल नहीं है, आप किसी को नॉलेज शेयर करो. तो हमारे स्टूडेंट जो कि अभी एग्री इंजीनियर, मैंने आपको ये नहीं कहा, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने इसीलिए आपको एक एग्जांपल ऐसा दिया. ईश्वर प्राप्ति के कई तरीके हैं, अलग अलग रास्ते. कोई भगवान राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, और कल कोई सोमनाथ जी के दर्शन भी करके आया कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी. मैं गया था कि मेरे पाप धुल जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे. तो अलग अलग तरीके हैं. तो वन ऑफ द वेज इज यू ज्वाइन ए जॉब. Another one is that you study a lot about it. You do the research. Third part can be you hire a person who is knowledgeable in that field where you are lacking. So there can be so many other things also. The only thing is that you have to identify that what are the resources required to start this business or the entrepreneurial activity. Clear? What are the sources? Please. Getting bored. Getting bored है ना बेटा? वो कह रहे हैं शायद कि सब कब खत्म करोगे. चलो मैम, आई होप कि आई हैव आंसर्ड यू. So there is no fixed way, there is not a single defined way. हेलो सर. हाँ सर, आप हमारी जगह पर होते अभी हमारे एज पे और एग्रीकल्चर करते, तो आप किस आइडिया पर स्टार्टअप करने के बारे में सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि किस आइडिया पर ज्यादा स्कोप है इंडिया में? देखो बेटा, ये चीज फिर से जो है ना एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि कैसे मैं बताऊं कि आप किस आइडिया पे आप काम करोगे. ठीक है ना, अपनी अपनी सबकी लाइकिंग है. अगर मान लीजिए आप मेरी बात करोगे कि मैं अगर वहां पे हूंगा या मैं सोचूंगा खुद स्टार्ट करने की, तो मैं अपनी कंसल्टेंसी से शुरू करना चाहूंगा, ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उस फील्ड पे मेरी काफी नॉलेज है. सर आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि नहीं, मैं बता देता हूँ. जैसे आप एक चीज समझिए, मुझे ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में काफी अच्छा नॉलेज है. मैंने इन डेप्थ उसका प्रैक्टिस की हुई है. आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस टाइप ऑफ hundreds of programs, and I have got the reputation in my organization. If there is any tough training to be provided, any tough session, send Dr. K.K. Goel for that, and he will be able to handle it, something like that. And in every session I learn something. In every session I learn something. It may not add 5%, 10% to my existing knowledge, but even if it adds 0.01% to my knowledge, that knowledge has increased. तो जैसे आपका है ना बेटा, पहले आप क्या करो कि सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है. इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आप एग्रीकल्चर प्रोफेशनल हो, या तो एग्रीकल्चर कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर कर रहे होंगे, या मे बी एग्रीकल्चर कर रहे हो, या एग्रोनॉमी कर रहे हो, या जो भी, व्हाटसोएवर इज दैट. इफ यू आर बीएससी, एमएससी, एमटेक स्टूडेंट्स, व्हाटसोएवर यू आर, यू हैव टू लुक कि आपका इंटरेस्ट किस में आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. इस डिग्री का यूज सिर्फ ये है कि आपने प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है. प्रोफेशनल डिग्री एक सिस्टमेटिक नॉलेज एक्वायर करने में हेल्प करती है. आप किसी भी प्रोजेक्ट को ले लीजिए, उसमें आप सिस्टमेटिकली आप आगे बढ़ सकते हैं. इंडिया के अंदर ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है उसमें हमें डिग्री मिल जाए, ऐसा लकी इतना नहीं होते हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है.
प्रोफेशनल्स कॉलेजेस की, तो हमें जहां एडमिशन मिलता है वहां ले लेते हैं. इन जनरल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ यू, मे बी सम ऑफ यू मे बी हैविंग सम इंटरेस्ट इन दिस फील्ड. आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, जाके बात और क्लियर हो जाए. ठीक, एक लड़का, आपने पूछा ना आपकी एज का क्या होना चाहिए, एक एग्जांपल देता हूं. एक लड़का दूर बिहार में एक छोटे से गांव में महमूदाबाद, ठीक, उसमें रहता है, जिसकी पॉपुलेशन 735 लोगों की है. कितनी? 735 लोगों की है. और उसके मदर फादर जो हैं वो दोनों के दोनों टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, और एक फादर जो है वो मिडिल स्कूल में लैब असिस्टेंट है. बहुत कम से कम सैलरी हुई, कई बच्चे हैं, सबसे छोटा वो है. एजुकेशन के लिए बहुत मुश्किल होती है उसकी, लेकिन वो बहुत मेरिटोरियस होता है. सुन रहे हैं आप लोग? बहुत मेरिटोरियस होता है, और उसको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप के सहारे चलता है. और 6th क्लास तक म्यूनिसिपल के स्कूल वगैरह में, इस टाइप पंचायत के स्कूल में पढ़ता है. उसके बाद में वो थोड़ा सा बड़े कस्बे में आ जाता है, और वहां जाता है जवाहर नवोदय स्कूल में. ठीक, वहां जाने के बाद में उसको फायदा ये होता है कि वहां रहना, खाना पीना सब फ्री, एजुकेशन फ्री, कोई फीस नहीं, ड्रेस वगैरह की कोई फीस नहीं, बुक्स फ्री, और साथ में कुछ स्टाइपेंड भी मिलती है, तो वहां चला जाता है. काफी मेरिटोरियस स्टूडेंट है, लेकिन गाइडेंस नहीं है, गांव का वो है, उसको समझ में नहीं आता. आईआईटी के लिए कोशिश करता है, लेकिन कोचिंग वगैरह नहीं लेता, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, गाइडेंस नहीं मिला, आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाया. ठीक, उसको एडमिशन मिला किसमें? एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, आईसीआर के थ्रू. आप लोग जानते हो किसी ऐसे आदमी को? नहीं. जूनागढ़ में आपकी यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेज में उसको एडमिशन मिला, आया और यहां से उसने टॉप किया, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. सुना नाम किसी ने? नहीं. एनीवे, अभी फिर से बतलाऊंगा, धीरे धीरे करके सुनेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रही होगी. तो फिर भी जैसे तैसे करके उसने वहां पे जाके परफॉर्म किया. उसने किसी हिंदी स्पीकिंग आदमी को अपने साथ लगाया, और उसके साथ में बात करके, मोटिवेट करके किसी तरीके से काम चलाया उसने, और उस तरीके से परफॉर्मेंस किया. लेकिन उसके बाद में गया अपना प्रमोशन मांगने के लिए, तो फिर भी उसका प्रमोशन नहीं हुआ. तब उसने देखा कि अब मैं क्या करूं, तो उसको पता चला उसके कॉलेज का जो स्टूडेंट था वो कैट की तैयारी करता था. आप लोग जानते हैं कैट की तैयारी क्यों करते हैं? हाँ या ना? तो उसने सोचा चलो कैट में कुछ ना कुछ तो होता है. उससे पहले उसको पता भी नहीं था कि कैट की तैयारी क्यों करते हैं. उसने कैट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, और कैट पे फिर से बहुत अच्छे नंबर लेके आया, टॉप किया, और आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लिया. ठीक, आईआईएम अहमदाबाद में उसने एडमिशन लिया. आसान काम है क्या? बोलो हाँ या ना? नो. आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लिया, वहां पे भी जाके उसने टॉप किया. लेकिन तब तक उसको आंखें खुल गई थी, उसने बहुत सारी दुनिया देख ली थी, और प्रोफेसर के साथ में जिसके टच में था, उन्होंने उसको एक चीज सिखाई, बोले बेटे अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो. जो आईआईएम अहमदाबाद का टॉपर होगा उसको कोई एमएनसी जॉब देगी या नहीं देगी? उसको पैकेज अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक, डेफिनेटली बहुत अच्छा मिलेगा, मिलना भी चाहिए. लेकिन उसने जॉब एक्सेप्ट ही नहीं की, और बोला वापस मैं जाऊंगा अपने बिहार, वहां के लोगों की भलाई करूंगा, क्योंकि मेरा मन वहां लगता है, मैंने हार्डशिप देखी हुई है उनकी, कि कितनी हार्डशिप लाइफ है, मम्मी पापा कितनी थी, गांव के दूसरे लोगों की कितनी थी, और उन लोगों का भला करूंगा. अगर मैंने ऐसा कुछ किया तभी तो मेरा भला है, नहीं तो क्या फायदा हुआ. समझे आप? और इसके बाद में गया, उसका नाम है कौशलेंद्र, आपके कॉलेज का एलुमनस है वो कौशलेंद्र. और उसने सब्जी बेचने का सोचा. क्या चीज? सब्जी. गांव से सब्जियां खरीदी उसने, और शहर में जाके सब्जियों का ठेला लगाया, और सब्जियां बेचने की कोशिश की. पहले दिन का उसका प्रॉफिट हुआ 22 रुपए का, सिर्फ 22 रुपए का, ओनली 22 रुपीज. ठीक, सिर्फ 22 रुपीज का. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और काम करता रहा. धीरे धीरे करके उसने काफी उसमें काम किया. आज उसका टर्नओवर कितना होगा? कितना? एनी आइडिया? 500 करोड़. 500 करोड़ का उसका टर्नओवर है. और अगर आप उससे मिले तो आप पाएंगे कि अरे इस आदमी से बात करते हुए बिल्कुल नहीं लगता कि इसका इतना टर्नओवर होगा.
तो बेटा अब आपको आंसर मिला, आपको क्या करना चाहिए? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या करना चाहिए. फॉर दिस यू रियली नीड टू डिस्कस विद द मेंटर्स. अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपना आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या चीज करना आपको अच्छा लगता है. ठीक, और जो चीज करनी अच्छी लगती है उसके बारे में प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे करके उसके लगातार करते रहो. क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेगा, आप सोचोगे कि एक दिन जाके अचानक मैं खेल लूंगा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. सचिन तेंदुलकर को भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, धोनी को भी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी. ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैच खेलने चला गया और वहां पे जाके उसने चौके छक्के जड़ दिए. ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? तो मैडम आई होप कि आपको एंटरप्रेन्योर जर्नी समझ में आ गई होगी. तो उसके कई तरीके, अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, सबके लिए अलग अलग है. आप अगर मोटिवेशन लेना चाहते हैं तो सारी सक्सेस स्टोरीज है, उनके बारे में लिखा हुआ है. इस टाइप की चीजों को आप लोग गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं. एक कौशलेंद्र का जिसका मैंने बताया, अगर आप देखेंगे तो उसको कौशल्या फाउंडेशन के नाम से उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, और एक दूसरी और उसने शुरू की है, उसके तौर पे कर सकते हैं. बल्कि उसने चेंज किया. एक एग्जांपल और था जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट का, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का प्रवीण शर्मा जी बता रहे थे. बिग बास्केट का नाम सुना है? ठीक है ना, बिग बास्केट. उसके भी जो है प्रोमोटर जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियर है, और उन्होंने वो कंपनी टाटास को बेच दी. बिग बास्केट में को उन्होंने टाटास को बेच दी, और अभी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं. वो प्रोजेक्ट है लॉन्ड्री का. ठीक, लॉन्ड्री का काम है. अभी जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर आप होते तो क्या करते और क्या करना चाहेंगे, एक एग्जांपल के तौर पे देना चाहता हूं. हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं. आप लोग इन्वॉल्व तो है ना? ठीक, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेते हैं. मान लो कि मैं कहता हूं कि साहब मुझे तो पता चला, अभी राजन साहब से बात करते हैं कि साहब इधर पे गुजरात में लोग पान बहुत खाते हैं. बताया था ना सर आपने, पान बहुत खाते हैं या नहीं? तो मुझे लगा यार यहाँ तो बहुत अच्छा स्कोप है, तो मैंने कहा चलो मैं पान का ठेला लगाऊंगा. हंसी आ रही है? मैंने सोचा कि मैं पान का ठेला लगाऊंगा, पान कियोस्क. ठीक है, तो ये सोच बहुत छोटी है, ये सोच इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए. ठीक, जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा करेंगे कैसे? तो असल में ये सोच यहां नहीं होनी चाहिए. सोच ये होनी चाहिए कि मेरा ये होना चाहिए कि जूनागढ़ में, राजकोट में, अहमदाबाद में, पूरे गुजरात में मेरे पान कियोस्क लगे होने चाहिए, चेन होनी चाहिए उसकी. मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको बताता हूँ आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं और कैसे उसको बड़ा किया जाता है. तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये करना है. आज की डेट में मैं देख रहा हूं कि कोई भी ब्रांडेड पान वाला नहीं है गुजरात में. है कोई भी है ऐसा जो कि ब्रांडेड पान वाला हो? नहीं, कोई भी नहीं है. अगर होगा भी तो एक आध जगह में होगा. मैंने कहा कि सारी सिटीज में मेरे पान कियोस्क लगे होने चाहिए. होना चाहिए कि गोयल पान वाला या गोयल पान भंडार, व्हाटसोएवर यू कॉल इट. ठीक है, नाउ आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. मैं फिर इसकी स्टडी करता हूं कि एग्जिस्टिंग मार्केट क्या है, एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, किस टाइप की चीजें चाहिए उनको, कौन सी चीजें होती, क्या चीज है जो उनको नहीं मिल पा रही है, क्या चीज ऐसी है जो कि कलकत्ता में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, बॉम्बे में मिलती है, यहाँ पे राजकोट में नहीं मिलती. उस चीज को अगर मान लो मैं राजकोट में ले आता हूं तो होता है. एक है फायर पान. सुना है आप लोगों ने फायर पान? देखा है? मिलता है यहाँ? हाँ या ना? ना. तो क्या मैं फायर पान यहाँ इंट्रोड्यूस ना कर दूं? अगर इंट्रोड्यूस करूंगा तो धमाका होगा. उसमें आग जलती रहती है, उसको मुंह में डालो बंद हो जाता है, लेकिन वो बड़ा थ्रिल होता है, लोग उसकी वीडियो बनाते हैं. ठीक, अगर मान लीजिए मैंने अपना ठेले ऐसे शुरू कर दिया जिसमें फायर पान भी बना के दे रहा हूं अलॉन्ग विद अदर थिंग्स, वो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं? क्या लगता है? चांसेस क्या लगते हैं? 60% से चांसेस जिसको ज्यादा लगते हैं कि चलेगा, हाथ खड़ा करे. जिसको लगता है कि 60% से ज्यादा चांसेस. ठीक, गुड. लेकिन if I am an entrepreneur, I must not stop here. I must not stop here. I must try to find out something more. उस पान ठेले पे मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आ सकता हूं? तो क्यों ना मैं उस पर आइसक्रीम भी शुरू कर दूं, क्यों ना मैं उस पर सीजनल जो चीजें होती है एक दो चीजें और करूं. बिकॉज आई नीड द फुटफॉल, आई नीड द एक्सपोजर, आई नीड द विजन, कि लोगों की नजरों में आऊं मैं. लोग जब मेरे यहां आएंगे तभी तो जानेंगे, अदरवाइज कौन जानेगा? Why I should not do the digital media marketing? अब आप देख रहे हैं, और उसमें मैं सारी वेराइटीज को रेट करता चला जाऊं जैसे जैसे होता है. देन उसके बाद में मुझे कितने, जैसे मान लीजिए पूरे गुजरात में 1000 जगहों मैंने आइडेंटिफाई किया कि 1000 के करीब मेरे ऐसे कियोस्क लगने चाहिए. मुझे कितने लगाने चाहिए?
100, 200, 400 कितने? क्विक 100 से शुरू करना चाहिए। कितने लोग ऐसे जो बोल रहे हैं 1000 की जगह? कोई नहीं, गुड। मैं आपको बता दूं, मुझे सिर्फ 5 या 7, तो ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 7, इससे ज्यादा ठेले एक साथ शुरू नहीं करने चाहिए। बिकॉज स्टिल इट इज एन आइडिया इन द माइंड, इट इज स्टिल नॉट ऑफ द ग्राउंड। आई मस्ट लर्न फ्रॉम द ट्रिक्स। मुझे एक्चुअली कस्टमर फीडबैक लेना है, मुझे एक्चुअल फील्ड से फीडबैक लेना है कि वहां पे क्या सिचुएशन है। तो इफ आई गो टू दैट वन, तो मैं वहां से शुरू करूं, सिर्फ वहां से कि 5-7 जगहों पे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे कर दो और मैं वहां से फीडबैक लेता रहूं। माय पर्पस शुड नॉट बी टू अर्न, देन प्रोबेबली दिस कैन बी स्टार्टअप। जब मैं वहां से लूं फीडबैक, देखूं कि कैसा क्या है, उसके बेसिस पे करूं। जब मैं देखूं कि मैं होम डिलीवरी अब पान करा सकता हूं, मैं सिस्टम शुरू करूं कि होम डिलीवरी, व्हाई द कस्टमर शुड कम टू माय पान शॉप, मैं उसके पास क्यों ना घर पे पहुंचा दूं। मुझे पता है कि इनकी फैमिली में 5 पान लगते हैं, 7 पान लगते हैं और ये इनका टेस्ट है, तो मैं कहूं सर आपके यहाँ पे मंथली पहुंचवा दूंगा मैं, आप आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं आओगे तो आपके घर पे मेरा लड़का जाएगा, जाके दे देगा। व्हाई कांट आई डू इट? डिड यू गेट माय पॉइंट? If we can think like that, then sky is the limit. And for the younger generation, I'm telling you, India is the most suitable place for this type of ideas. क्योंकि इंडिया में इन सब चीजों का बहुत बेहतर, and all these things are being supported. Say if you are coming with innovative ideas, you can go to incubation centers. You can talk to other persons. You can start small, then you can explode. You need not to expand. You have to explode. जब आपने आइडिया ट्राई कर लिया, 5-7 जगहों पे मैंने देख लिया, वहां से फीडबैक ठीक आ गया, तो फिर मुझे 5 के 20 नहीं करने चाहिए, 10 नहीं करने चाहिए, 5 के मुझे फिर 100 करने चाहिए, 100 के फिर बाद में मुझे 1000 करने चाहिए। ऐसे करके उसकी ग्रोथ होगी, तब जाके मैं मार्केट कैप्चर कर पाऊंगा, तब जाके उसको कर पाऊंगा। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। इफ एनीबडी हैज टू आस्क एनी क्वेश्चन हियर, ओके मैडम नेक्स्ट दिखाइए प्लीज। Now again, this is a graphical representation. MSME is much beyond than startup, क्योंकि सारे के सारे स्टार्टअप MSMEs होते हैं, लेकिन सारी MSMEs स्टार्टअप नहीं होती because of the obvious reasons. ठीक है? This is clear? Next दिखाइए मैडम। ये असल में क्या है, MSMEs are very important to the nation. तो MSMEs के लिए बहुत सारी चीजें शुरू की गई हैं, ठीक? बहुत सारी चीजें शुरू की गई जिससे कि MSMEs को मैनेज करने में आसानी हो जाए। MSMEs कोई आदमी शुरू करे तो उसको फैसिलिटीज क्रिएट कर, ये चीजें 10 साल पहले 20 साल पहले नहीं थी। जिन लोगों ने पहले शुरू किया होगा उनके पास में इस टाइप की चीजें नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये चीजें हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर और भी काम हो रहा है और वो काफी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है फैसिलिटेट की जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि MSME का कोई काम करना चाहे तो वो कर सके। क्यों? क्योंकि MSME इज कंसिडर्ड टू बी नर्सरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी आज की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए वर्ल्ड की, जो भी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप लेंगे, वो पास्ट में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत छोटी सी यूनिट रही होगी, वो माइक्रो यूनिट रही होगी। हो सकता है कि किसी किचन में, बैकयार्ड में, गैराज में, इस टाइप की जगह से उसकी शुरुआत हुई होगी और आज वो बड़ी होगी। तो इसी टाइप की आज की जो माइक्रो यूनिट है वो कल को स्मॉल होगी और परसों को मीडियम होगी और उसके बाद वो लार्ज इंडस्ट्री भी हो सकती है। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस, मेनी एग्जांपल्स। वन ऑफ द एग्जांपल्स आई हैव राइट नाउ कोटेड। कौन सा एग्जांपल था? कोई एग्जांपल ऐसा था जो कि बहुत ग्रो किया हो जिसने? नहीं सर, लंच के लिए डिक्लेयर कर ही दो, काफी टाइम हो गया लगता है। एनीवे, मैंने कौशलेंद्र जी का एग्जांपल जो किया था, दैट इज एन एग्जांपल जो कि हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है, जो कि सिर्फ आपके ही कॉलेज से, आपकी यूनिवर्सिटी से है। आई एम नॉट गोइंग इवन आउटसाइड, ठीक? दूसरा एक एग्जांपल, जैसे मैंने अभी हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल क्लियर किया पान वाले का। आपको लगता है कि अगर उस टाइप से काम किया जाए तो उसके बढ़ने के चांसेस है? आई एम नॉट सेइंग 100% चांसेस, नो, नोबडी कैन गारंटी फॉर दिस, बट मे बी 50%, 60%। अगर इतने चांसेस है तो गो अहेड, बिकॉज बाकी चीजें रास्ते पे सीखते चले जाएंगे, ठीक है ना? सिचुएशंस हमें बताती चली जाएंगी, सारी की सारी चीजें बिल्कुल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग क्लियर नहीं हो सकती, वो पॉसिबल नहीं। जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो आपने सोचा नहीं होगा कि आपकी डिग्री पूरी हो ही जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए वैसे वैसे करके रास्ता क्लियर होता चला गया, ठीक है? अब इस पे आते हैं, एक है ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन। मैंने बताया आपको MSME की डेफिनेशन याद है ना?
MSME की डेफिनेशन याद है या नहीं? गुड. 110 50, वेरी गुड. एंड 5 times टर्नओवर, वेरी सिंपल. अब इसका मैंने एक चीज और कही आपको कि आप इंडिया के अंदर में कोई भी MSME चला सकते हैं. आपको दूसरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे. आपको GST लेना पड़ेगा, आपको फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा, वगैरह वगैरह. लेकिन MSME से कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं. मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बंदिश नहीं है. देयर इज नो बाउंडिंग कि यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड. बट if you want to avail any government benefit, you have to get yourself registered, and this registration is known as Udyam registration. Clear? Now this registration is online available, free of cost. There is no charge, not a single penny is charged for this. Not a single document is to be uploaded. It is based on the self declaration. आप अपने बारे में बताते जाइए, वो पूछता जाएगा. आपने बताया आपका ये चीज है, ऐसी चीज है. Where is your address? You are mentioning that address. Which is your bank account? You are mentioning the bank account. What is your PAN number? What is your Aadhaar number, etc. You keep on giving that information, and that will take that information, and based on that, this MSME certificate, that is Udyam's registration certificate, will be issued. Clear? This is online. Now I will be showing you something more also in the coming slide, which you should know. But it is a very easy thing which has been done, is ease of doing business. Next is very informative and updated websites. Our websites, there are two popular websites, that is msme.gov.in. Other one is www.dcmsme.gov.in. These are very, very interactive and very informative websites. If you visit this website, you will get all the information related to MSMEs. What are the schemes, what is the benefit, what is the procedure. And at the same time, if you want to know something more, it is also available that who has availed this benefit, even that list is also available. Then comes dedicated web portals. There are certain web portals. One of them is Samadhan. Samadhan is a web portal, that is samadhan.gov.in. What happens? There is a rule in this MSME Development Act 2006. If any government agency is holding the payment for any goods and services supplied by micro and small enterprises and not making the payment within 45 days, the rule says that that organization has to pay to MSCs. MSC, I'm talking of MSC, not MSME, micro and small enterprise, because some of the schemes are applicable to micro only, some of the schemes are applicable to micro and small only, some of the schemes are available to micro, small and medium enterprises. Okay. So to MSCs, they have to pay along with 3 times the interest rate for the delay. And maybe some additional penalty also can be imposed on that. So this is what the rule says, and it is known as Samadhan. What one has to do, उनका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समाधान पोर्टल पे जाए, अपने जो बिल दिए हुए हैं, जो टर्म्स कंडीशंस थी, कॉन्ट्रैक्ट थी, उसको अपलोड करें, एंड दैट्स इट. उसके बाद मिनिस्ट्री विल टेक केयर ऑफ इट. डू यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज अ गुड इंफॉर्मेशन? There are many of the micro small enterprises which are suffering because of this. उनको पेमेंट नहीं मिलती. So if you can pass on this information to those also, that will be a great help to the nation. क्योंकि इस टाइप की चीजें बहुत सारी हैं, नहीं मालूम. आप लोग को सर खैर इस टाइप का दिया कुछ क्लियर हो गया? पहले नहीं था. हाँ, चलो हमारे बीच में असल में कुछ MSME वाले भी आए हुए हैं, तो मैंने कहा कि चलो उनसे पूछता जाता हूँ किस टाइप की चीजें हैं. अब इस पे जो रूल करता है, इट इज साइलेंट कि इट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और द प्राइवेट डिपार्टमेंट, सो इट इज एप्लीकेबल इवन टू प्राइवेट डिपार्टमेंट आल्सो. लेकिन मोस्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेमेंट्स बहुत जल्दी क्लियर होते हैं. ठीक है, देयर इज अ सिस्टम फॉर दिस. जैसे आपने अपलोड किया तो मिनिस्ट्री उनको जो कंसर्ट पे करने वाले हैं उनको एक नोटिस भेजती है कि भाई दिस इज हाउ कंप्लेंट हैज बीन रिसीव्ड फॉर नॉन पेमेंट टू अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज. व्हाट इज द इशू? देन देयर साइड इज आल्सो हर्ड प्रॉपर्ली. हो सकता है कि कोई क्वालिटी इशू रहा हो सकता है कोई शॉर्ट सप्लाई इशू रहा हो सकता है कोई दूसरी चीज का इशू रहा हो. तो दे विल बी एक्सप्लेनिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी आर नॉट मेकिंग द पेमेंट्स थ्रू दिस वन. देन दैट रीजन इज आल्सो एनालाइज्ड and a proper solution is provided, and then amicable solution is provided. Mostly the payments are cleared because we don't write to the clerk, to the manager who has to pay, to the engineer who has to pay. We write to the topmost authority in that ministry.
topmost person in that organization. Okay. Next comes Sambandh. Many times there are government supplies, government needs the material, so the tenders are floated. This is generally not available, not known to many of the micro small enterprises. So those tenders are also uploaded on Samadhan portal. If one is registered on a micro small on the Samadhan portal, then that information can be obtained from there also. And even if requested, then some of the information we are trying that the information can be sent through email to them that such and such tender is there where you can participate. Next one is my.msme.gov.in. It is a wonderful, wonderful platform. All the schemes of Government of India have been put in one portal. Okay. And if you want to avail any of the scheme, if you want to know about any of the scheme, just simply click on that tab, that information will be available. If you want to apply for that, say if you have participated in a trade fair and reimbursement, an incentive of reimbursement up to 1.5 lakhs is given to you twice in a year. That is a great support. So if you want to know about this scheme, you can simply go and click on that scheme. Then you can apply for that. Even if you want to apply, you can apply for that on the same portal. And then your case will be considered. All the documents will be verified, will be asked for you. From you, okay, these are documents to be provided. And the amount will come directly to your account. This is what is the situation. So there are many schemes like this. My.msme.gov.in. I have taken a snapshot of that. I will be showing that. Next one is this Champions Grievance. This is a recently launched portal during the COVID time. Because during the COVID time, as you know, all the businesses have suffered. Everybody has suffered, and particularly MSME sector has suffered a lot. तो उस समय फिजिकल मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं था कि कहीं पे जाएं क्योंकि लॉकडाउन वगैरह हो जाता था. तो दिस MSME portal was launched where one can put a grievance, any inquiry, any grievance, any knowledge to be obtained about any scheme. जैसे भी लैंग्वेज है, जिस भी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में लिख दीजिए, इंग्लिश में लिख दीजिए, टूटे फूटे शब्दों में लिख दीजिए, कैसे भी लिख के यू पोस्ट अ कंप्लेंट ऑन दिस पोर्टल एंड देन इट विल बी एड्रेस्ड within 72 hours. In Delhi, we have this champions control room, state control room, because it is located in each state. We have in our own office, and we have received almost 15,000 complaints so far. Out of this, 99.9% complaints have been resolved within 24 hours. We generally are online, and it is from 8 a.m. to 8 p.m. 7 days a week. Generally, what we do, we keep on looking at the problem, and those problems are resolved within 1 hour, 2 hours, 3 hours. Because what is their problem? Their problem is like this: I don't find the website. What is the address of the website? We have to simply give the website. How should I go? My payment is not being made. How should I go about it? We give the details of Samadhan and then say, if your problem is not resolved, please give us the feedbacks. So this way, many of the entrepreneurs have been helped. And even being in Delhi, many of the complaints we receive even from Gujarat also, because we have given a telephone number also, dedicated telephone line, landline number. And it has been put like this landline number to ensure that the person is present in the center. If you are giving the mobile number, that the person can be anywhere in the world. But if you have given the landline number, then that officer has to be physically there to answer the query, and one can raise the query from 8 a.m. to 8 p.m. I hope Champions portal is also clear. And then there are network of support organizations. There are many of the support organizations like National Small Industries Corporation, CDB, Small Industries Development Bank of India, NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development, and so many. So all those things are available to help MSMEs. Clear? Anything you would like to stress upon? Sir, what time we are going to break? No, you tell me the time. Accordingly, actually, because I have the next session also, so I will continue even in the. Okay. So I think we are running approximately to the time. Next click kar dijiye jara se. I will like to show you something. This is the Udyam registration portal. Original, I am stressing upon original Udyam registration portal. This is that. You have to go and get it
registered here only. Next. Registration of MSME, this is the website address. It is udyamregistration.gov.in. Here, next. If you Google search it, again word of caution I will like to give. That's why I have put this screenshot here. अगर आप गूगल सर्च करते हैं कि मुझे एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करना है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, then you will get lot of websites. Say for example, at that time I have put this keyword and first two websites are fake. First two websites are not the genuine website. If you click on that, that will open the Udyam registration portal page, but it will ask the money from you. किसी में कहता 1500 रुपए दे दो, किसी में कहता 1995 रुपीस का चार्ज लगेगा MSME के नाम से. They have even put the name as msmeregistration.org. Okay, msmeregistration.in. Don't get trapped with that. The original registration is msmeregistration.gov.in. Gov.in is the extension in the portal for Government of India. So that is the genuine website. So you have to visit that website, which is Government of India. Otherwise, you visit our official websites. Even our official websites also, it is a connection given to that. That actually you can go to that one. Next. This is again a registration thing, because those organizations which were previously registered with Udyog Aadhaar, they have to migrate, they have to transfer it from Udyog Aadhaar to Udyam registration. I hope you have done that. Okay. So Udyam registration, again, it is free of cost, but you have to register here. So there are two types of MSMEs existing in the country. One, those who have registered earlier, and the other one which have not yet registered. So in these two categories, there are two columns. If you are registered earlier, then the data is fetched from that, which is populated in the form from that. And if you are not registered, you are new, then the second column, then all the data you have to put at your own. So this is what is the original website. It is micro, small, and medium, and one more category, it is champion. It is an unofficial. There is no definition to champions. We call champions those organizations, those enterprises who are doing very good in their particular sector. That can be micro enterprise also, champion, micro enterprise. It can be champion, small enterprise. It can be champion, medium enterprise. Because they are doing exceedingly well. We are rewarding them also with some incentives. So that is the idea. Next. This is the champions portal, which was launched by our Honorable Prime Minister, a very visionary officer, I must say, very visionary leader. सही मायने में इनकी सोच को सलाम. इन्होंने उस समय में ये सब चीजें सोची थी और किया था, and it was launched online. Wonderful scheme. Thousands, lakhs of entrepreneurs, both prospective and existing, have benefited because of this scheme. Wonderful scheme. And all the data is collected. Now that will be pushed in the FAQ form, frequently asked question, and the data will be compiled so that those who are looking for the opportunities, those who wanted to have this information, they can have this information. So that is the idea. Next. Again, this is the www.in. These are the official websites which actually one must look for. Next. Again, I was talking about this my.msme.gov.in. In this, you must be seeing certain tabs. All these are categorization of particular schemes. जो स्कीमें हैं अलग अलग, जैसे मार्केटिंग से सपोर्ट से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, IPR से रिलेटेड है, etc. etc. Those have been clubbed together and put under one tab. So if you click on that, anybody, it is open to everybody. If you click on that, you will get more and more information about it. And if you are an existing entrepreneur, you want to avail that benefit, you are eligible for that benefit, you click on that and you can apply online also. So this is the benefit. Next. Next. Back. So I will like to stop here. If there is any question, you are free to ask. Any question? Okay. Sir, I think we can. Acha, friends, I will like to say sorry. I have to be rude. मुझे आप लोग के साथ रूड होना पड़ा क्योंकि मैं भी अगर आपकी जगह होता था ना तो शायद इतना अटेंशन नहीं देता था. ठीक? I had to be rude as I have to be rude with my son.
जिसको बाद में मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि यंगर जनरेशन को बोलना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब वो बच्चे जो है ना हमारे बाप हैं, हमारे बाप तो हमारे बाप हैं ही, क्यों सर। तो आई एम रियली सॉरी if I have used any hard word for anybody. I didn't have any hard feelings. My intention was only to make you more attentive, जिससे आप डरते हो उनका नाम लेके। बाकी वाइस चांसलर से कह के खुद शर्मिंदा नहीं होना चाहता, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी शायद आपकी जगह होता तो ऐसे ही करता। ओके। हाँ, स्टूडेंट्स, हिरल भाई, on. Students are informed not to leave the seats. Thank you so much, Goel sir. It was very informative and a wonderful presentation. Not actually presentation, but the interaction. And we are highlighted with so many things which are earlier not known to us. Guys, sir has pointed out so many things which are actually to be understood by us. He also said sorry, but he knows how the things are important to us, or particularly for the students, as far as the future, bright future is concerned. So kindly don't only focus on the marks, certificate, but be attentive. Especially, I would like to tell you the communication skill you are applying. You are just answering in a way to the esteemed personality, which is with us from New Delhi. So I guess we should focus upon these things, which ultimately can be a good help toward the development of our personality growth, I can say. Sir, sorry to disappoint you from our student side. It is in startup and MSME. We had very good information in the morning session, and after enjoying delicious lunch, now we are gathered in the same auditorium hall for the next technical session, where the esteemed personalities and the experts of the theme are with us. Among them, Dr. Ashish Patel, CEO, MII OFA Agrotech Ventures Private Limited from Mumbai, is virtually with us. Sir, on the behalf of our university, I heartily welcome you. Thank you. Sir, am I audible there? Yeah. Am I audible to you? Dr. Ashish? Yeah. Am I audible to you? Yes, sir. Are we audible there? Yeah. Okay. So, sir, I once again welcome you and switch over to you to deliver lecture on startup opportunities. Yeah. Thank you. So, first of all, I really thanks to Junagadh Agricultural University. I'm really thanks to Honorable Vice Chancellor Dr. Gontia sir. Then I really thanks to Goel sir, because last sessions I attended through YouTube, and I really learned a lot of things from him. I really thanks to all the Junagadh Agricultural University uh, staff members, all the respected teachers, and all the students. I mean, who are really, at a very high enthusiasm. They are sitting and they are, listening about the kind of startup activities, or what kind of startup that we are going to run, or what is startup it is. So I want to start with my PPT. So I'm sharing my PPT.
So please respond me. Are you able to see the PowerPoint presentation? Not yet, sir. Now it's visible. Yeah, thank you. So I'll introduce firstly myself Ashish Padil. I'm heading Myofa Agrotech Ventures Private Limited on the position of CEO, and my company name is Myofa Agrotech Ventures Private Limited, and the company head office, which is in Mumbai. And we specifically, we are working on the agricultural segments. So, during my journey, I have gone through the opportunities and many challenges, and that I wanted to share with you, because you guys are, you are new and you want to come into these segments, and I want to, share these things from bottom of my heart, because whenever if somebody is interested to, interested to work in the agricultural startup, he has to know what kind of opportunities and what kind of challenges he is going to face. So this creating opportunities, you people see in this. I mean, this is agriculture is one of the biggest, segment where we can create a lot of opportunities. So that's why, if you think that this creating opportunities is a kind of slogan to my company, that is Myofa. So Myofa is what? Myofa is when we were started our company, his name is a Myofa. So we specifically made in India, organic for all. So our vision and mission is to provide organic, clean products to the end users. So that is our mission and vision. So we are, working on that on this same segments. So be specifically for the today's lecture, I want to highlight the opportunities and challenges in the agricultural startup. But before that, you people must know what is startup. So I think in the earlier lectures, you people heard about the different types of MSME scheme, what is small, medium, and micro enterprise and everything. I mean, that's a lovely, fantastic lecture given by the Goel Saab. But, in terms of a layman's language, because see, if you ask me about my education, I'm not taking any kind of degree in the business administration, but I learned from the Hard Knock University. I mean, hardly hitting on my face. I'm flatting many times on my face, and I again stand and again, started my journey towards the startup. So, what is startup? In the layman language, the startup is just like uh, any kind of a business that creates a revenue. We said it is a startup. So any kind of a business which can generate a revenue, we said it is a startup. Now come on to the agricultural startup. What is mean by agricultural startup? So any kind of agricultural activity which can generate a revenue, we called it is a agricultural startup. So anything, if you have a kind of opportunity to generate a kind of revenue out of that, we said agricultural startup. Now, before going into the deeper segments, or before going to initiate any kind of a startup, you people must know the different things. So before going in details, you should ask yourself a varieties of questions before starting a kind of business. So what are these, or what are those kind of questions? So the first question is, what is problem statement? So guys, this is one of the important things. If you don't know the problem statement and you are entering into the startup, or you want to create a kind of business, then it is a bigger loss. So why it is? Like suppose in our day-to-day running life, if you are able to find out the problem statement, I mean, like in the agricultural line, we said there is an upward stream and there is a downward stream. Upward stream means something that we are, put it to the plants, and that plants is growing and it gives the yield. So that is upward segment, and the downward stream is like a yield, and the market and the kind of revenue that we are going to generate. So from this
upstream end to downstream end, there must be a kind of a problem statement. And without problem statement, if you are starting a kind of business or a kind of a startup, then there is a problem. So that's why one of the important thing is you must have the problem statement. Next is how I am going to solve that problem. So that is also an important question. I mean, in the real life, there are varieties of way to solve that problem. But how I'm going to solve that problem is important. And that way, from that way, how I'm creating a business out of that. I mean, during the journey of solving the problem, how I'm creating a business. So you guys, maybe I don't know whether you know the story of Dunzo. You know, one of the IT guys who is facing the difficulty, during the Saturday, Sunday. I mean, he is working on the in the big IT company, and only holidays of one day, that is Sunday. So on that day, he has to, organize everything. He has to purchase everything required for his home. So what his business idea is, like, when the people are sitting in the home, that person gets everything ready-made and is in home delivery. So that kind of spark came into his mind, and he started the business activity. I mean, before that, he has to, went into the different into the different homes and ask about what kind of service you people want, and he has to try the deliver a kind of vegetables, and deliver a kind of any home required. So that kind of problems he was able to solve, and he started his startup called as a Dunzo. So, but out of that, how to create a business out of that is important. So my suggestions to you guys is, firstly, start whatever you want. Like if somebody wants to create a business by selling the vegetables, so he has to go into market and start selling the vegetables and see what kind of responses getting from the customer, and get the confident. And without that, if you are directly going for the starting the business and involving the money, then it will create a problem to you guys. So that's why firstly sales, or firstly start working on that business idea. And once you get the confidence that this kind of a business idea is running into the market, it will create a revenue out of that. Then and only then you can start the things. Next is, what is my exit plan? So guys, this is also important question. Whenever you plan to start a kind of business activity or a startup, you people know that what is my exit plan from that business. And this is very much no, because it is a kind of a bottom line, or a kind of a upper line that you people must know. That's why after 8 or 10 years, I'll make my business of 2,000 crores or 4,000 crores, and then I'll exit from the business. So that kind of a short line you people must know. That's why your exit plan be also ready. Now next question is funds for starting the business. Like into the market, if you see, there are varieties of way to get the funds for the businesses. So that we will see in the latter present slides. But you people have the plan, or you people must know how we get the funds for doing the businesses. So like the in the initial phase, people are investing himself's money or herself's money, or maybe he's going for the venture capital, or maybe he's going for the incubation centers, and there are varieties of ways. So that's we will discuss in the latter phase. And next is, always remember, no charity at all. If charity is there, then it is not a business. Be specifically, if you are working in the agricultural sector and in the market line or into the sales, then you people must know there is no charity at all. If charity is there, then there is no business. One of my important suggestions to you guys is, please read the book Rich Dad and Poor Dad. This is one of the
fundamental book I said, and one of the phenomenal book which can create the which can creates you as an entrepreneur. So that's why please read this, Rich Dad and Poor Dad. Now the next thing is, what kind of organizations that I wanted to form. Like as Goel Saab says, there is a limited liability partnership or private limited. So there are varieties of ways, like there may be a LLP or maybe a private limited, then public limited. Now, how this private limited converted into public limited, that is also, kind of study that you people must, read out from the literature, and how I enlisted my company when we getting into the profit and these things. So you guys, focuses these things also, like what is LLP, what is private limited, what is public limited. Now this trust and NGOs, these are not kind of organizations which can create a business, but there are other ways to people make a business out of that. So that is also kind of things that people are doing in the real world. So I mean, this is also a kind of idea you people focus on that. Now the important is equity, or we can say the share. So why I'm tracing this important terminology is because whenever, for the expansion phase, you people know what is meant by equity and what is its importance in the real life business. So equity means what is the shareholding of yourself, or what is the shareholding of your partner, or maybe the different organizations which is involved with you. So like what happens, I hope you people see any one episode of Shark Tank India, and there are a number of sharks sitting on the opposite sides, and on the other side people come and thrown out their ideas and asking about the money. But against that money, the people demanding the equity, and the people ask one question, and that question is, what is the valuation of your company? So that will impact on the equity. So you guys put it a thrust on the equity. And sometimes what happens, you people's we people's, we said, because I am also coming from that journey, we are working on any other organizations, and during that time we are not holding any kind of equity, and we are simply doing a employment or a kind of a job. But if you have a kind of equity, and then and only that case you are become the owner or a real entrepreneur. So that's why this is equity. And if you want to generate the funds, we have to dilute our equity like 2% or 3% or 5%, and against in that we must have the fund enter into the system for the expansion. So as I stated you earlier, what are the varieties of way for the funding? The first one is like a self-finance. Second one is a seed funding from the angel investors. Third one is a government subsidies. And like MSME has a different subsidies that Goel Saab is already stated you, and we will more emphasis on this aspect to you. And next one is a venture capital funding. So, in the earlier phase, in our startup idea, people are investing themselves money. Like we said, it is a self-funding or self-finance. Then what happens if we realize that this fund is not enough to us to, expanding the business? We should call to the angel investor. So in the angel investors, what we can do, there are varieties of angel investors available in the market. So contacted them, ask them for the investment, then pitch them your business idea, and take the same fund from them. Like as we speak, it looks like a very easy things. But when we go to the market, people are asking you 1,000 times, or people are failing you 1,000 times that we are not going to invest in your system because it looks like a failure, or maybe this or maybe this. And this is genuine, because if the idea is not strong, if that investor does not feel that that idea has the potential, then in that case you are
uh, uh, you are getting the failure out of that. So that's why to getting the seed funding from the angel investor is also way, but we have to very much strong. Next is a government subsidies. Like there are varieties of subsidies. Maybe the example is PMEGP, Pradhan Mantri Employment Generation Program, where you can get 25%, 35% subsidies and everything. So there are varieties of subsidies available with the government. So you people take the opportunity of that. Also, you have to register your firm into the Startup India scheme and get the benefits out of that. So guys, this is very much important because it gives you the so much benefits. So that's why you people must know what are the different government subsidies available for this. Then next is a VC funding, that is venture capital funding. So in that case, there are big firms available into the market. So what they are doing, I mean, they go your their financial sheets, and if they see that there is an idea and which is having a great potential, in that case they people take the 2%, 3% or 5% equity, and against that they will funds you. But in that case, you should be very much clear how much amount of funds you require and what are the reasons you want that funds. So, and also what are the bifurcations that you are going to do. I mean, what are you doing with that funds? So you guys must have very much clear with the Excel sheets and these things for the VC funding. So this is a funding. Now next, one of the important is a cash flow statement. So my personal experience I'll share with you. Like for the cash flow statement, before creating our company, I'll set on the cash flow statements, I think more than 200 times. And, we are, every time we are changing this cash flow statements, every time we are changing the plans, and it was taken almost 6 months of a time to, for this. So why it is? Because planning is very much important. And without plan, if you're doing a business activity, then it is, it is a disaster for us. So that's why cash flow statement is also important. I mean, what is the cash flow statement is like cash inward, cash outward. I mean, how much cash comes to us from the business point of view, and how much cash is going out of that, and how much profit we are getting out of that. So this is specifically cash flow statement. So there are two big heads. One is an income head or revenue head, where you can like take the example of a 10 rupees a vegetable, you can take it from the farmers and you are going to sell into the market at rupees 20. So 10 is, that is your expenses, 10 rupees expenses. Now your income is 20. But with that, there are a lot of things that come. I mean, the traveling cost to travel, I mean, to deliver that vegetables from, from the farmer's farm to the market, then persons involved in that. So these costs are, incurred in these things, I mean, income and expenses. And finally, the differences in between two, you got the profit, and a profit divided by the revenue that you are generated is your specifically profit margin. So what is the gross profit? What is the net profit? These also statements you people must go through it. What is gross profit? What is net profit? What kind of profit we are maintaining? Then the capex. I mean the capex and opex. I mean the capital cost involved in it and the operating cost involved into the business. So capital investment is suppose like we are creating a kind of a factory, or we are erecting a factory of any kind of agriculture, or maybe like take the example of a greenhouse structure. But and for that we must know what is the capital investment that we are going to do. Opex is a daily operating cost that we required for it. So capex, opex, that you should incorporate it into your cash flow statements. And the next is EBITDA. I mean the earning before interest and amortization. I mean, after eliminating this a kind of a taxes, what
how much amount of money that we are earned, that is also important. So that's why EBITDA is also important. And next one is a break-even point. So break-even point means when the expenses head crosses to the income head, at that point we said it is a break-even point. And you guys, before starting the business activity, you should know where is going to I meet this break-even point. So many of the times what happens, we are preparing a cash flow statement for one kind of business activity, we have planned everything, and once we jumped into the actual real life businesses, our our plan or our cash flow statement is moving towards a other end. So that's also happen in the real life. But you should very much stick up with what kind of ideas, what is our cash flow statement, where we have to spend the money, what is my heads and everything. So you guys focus on this cash flow statements also. Now the important is a pitch deck. Now why pitch deck is important? As we discussed earlier, like for the funding from the angel investors or funding from the venture capital funding, we peoples have the pitch deck. So in the pitch deck is simply a PowerPoint presentation where following points must be included, like our introduction, our vision and mission, then what is the problem statement that we are highlighted or that we are identified, then what are the statistics about the revenue, I mean how we can generate the revenue, from where it can be generated, what are the values of the revenue. So that we must also have. Then the kind of idea or innovations that we are going to apply to solve that problem and to generating the revenue. Then one of the important from my point of view is a team, because without a knowledgeable team or without appropriate team, nothing is happened with your a business. So that's why team is so much important. So please be specifically out of this team. You should have a very much strong team which is having enough experience, enough academic background, so that they will thrust the business and they will generate a revenue out of that. Then the important point is why funds are essential for the business and company, and company how it will utilize it. That is also important. I mean, what we are going to do with that funds, maybe the horizontal expansion or maybe the vertical expansion, everything that will come into the part. But these things, I mean, this point, funds, what are the necessities of funds, you should add into your pitch deck. And the next is offerings to the investors. Obviously, nobody can, do the charity. The people's, I mean, everybody into the market wants the a kind of, things that you are returning to them. So they will ask, as I stated you, they will ask for the equity, or maybe they will ask you 20 times, 30 times returns. So that is also an important point, what kind of you are going to offer to the investors. So this is up to the pitch deck. If you have any kind of doubt, then please let me ask, and then we will move forward. Yeah, any student? Students, feel free to ask any question if you are having in mind after going through the presentation by sir. Anyone from the student side? सर गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली बात आपने जो कि आपको बुक पढ़ना चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। उसमें रॉबर्ट सर ने जैसा कि बताया था कि आपको अगर कुछ लर्न करना है, अगर तो सबसे पहली चीज है कि अर्निंग पे ध्यान मत दो, लर्निंग पे ध्यान दो। उन्होंने जेरोक्स ज्वाइन की थी सेल्स के बिजनेस में। अगर हम प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें तो सर होता क्या है,
एक्चुअल में ये डायलेमा हमारे साथ बहुत ज्यादा रह जाता है कि इफ वी डू द सेल्स और मार्केटिंग बिजनेस व्हाट पीपल विल थिंक. तो सर इट्स माय डायलेमा वेदर आई शुड डू द सेल्स और मार्केटिंग एट दिस एज और नॉट, क्योंकि हो सकता है उसके बाद डायरेक्ट या तो किसी कॉर्पोरेट में जॉब वॉब लग जाए इसके बाद, तो वो भी एक ऑप्शन होता है. तो ये कहीं ना कहीं डायलेमा बहुत ज्यादा रहता है. Yeah, I mean, your question is so much fantastic. I'll tell you my real life example. Our corporate office situated in the Mumbai, but our one premises which is in the Sindhudurg. So Sindhudurg basically growing a mango, okay, so Alfonso. So before initiating the business, what I did, I take the mangoes from the farmers. Maybe I don't remember the value, maybe 15 or 20 dozens of mango. I take my own car and I go to the Lonavala market. I opened my car, I put it all the mangoes boxes outside the area, and I just try to make the sales. So you forget about this dalmia and everything. My request is, if you want to make a business, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि to forget everything, just focus on your business. Then there is a no option. I mean, if you're creating a kind of options to your life, in that case, then it will create for you also in a later phase. क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा, आपको लगेगा यार छोड़ देता हूँ ये सब और चला जाता हूँ कहीं दूसरा कुछ कर देता हूँ, जॉब कर देता हूँ, ये कर देता हूँ. बट दिस इज नॉट द ऑप्शन फॉर द बिजनेस. और उसी चलते मेरा आपको ये रिक्वेस्ट है कि बिफोर जंपिंग इनटू द स्टार्टअप बिजनेस, यू गाइज मेक योर माइंड वेरी मच क्लियर. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो, टाइम ले लो, टेक योर सफिशिएंट टाइम, बट डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. और दूसरा अल्टरनेटिव उसके लिए आपको क्रिएट नहीं करना है. Any another student? Okay, Thank you, Dr. Ashish. Yes, sir. Yeah, we move forward. Okay. So yeah, I'll share you the my case study. Why this case study is important? Because I want to share with you, I mean, how you are going to present your pitch deck to the investors and to the angel investors or maybe the VC funding. So this MyMart case study I'm going to show you, because MyMart is a new initiative that MyOFI is already started. So that I wanted to share with you, because all are from the agricultural background students, and these guys must know what is this and what is the importance of this this MyMart initiative. So see, what we are trying to do, we are trying to find out the rural problem peoples. And if you see these two graphs, like in the year 1960, 82% people living in the rural area. But as we move forward, in the year 2020, only 65% are living into the rural areas. But in case of population, if you see in the 1960, less than 400 millions of population living into the rural areas. But in the year 2020, more than 900 people living into the rural areas. So the migration is the problem. I mean, the peoples are living into the rural areas. They are taking the birth, but they are not staying into the rural areas, and they are trying to moving into the city areas. And the reason is they are not getting the opportunities. So we are trying to create the opportunities. So that is the main focus. That is the main problem that we are highlighted. So rural development in India is important, as it helps in flourishing the economy of India. So people must stay into the rural areas. So, and for that purpose, people must get the opportunities to getting the money. So what are the problem statements that we are already highlighted? So firstly, what is MyMart? So MyMart is basically made in India, and Mart. Mart, M is a marketplace, A is an agricultural advisory, A is a rentals,
and T is a trainings. So we are creating a business out of this MyMart. So marketplace. So what are the problem statement that belongs to the marketplaces? All the farm inputs not easily available in the rural areas. I mean, the farmer wants like maybe the pesticide, insecticide, or fertilizers, but those who are running the agribusiness, shops in the Sindhudurga region, the people selling the products at a very high rate to the farmers. So that's why, and also if the farmers wants to procure such kind of fertilizers or insecticide, pesticide, or any agricultural related material, he has to travel from this location to another district like Kolhapur district, which is 160 kilometer away from this place. So that's why all the farm inputs are not easily available. Then doorstep delivery is a challenge in the rural areas. You see, there are big players in the market like Amazon or maybe the Flipkart, but the big challenge is a doorstep delivery. So we are trying to solve this doorstep delivery. Next problem statement is a agricultural advisory. Like people are blindly applying the fertilizers or insecticide or pesticide to growing his farm, but they don't know what is the exact requirement of that. Or maybe in case of irrigation, exact irrigation water requirements the people don't know. So that's why we are solving that problem also. And next is unavailability of farm expert for a site specific farm management. Like in the Sindhudurga district, here is only one agricultural university to providing service to the more than 6 districts. So we specifically in the Sindhudurga, like Dr. Bahasab Sawant Kokon Krishi Vidyapit, which is more than 200 kilometers away. So how these farmers can get the experts for site specific farm management? So we are solving that problem also. Then next is a rentals. I mean, what happens as we see, because of population growth, the landholding capacity of the farmers is going down. So if the farmer wants to procure a farm equipment, he has to invest a lot of money. So that's why we are solving this rental problem. And next is a unavailability of skilled laborers for farming and other operations. Like if somebody wants a lawnmower guys, or somebody wants or maybe grass cutter guys, or somebody wants a veterinary doctor, then the people didn't get. So that's why we are providing solutions for that. And next one is training. I mean, peoples are growing everything, farmers are growing everything, but he doesn't know how to sell it. So that's why we are providing solutions for that. And also we are developing a skill. So this is a MART concept that we are already developed through the MyOFA. So now this is the numbers. This numbers, I mean, the investors want. If you see, agricultural household per month income is around 10,280 rupees. So out of that, that farmer getting 4,063 rupees from the wages, and from the production is getting 3,798 rupees, and rest is a minimum part. So MyMart is hitting these two components, I mean wages and production, and MyMart is going to increase the revenue of the farmers in the win-win situation, and our company wants to increase the share of these wages and also production. Now how that we will see in the next stage. Now this is also a talking number. If you see, out of the total net irrigated area of Maharashtra, only, this is an imagination, right? So only 2% area covered through the MyMart services, then the area would be 1.63 lakh acres. And the average cost, I mean, the farmers are utilizing for the farming activities, minimum is 20,000 rupees per acre per year. So if suppose the total spend to cultivate 1.63 lakh acres, the value is 3,250 million rupees. And if suppose out of the total, if only 80% service of the Maharashtra farmers, if choose to take through the MyMart, then the revenue would be 2,600 million. So these numbers, the angel investors and VC funding members want. I mean, how you are going in a big way. So these are the rural needs like technology aided farming, easy access, doorstep delivery, doorstep medicines also, then
the growth opportunities people want, skill, funding for businesses, and avenues to sell. So we are going to highlight on these problems also. So our solutions is online offline mart. Like in the Sindhudurga, we are right now creating the a big mall where he is going to get all the solutions. Like the first, I mean, in case of online and offline mart, if farmer wants a kind of fertilizers, insecticide or pesticide, he has to utilize our app and put it the home delivery, then we will deliver to them. Also we are having the own shopping mall where farmers will come to that mall if it is possible to him and take the material whatever he wants at a very cheaper price. Also we are providing them telemedicines, and also we are providing the facility of e-pharmacy also. So if if somebody from the rural area wants a medicine, so he has to go to the mobile applications and put it the orders, then order will going to deliver to him. So this is kind of mart. Also we are empowering women through the training, marketing, and through the selling platform. Now we are having our own selling platform, that is MyMart selling platform, where if suppose any self-help group or any farmer wants to sell his own product, then he is able to put it his own product for the sales, as like Amazon or maybe like Flipkart is doing. So on the other hand, those are peoples from the society, if they wants to procure that material, then they will take it from the selling platform. But for that purpose, that farmers is essentially have a kind of license, and he has to having the own farm. So we are making a such kind of provisions to them. Also we are providing the skill development. Then also we are providing a part-time job to the students for home delivery, that I will show you in the next phase. And also we are trying to generate a next farmers. So this is a MyMart, like marketplace, advisory, renting, and training. So a marketplace, I mean, buyer meets seller, one-stop shop, doorstep delivery, competitive pricing, platform for farmers and self-help group. So everything comes under the marketplace. Now in case of advisory, so as I stated you earlier, people didn't get the proper advice to his own farm, what to grow, I mean, of the season in the region, what type of things that he has to grow, then how to grow. So these things. Also, if suppose if there is a kind of a pest attack or insect attack on the farm, then if he wants to talk with the experts, then we are having a own expert team. So if he takes that mobile app, then he will automatically directly connect with us and directly connect with the experts. So expert gives him the advice. Also he has a facility of image capture consultation. If he is able to capture the image of his own farm and send it to us, we will provide him a solutions. And also we are working on the data loggers and sensors technology for precision farming. So our plan is to installing the automatic weather stations in each taluka of the Sindhudurga district, and we are providing them accurate weather predictions, pest attack predictions, insect predictions, then how much amount of irrigation has to deliver for the different crops. So these things we are providing through this advisory. Also on the renting platform, it is like just Ola and Uber app. On the one side, there are farm equipment owners, and on the other side, there are farmers. If somebody wants to, take the like tractor or maybe the power tiller on the renting basis, so he is taken from the renting part. So this is a renting facility we are providing, and also training. That means we are providing a workshop and a hands-on training for skill building, carpentry, plumbing, or maybe also like a beekeeping, because we are already conducted a beekeeping training program to the farmers, and almost more than 50 farmers has already procured that bee boxes and set up into his farm, and we are taking the responsibility to sell their honey. So that kind of activity we are initiated into the rural areas. So this is a kind of we are providing the opportunities for better livelihood.
Now, one more is one of the toughest challenges are logistic innovations. If you see in the Sindhudurga district, more than 776 villages are already in this district. So how we can going to deliver is a challenging for us. So we are, highlighted this logistics innovation. So what we did, I suppose if somebody wants to somebody wants to involve with the MyOFA or with the MyMart, then he has to take the mobile application. He has to register himself through this like Aadhaar card, or he has to put it his working hours, weight category, vehicle details, etc. So once we do this, so our AIML team, I mean this ERP team is, they are having their own AI and ML tools. So through the AI and ML tools, we are going to, catch easily the peoples who are traveling from one location to another. So we are putting them a request to take the material from the MyMart shop and deliver to the specific home, so that you can earn a 25 rupees money for delivery. So we are getting a good response with this logistic innovations, and we are already implemented it. So these are a user interface that we are already built it. I just wanted to show you how startup activity is running. So I'll be specifically put it over here. And these are the MyOFA advantages that I wanted to highlight. We are providing a marketplace for selling and renting. We are working as like a special purpose vehicle for farmers and SHG. We are eliminating the middleman. This is a kind of sustainable business model. We are providing them a competitive pricing, and it is a purpose driven. So these are my team. So here is a technical team. Myself, Dr. J. Joshi is heading advisory, Satish Rakunde, and all these teams. These are the board of directors, and these are the advisors. So this is about MyOFA. Now, before going to the opportunities, do you have any question? Then please let me know so that I'll move forward. Students, if you have any questions. Maybe I think afternoon lunch create a problem. No, I think let us move forward. Thank you, Dr. Patil. It was a really wonderful experience. I just, madam, finish 1 or 2 PPTs and then. Yeah. Okay, sir. Is there anything? Then we are eager to know from you. Yeah, actually, I am putting a kind of a slots. After one segment of finishing, then I'll ask a question because. Sure, sir. Yeah. So, what kind of agricultural startup opportunities currently in the market? It is important to you guys. The broad classification is like one who deals with the agricultural inputs that we call as upstream businesses, one who deals with the agricultural output and post-harvest product that we call as the downstream businesses, then one who deals with the fintech, other is a big data analytics, and next one is a engineering-led innovation. So these kind of opportunities are currently available. There are a lot of gaps available where you can create a revenue or create a business out of that. Now, what kind of the opportunities that deals with the agricultural inputs is like selling of fertilizers, pesticides, seeds, nursery input businesses, agricultural and farm advisory businesses, precision agricultural, drone technology and businesses, remote sensing and GIS, equipment renting businesses, virtual farming. And what are the startups that are already working into this segment is like AgroStar, Kisana, Dayat, and MyOFA. Now this is one who deals with the agricultural outputs and post-harvest product, like agricultural and allied services related, FMCG products that may be business to customer, business to business, or maybe selling through the e-commerce. E-commerce, it may be business to business or business to customer. Then a kind of businesses providing
farm to table agricultural products, then import export, then also traceability and organic farming. Now, what are the examples? Is like Amazon, Flipkart, Big Basket, 24 Organic, Mantra, Myafa, Cropin. Now, these are the initiatives working in these segments. Now, miscellaneous is fintech, maybe the Lazy Pay, Pay Later, Kisan Credit Card. Engineering solutions is like irrigations or farm machineries. There are varieties of companies that are working in the engineering solutions. Agricultural and allied services business opportunities, like somebody is working in the poultry, beekeeping, goat farming, dairy, etc. And the example is a recent one is animal. You people go and search what is animal. Then big data and analytics and IoT. So the example is a Ninja Cart or Agronext. So there are much more examples, but you people go through it and see how their revenue model and what is their business model. Now the challenges involved in such kind of businesses. What are the challenges involved in the agricultural businesses? So agricultural businesses need innovations every time. See, it is not a very much easy thing like the other businesses. You should have innovations at every time. You should face many challenges at a one spot. So that's why innovations is necessarily. Then heterogeneity of a climate and soil. This is also one of the bigger issue. If you see, the pomegranate is successful in the upper part of the Maharashtra, but it is not possible to do such kind of activity in the Konkan region. So that's why the heterogeneity of climate and soil. But what is the solution for that is to erection of post-harvesting erection of a greenhouse structures. So that kind of solutions you should have. And you should have a very much high patience into the business, because without patience, my suggestion is, if somebody doesn't have the patience, please don't come into the startup or into the business. Then you should have the appropriate funds. Then you should have the enough equity to share with the venture capitals. Then you should have the risk bearing capacity. You should tackle, or you should try to get the with the businesses which are having a very low profit margin, because it is agricultural business. Sometimes you get a good money, sometimes you get a bad money. So that's why low profit margin is also a problem into the agricultural businesses. I mean, we specifically marketing of agricultural produce product. So you should have such kind of mentality. Then it is a capital intensive business. Then also you should have the coordination among the founders, because your thoughts must be match up with each other. And into downstream businesses, you should have the proper arrangement of the logistics, because logistics increases the cost and it increases the challenges. So that's why innovations in logistics is almost necessary. So that is with me to guys discuss with you. On the other segment, I mean, we are working on another virtual farming concept that also I wanted to share with you. I have the presentation, but because of some reasons I was not able to, I'm not able to share with you, but I just orally telling you what we are going to do. We are renting the plots, agricultural plots virtually to the peoples. Now, if suppose if you are sitting in the Bangalore, or if you are sitting in the Mumbai, or maybe in the Gujarat, and you want to cultivate the farm virtually, then you people take that typical land virtually from our mobile applications. Once you do that, you can select the crop, which type of crop you want to grow onto that farm. So once you select it, our team is growing that, and it is 24 hours monitoring, plot monitoring system is there. And also you should have a power to irrigate the field as well as fertigate the field from remote locations. So whenever there is a shortage of irrigation, or whenever the plant is feeling thirsty, during that time our a robot which is available with that application telling you that I'm a thirsty, please deliver a water. During that time, if you hit the button, then water is automatically delivered to your plot. And also same case with the fertilizers. And once the crop is over,
After that, you decide as a owner what to do with that crop, whether you want to pack it and send it to your home, or you want to come into your field and harvest that crop. So that kind of idea, we are also working on that. So that is with me from the MIOFA. Now I open this forum for the discussion, and at least 1 or 2 questions I am expecting from you guys. If anyone has any queries, then you may ask. Sir? So if you could elaborate more about what is equity? Yeah, equity, be specifically, it is a percentage of share. For example, if you have 100 rupees, out of that 95 rupees is with you, that means 95% share is with you, and 5% is with your partner likewise. So it is a kind of, a kind of power which lying with you. About the company. Sir, could you explain in simple words about the company MIOFA in simple words? Yeah, MIOFA Agrotech Ventures Private Limited. MIOFA is specifically made in India, organic for all. So our vision and mission is to provide organically clean products to the society and to the peoples. So it is MIOFA, MIIOFA, and which is Indian made in India, organic for all. I mean, the peoples has the right to eat a clean product. If you go and if you see, like in case of like honey, you people see that there is a a big faulty numbers available into the system, because many of the peoples giving us the faulty kind of honey, and we are eating blindly and we are not able to see. I want to share you the one problem that I'm facing you, because as we are taking the honey from the farmers and we are selling into the market. So what happens? We are collecting the raw unprocessed honey. So raw unprocessed honey, it is a mixture of glucose, sucrose, and fructose, and the maximum percentage is of glucose, and sucrose and fructose is having a very low concentration. So what happens once we take it and we are put it into the market? What happens? It will create into the crystalline form, because glucose will present, the sucrose and fructose is vanished out from the product. So the customers, I'm supposed to be deal with them. The people's feeling that we are selling a wrong products. We are selling a kind of products which is mixed with the sugar, syrup, or anything. But it is technically wrong thing, because it is purely made up of, we are collecting the pure honey, which is, and it is having a glucose. So that's why it creating a crystalline like a structure. So these things, the awareness about the product and about the things is very much essential, or somebody has to create a kind of, awareness among the society. Is there any other questions? Yes, sir. What is your success story? See, if you ask me the success story, like
like in the Konkan region earlier, peoples were not doing the beekeeping activity. But now, if you go and see, people are doing a beekeeping activity very enormously because we are providing them the migration solutions during the rainfall days, during the rainy days. So now the business, beekeeping activities going enormously into the Konkan region. This is our one story. So we are creating one by one different stories. But my thrust, मेरी book अभी बहुत ज़्यादा है तो सक्सेस स्टोरी तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ. Once I feel satisfied, then I'll let you know. So I think there is no questions. All right, we thank Patil sir for telling us and briefing us about the startup equity and everything and all the other startup opportunities. Thank you so much, sir. Yeah, I really thanks to Honorable Vice Chancellor Gontia Sahab and all the faculty members and all the students. I tell you really frankly, a 1.5 year, I just for this kind of what is startup and how to initiate it and how to get the investors and everything, I really made the very much hardship, and I really appreciate those guys. Such kind of opportunities already provided to you to listen the people's experiences, and it is really a wonderful platform to you guys. So my request is please listen carefully, so and take the knowledge from all the speakers. So thank you very much to all of you, and namaste. Thank you, sir. Moving on, now we invite on stage Dr. K.K. Gohil, Assistant Director, MSME, Government of India, New Delhi, to deliver the lecture on Aatmanirbhar Bharat. All the students are requested not to leave the seats. Kindly be seated. Who is boring you, isn't it? Huh?
एनी लर्निंग सो फार? अच्छा, मेरे फर्स्ट सेशन में किसी के कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछे अभी। आपका क्वेश्चन था बेटा, हो गया? यू हैड आस्क्ड सम क्वेश्चन, हो गया? और कुछ पूछना है? एनीबॉडी एल्स हु हैज टू आस्क एनीथिंग? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ MSME? 1 10 and 1 10 and turnover? इतना इजी याद करना नहीं है या नहीं है? वेरी गुड। और स्टार्टअप क्या है वो भी समझ में आ गया था। स्टार्टअप की लाइफ कितनी होती है? 10 इयर्स। मतलब अगर वो पहले से 10 इयर्स पहले से भी होगा तो भी चलेगा, 9 इयर्स पहले का भी होगा तो 1 साल उसकी लाइफ और है। तो एक बहुत बड़ा जो कंफ्यूजन होता है जनरली लोगों को होता है कि स्टार्टअप मतलब न्यू ऑर्गेनाइजेशन, तो इट इज नॉट नेसेसरली न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी मिस्टर आशीष पाटिल तो उनका स्टार्टअप है या नहीं है? से यस और नो, है या नहीं है? डेफिनेटली होगा, क्योंकि उन्होंने एक इनोवेशन लेके आए हुए हैं, सारी चीजें हैं, है ना, और वो एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, सो डेफिनेटली इट मस्ट बी। एंड ही सेज हाउ ओल्ड इट्स ऑर्गेनाइजेशन? इनकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी पुरानी है? कुछ आइडिया? ही सेड सो। लास्ट की लाइन याद कीजिए, कितने टाइम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बोल रहे हैं 1.5 years he said this, तो we can say approximately maybe 2 years, हो सकता है 2 years पहले उन्होंने शुरू किया होगा। ठीक है, अच्छा अब ऐसा है कि जो लेट मी हैव एन ऑनेस्ट कन्फेशन, मेरा पहले वाला सेशन पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, तो हम उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो रह गया था, डू यू परमिट मी टू कंटिन्यू फ्रॉम देयर? ओके, बिकॉज दोज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक्चुअली हम लोगों ने MSME के बारे में तो जाना, व्हाट इज MSME, okay, but exactly we didn't know what are the benefits available to MSME। यार पीछे वाला थोड़ा सा और आगे आ जाओ ना प्लीज, आई टू आई कांटेक्ट बनता अच्छा लगता है। सर पीछे वाले थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। You will also feel comfortable, I will also feel comfortable। वो बैक रो वाली जितनी गर्ल्स है ना, यहाँ आगे एकदम खाली है, बिल्कुल पूरी की पूरी रो खाली रखी है, इन्हीं लोगों के लिए रखी है पूरी रो। देखिए इंटायर रो, यहाँ आ जाओगे पूरे लोग, आगे है एकदम, और आओ और आओ, अभी पीछे वाले और आगे आ जाओ, आगे आओ। वेरी गुड, बड़ी जल्दी जल्दी प्रमोशंस हो रहे नहीं, थोड़ा सा और पीछे वाले और आगे आ जाओ ना, कभी भी पीछे मत रहो, सबसे और आगे आ जाओ प्लीज। यहाँ पे पूरी रो खाली पड़ी हुई नहीं सर? सर एम आई राइट? यहाँ तो सारी रो खाली पड़ी हुई है, या इस स्टेज को पीछे ले जा सकते हैं क्या? इस स्टेज को उठा के पीछे ले जा सकते हैं? नहीं, मुश्किल होगी ना, उनको लाना उतना ही, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। स्टेज को उधर ले जाना ज्यादा आसान है, बृहस्पति उनको इधर खींच ले, इतना जबरदस्त इनर्शिया है, पूछो मत। वो ग्रेट, चलो एनीवे, सो सर शैल वी स्टार्ट? लेट अस गो फॉर स्लाइड नंबर 17। सर उसको स्लाइड शो में शुरू कर दीजिए एंड 17 करके इंटर कर दीजिए। अच्छा, लेट अस मीनवाइल लेट अस डिस्कस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए या अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे MSME हो, चाहे दूसरा कोई बिजनेस हो, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? मनी, आइडिया। वेरी गुड, आइडिया से पहले कोई चीज, पैशन, माइंडसेट। ठीक है ना, सबसे पहले जरूरत होती है माइंडसेट की और पैशन की। अगर जिसका माइंडसेट यही होगा कि मुझे जॉब करनी है, वो करेगा, जल्दी से नहीं करेगा, मुश्किल है। उसके पास आइडिया भी होगा, पैसा भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर, बट अगर उसका माइंडसेट नहीं है तो नहीं करेगा। एक और टर्मिनोलॉजी बता देता हूं आपको, एक टर्म और है, कभी सुना है नाम? इंट्राप्रेन्योर, INTRAPRNEUR। कभी सुना है किसी ने नाम ये? अगर नहीं सुना तो नो बोलो, और सुना है तो यस बोलो। नो तो जानना चाहोगे क्या चीज है? बहुत इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी। एक्चुअली आई हैव डन माय PhD
on entrepreneurship itself. Success of मतलब मैंने सिमुलेशन मॉडल डेवलप किया था, कंप्यूटर सिमुलेशन मॉडल डेवलप किया था टू गेस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो उसमें एक ये वर्ड मैंने उसको किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो क्या है, ऐसे आदमी होते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या ऐसे पर्सनालिटी होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर तो नहीं होते, जॉब ज्वाइन करते हैं लेकिन वहां जाके वैसे ही काम करते हैं जैसे एंटरप्रेन्योर काम करता है. Entrepreneur are those persons who work in others organization just like the entrepreneur does the work. ये बात क्लियर होगी? अगर आपके पास में जैसे एंटरप्रेन्योर के क्या क्या क्वालिटीज की जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर पैशन होना चाहिए, जैसे अभी आशीष जी बता रहे थे, डेडिकेशन होना चाहिए, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, देयर आर सो मेनी, इनोवेटिव होना चाहिए, टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह. देयर आर सो मेनी क्वालिटीज. अगर इस टाइप की क्वालिटीज के साथ में कोई भी एम्प्लॉई किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करता है तो he or she is known as intrapreneur. This is also another way to launch your own enterprise. मैंने बताया था ना कि एंटरप्रेन्योरशिप में जाने के कई तरीके हैं, तो एक तरीका ये भी है कि आप जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहां इस टाइप से काम कीजिए जैसे आपकी खुद की कंपनी हो. ठीक, रिस्क लीजिए, डिसीजंस लीजिए, इस टाइप की चीजों को करने की कोशिश कीजिए और वहां पे अपने आइडियाज को ट्राई करते रहिए कि आगे कैसे आइडिया बढ़ता है. आप लोगों में से एक क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट सेशन में, मुझे ध्यान है, मैंने सोचा था मैं बताऊंगा कि सर अगर मैंने अपना आइडिया बता दिया तो चोरी हो जाएगा. यू रिमेंबर दैट? टू डॉक्टर गणेश बोरा, हु वाज दैट पर्सन फ्रॉम दिस साइड? यस, यू हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन. जनरली क्या होता है कि जब हम लोग आपकी स्टेज में होते हैं ना, तो हम लोग को भी यही लगता है कि अगर मैंने अपना आइडिया किसी को बता दिया तो आइडिया हैक हो जाएगा. Let me tell you, ideas are a dozen a time. कौड़ियों के मॉल मिलते हैं आइडियाज, समझे? आइडियाज बहुत सारे होते हैं, आइडिया को जो इंप्लीमेंट कर पाए ना, ऐसे लोग नहीं होते. अगर आपके अंदर पैशन है, अगर आपके अंदर पैशन है तो आपके आइडिया को कोई चुरा ले, आपसे ज्यादा सक्सेस नहीं हो सकता. समझ गए आप? तो इसलिए आइडिया को, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप आइडिया को हर एक किसी से बात करते रहे, बट until unless you will share your idea with knowledgeable persons, get their feedback, you will not be able to improve. फिर क्या होगा ना कि आपको अपना आइडिया अपने ही आप अच्छा लगेगा, बस ये इतना है, इतना है, इतना है, ये है, वो है करके, that's it. Until unless you share your ideas, discuss about your idea with others, you will not get the feedback. And more you get the feedback, more you are likely to improve your idea. Clear? तो उससे लेकर आप परेशान मत होइए. And moreover, one more thing is there. I will like to share one more thing. जब आप आइडिया से शुरू करते हैं ना, तो ओवर द टाइम, ओवर द जर्नी, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, यू गो मूव अहेड. आप बहुत आगे निकल जाते हैं. आगे जाके हो सकता है कि आप डिविएशन मिले, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो गया है. यू हैव सीन कि वो आइडिया जो है मैच्योर्ड हो गया. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कौशलेंद्र का, याद है? उन्होंने किस चीज से शुरू किया था? वेजिटेबल्स से. आज के डेट में वेजिटेबल्स का काम उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम है. उन्होंने क्या किया? एपीओ बना लिया. एपीओ पता है आप लोग को? कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करो. इंप्रेस्ड? अरे बहुत लोगों को पता है. 3 लोगों को पता है तो बहुत है. गुड, वेरी गुड. इसको एपीओ इज फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे कि मिनिमम 300 फार्मर्स होने चाहिए, और अगर उनका एक ग्रुप सा बन जाता है, वो सेम और सिमिलर टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न को लेते हैं, तो उससे हो जाता है, उनको एक ग्रुप के तौर पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं. तो उन्होंने एपीओ बनाया पल्सेस का, क्योंकि वहां पे दालें जो है ना वो कम होती थी, पल्सेस का, और उसके हिसाब से उन्होंने 1000-1500 फार्मर्स को रोप इन किया और उनके साथ में किया, और फिर मास लेवल पे बार्गेनिंग की हर चीज के लिए. और जितने हम फार्मिंग इनपुट्स की कॉस्ट की बात कर रहे थे, दूसरी चीजों की बात कर रहे थे, ये सब चीजों का. क्लियर? और उसके बेसिस पे उन्होंने बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया. एंड मे बी इन टाइम टू कम ही मे अप्रूव टू समथिंग एल्स आल्सो. ठीक. एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था बिग बास्केट का, याद है? बिग बास्केट वाले ने भी यही किया, अपना उसको ग्रो किया, और इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई जो कि अदरवाइज में मिस कर जाता है, मिस्टर आशीष पाटिल ने. उन्होंने जो बताया कि एग्जिट पॉलिसी भी हमारे पास होनी चाहिए कि व्हेन वी हैव टू से एनफ, व्हेन वी हैव टू मूव आउट. जनरली बिजनेस से लोग मूव आउट नहीं करते, लेकिन स्टार्टअप से क्विट करते हैं, बाहर आते हैं, क्योंकि दे गो फॉर द अनदर वन. ठीक है? तो बिग बास्केट वालों ने भी यही किया. उन्होंने सारा कुछ किया, वैल्यूएशन निकाली, जब टाटा वाला ने वैल्यूएशन निकाली, उसके बाद अपना एक पर्टिकुलर स्टॉक रखा, अपना एक स्टेक रखा एक लिमिटेड वे में,
लेकिन वो मैनेजमेंट वगैरह से सभी चीजों से बाहर आ गए नेगोशिएट करके, और अब नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कौन से प्रोजेक्ट पे कोई बता सकता है? मैंने बताया था प्रोजेक्ट, अगर किसी को ध्यान हो, लॉन्ड्री वाला। यस, नाउ अब एक चीज है कि लॉन्ड्रीज बहुत सारी है, हर सिटी में अलग अलग जगहों पे है, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई प्रेजेंट ब्रांड हो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक, नेशनल लेवल पे कोई भी, तो उन्होंने इस गैप को एनालाइज किया है एंड देन ही इज शेयरिंग नाउ दिस आइडियाज विद अदर्स। ऐसा नहीं कि ही इज कीपिंग इट अ सीक्रेट, क्योंकि उनको मालूम है कि जब तक दूसरे लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, सारे रिसोर्सेज जुटाएंगे, तब तक वो बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक, ही हैज ऑलरेडी स्टार्टेड दिस आइडिया इन राजौरी गार्डन, दिल्ली। ठीक है, बॉम्बे में रहते हो, लेकिन उन्होंने राजौरी गार्डन दिल्ली में, क्योंकि उनके पास कोई जॉब के लिए आया था रिश्तेदार कि भाई मुझे कोई जॉब बता दो, कोई काम बता दो, तो उन्होंने कहा लॉन्ड्री का काम शुरू कर लो, अच्छा काम। और करने के बाद जो उनको एक्सपीरियंस आया, तो ही लर्न फ्रॉम देयर क्या दिस कैन बी अ गुड बिजनेस, एंड नाउ ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ चेन ऑफ लॉन्ड्री, जिसको बहुत अच्छे सिस्टम पे बहुत अच्छे तरीके से लेके जाएंगे, ताकि हाइजीनिक हो, क्वालिटी हो, रेट्स फिक्स्ड हो, इस टाइप की सारी चीजों को लेके करते जाएंगे। तो मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि कभी कभी गूगल सर्च किया करो इन सब चीजों में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। And I'm telling you, many times I go to IITs and this one management colleges and other universities in Delhi also, and I have been invited to some other places. I say, just give an hour a day for a month, exclusively for entrepreneurship. You will get lot of knowledge, lot of thinking, lot of आपके ideas आने लग जाएंगे। शुरू में नहीं आएंगे, 2-3-4 दिन में, 5 दिन में नहीं आएंगे, लेकिन जस्ट लाइक जिम में जैसे जाते हैं ना, ऐसे करके 1 घंटा सिर्फ उसमें दो। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह को छोड़ के 1 घंटा कोई फिक्स टाइम कर, जैसे पूजा करते हैं एक फिक्स टाइम के तौर पे कि रात को 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक, क्योंकि आप लोग जनरली रात को ही काम करते हैं, आपकी जनरेशन जो ज्यादातर रात को जगती है, ठीक है ना। तो रात को 12 बजे से 1 बजे तक मैं फेसबुक वगैरह कुछ नहीं देखूंगा या देखूंगी, मैं खाली एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सर्च करूंगा और देखूंगी क्या चीज है कैसा नहीं। अगर आप ऐसा करके 15 दिन भी कर ले तो आपको आने इंटरेस्ट उस पर आने लग जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आर्टिकल्स है, बहुत सारी आर्टिकल्स है, और यूट्यूब पे ये वीडियोस है, दूसरी चीजें धीरे धीरे करके आपको पता लगने लग जाएगा कि क्या क्या किस किस तरीके से चीजें होती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को देखिए, कहाँ क्या इंफॉर्मेशन है, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल गेन मच मोर नॉलेज देन यू आर गेटिंग हियर। ऑल दोस थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स। और सही माने में जैसे हमारे बीच में एंटरप्रेन्योर बैठे, अगर चाहे तो उससे जाके, जैसे मैंने आपको वो बताया था ना, साइट बताई थी my.msme.gov.in, सिर्फ ये उस पर चले जाए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस पर अवेलेबल। लेकिन ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनको नोट गिनने से फुर्सत नहीं। ठीक है ना सर? कहते बोले कौन, क्या फायदा, मुझे 15 लाख रुपए का इंसेंटिव देंगे, इससे अच्छा मैं उसके बीच में 1 करोड़ नहीं कमाऊंगा। दिस इज व्हाट इज द थिंकिंग। असल में लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को भरोसा नहीं है, बट अब चीजें बदल रही हैं। एक चीज और, जैसे अभी मैं देख रहा था डॉक्टर आशीष ने जो बताया, उन्होंने फंडिंग के कई तरीके बताए थे। कोई बता सकता है एक तो कोई फंडिंग का तरीका जो उन्होंने बताया हो? सेल्फ फाइनेंस नंबर 1, ठीक है ना। यस, वैसे बूट स्टेपिंग वगैरह आता है, इसके कई टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, और भी चीजें हैं। क्राउड फंडिंग भी एक ऑप्शन है जो उन्होंने बताया था। वैसे मैं आपको बताऊं, एक फंडिंग का क्राइटेरिया और है, वो है इंक्यूबेशन। सुना आपने कभी नाम? देखो, हाँ कहोगे तो जवाब देना पड़ेगा, इससे अच्छा ना बोल दो। बहुत सिंपल जवाब है सर, मुझे नहीं पता। ठीक, अब पता है तो बोलना पड़ेगा भाई। इंक्यूबेशन का नाम सुना है कभी? इस यूनिवर्सिटी के अंदर है कोई इंक्यूबेशन? है? नहीं पता है या नहीं है? कभी था या नहीं था? रहेगा या नहीं रहेगा? पता नहीं। खैर एनीवे है। और खैर दूसरी जगहों पे भी होता है। इंक्यूबेशन में होता है कि आप अपने आइडियाज को लेके जाइए, आइडियाज को एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको कमर्शियलाइजेशन लेवल पे लेके आइए, और उसके लिए आपको फंडिंग मिलती है। हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इंक्यूबेशन सेंटर में 15 लाख 15 लाख की ग्रांट देती है, लोन नहीं, ग्रांट। समझ में आया? मतलब अगर आप एक आइडिया लेके आते हैं और उसको कमर्शियलाइज कर लेते हैं, तो 15 लाख की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME आपको ग्रांट देगी, जो आपको रिटर्न नहीं कर रहा। और उसके बाद में आप उसको इंप्लीमेंट करते चले जाइए, आप आगे और चले जाएंगे तो बहुत सारी दूसरी स्कीमों के लिए आप शामिल हो जाएंगे। अगर वो आपने आइडिया कन्वर्ट कर दिया, और 30% तो कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे दे देते हैं। 30% ऑफ 15 लाख कितना हुआ, कोई बता सकता है? 4,50,000। जरूर दोस्तों, एंटरप्रेन्योर जरूर बनोगे। नेक्स्ट अंबानी हमारे बीच का बैठा हुआ है, ही इज द नेक्स्ट अंबानी। एनीवे,
आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते ना, तो यहाँ पे खड़े हुए आदमी को बहुत बुरा लगता है। ठीक, मैं पहले माफी मांग चुका हूँ, फिर जाते टाइम फिर मांग लूंगा, लेकिन मैं कहने से बाज नहीं आऊंगा। प्लीज देखो, पोस्ट लंच सेशन है तो इसको थोड़ा सा और बदलना पड़ेगा, नहीं ठीक है या नहीं? तो खैर 4.5 लाख रुपए आपको अपने एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आप सक्सेस हो चाहे फेल हो। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती? हम लोग के टाइम में नहीं थी इस टाइप की फैसिलिटीज, नहीं तो शायद मैं इस समय यहाँ ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट ही खड़ा होता, हो सकता है मैं यहाँ पे राजन भाई के जैसा बैठा होता, हो सकता है मैं आशीष जैसा खड़ा होता, ठीक है ना? लेकिन सही माने में इस टाइप की फैसिलिटीज अवेलेबल थी, आज की डेट में है। इस टाइप की फैसिलिटीज का फायदा कौन लोग लेते हैं? जो डफर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन नहीं जानकारी के अभाव में, जिनको जानकारी नहीं होती, पता नहीं होता, इसलिए नहीं ले पाते। अब एक सिस्टम और भी शुरू कर दिया एजुकेशन वालों ने, ये भी आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपको स्टार्टअप अपना ट्राई कर रहे हैं, ठीक, आप 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, सारी चीजें होती हैं। आप ट्राई कीजिए, और अगर आप सक्सेस हो गए तो बहुत अच्छी बात, अपनी डिग्री कभी पूरी कर लीजिए। और खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो गए, आपका आइडिया फेल हो गया, डिस्करेज होने की जरूरत है। आप आइए कॉलेज में, अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए और डिग्री ले लीजिए। प्लेसमेंट के टाइम में आप अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, जो आपका जॉब लेने के लिए आता है, आप अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए कि आपने ये सीखा और ऐसे करके फेल हो गए और ये काम किया था। आपको लेने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको पता है कि आपको पता है वेयर द शू पिंचेस, आपको पता है कि कहां से क्या होता है। वो जानते हैं कि हाँ, इस बंदे के अंदर हिम्मत है रिस्क लेने की, आगे बढ़ने की, कुछ न कुछ चीजें करने की। तो ये सब फैसिलिटीज, ये सब चीजें आ रही है, अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहो तो, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग इस चीज को करते हैं कि जो MSMEs है, इसका प्रमोशन, मेरी लैंग्वेज सबको क्लियर है ना? पीछे वाला थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दोगे क्या बेटा? ऐसा करके जब देखते हो ना तो पता चल जाता है, यहाँ खड़े होकर देखो, पता चल जाता है क्या देखो। मैं ये भी तो नहीं बता सकता कौन सी वाली साइड देख रहे हो, लेकिन पता जरूर चलता है। जब ऐसे होता है ना, ऐसे तो लग जाता है, आई टू आई कॉन्टेक्ट नहीं बन पाता। थोड़ा प्रमोट हो जाओ ना, आगे आ जाओ, वो पीछे वाली सीट वाले आ जाओ तो सारे, इसको छोड़ के बस ये ऐसे वाली जो है ना, वो तो ठीक है, उसका तो टेंशन, बाकी लोग आ जाओ, आ जाओ एक बार सब लोग आओ, आगे आओ प्लीज। बहुत डिस्टर्बेंस होता है यार, मतलब सही मायने में सारा जो एंथू है ना स्पीकर का, वो खत्म हो जाता है। आ जाओ अभी, इन्विटेशन सर, इन्विटेशन छपवाए हैं क्या कुछ? सर कोई इन्विटेशन वगैरह हो तो बताओ, मैं उनको इन्विटेशन दे देता हूँ स्पेशल। हाथ पकड़ के लेके आना पड़ेगा क्या? सर प्लीज थोड़ा सा आप लोग जाके पीछे वालों को आगे भेजिए ना सर, सारी सीटें खाली पड़ी। इतने अच्छे अच्छे चेहरे दिखने में ही नहीं आ रहे, ये सब बेकार बेकार से चेहरे दिख रहे सामने है ना? सही बात है कि नहीं है यार? ऐसा करो, आगे वाले जो है ना, जाओ और एक एक को पकड़ के लेके आओ, अपनी चॉइस के लड़के को या लड़की को, किसी को। नॉट अ बैड आइडिया, क्यों नॉट अ बैड आइडिया? अच्छा खैर देखो, MSME जो डेवलपमेंट, भाई आप लोग भी प्लीज आगे आ जाओ यार, आगे आ जाओ। ये पिछोली रो वाली तो पूरी पूरी आ सकती है सर। गजर साहब आपकी नहीं चलती। अरे भाई ये फेविकॉल का जोड़ है उनका, फेविकॉल का जोड़ है, बहुत मुश्किल है इसको छुड़वाना। नहीं वो कुर्सी से चिपक के, मुझे लगता है सेशन के बाद में भी पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। विवाह, ये देखो ये होता है जोश, बोलो क्या पीछे की सीट पर रहना, एकदम आगे की सीट पे जा तो नहीं रही ना बेटा? हाँ बैठ गए। मुझे लगा कि ऐसा लोग ज्यादा बोलो तो चल ही जाए। अच्छा जोकर मिला आप लोग को? नहीं यार, एक थोड़ा सा यार, 3 लोग क्या पीछे बैठे हुए, आगे आ जाओ ना आप लोग भी, आगे एकदम सीट खाली पड़ी है। आगे आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से। और आगे और आगे और आगे और ये सोफा सर आपके लिए, बल्कि ये सीट भी खाली है, आओ इधर। हाँ नहीं नहीं, इन लोग के लिए ये सीट भी खाली है। अब थोड़ा सा ठीक है, एक रो और अगर आ जाते ना, एक आखिरी वाली रो सोच लो, आगे बहुत बीच में खाली है। आओ आओ आओ, आओ आगे जल्दी।
अब ये सोचेगा बोले कहाँ फंस गए, इससे अच्छा आप भले बीच में बैठ जाते। अच्छा लग रहा है ना? क्यों इन लोग को पनिशमेंट मिलते हुए अच्छा लग रहा है कि नहीं? आओ और आगे और ले लो भाई, ले लो इनको सीट पे ले लो प्लीज प्लीज, और आगे जाओ। हाँ यहाँ है, और किसी को बुलाना है तो बुला लो। वहां कहाँ बीच में इधर चलो बैठ जाओ। अच्छा, ये जो है ना एमएसएमई जो डेवलपमेंट है, ये जनरली स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। देखिए आप लोग को पता है ना कि दो टाइप की गवर्नमेंट होती है, कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके सिवाय एक और गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, चंद पंचायत, नगर निगम वगैरह इस टाइप की चीजों की होती है। लेकिन दो को मेन मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। जो एमएसएमई डेवलपमेंट है, प्राइमरी सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक, मेरी बात क्लियर हो रही है? सबको सुनाई दे रहा है ना? एकदम आराम से रिलैक्स होकर बैठो, थोड़ी देर के लिए मोबाइल को छोड़ दो बस, और रात को 12 बजे से 1 बजे तक करना है बस। अभी के लिए छोड़ दो उसको। अब देखो किसी की मुंडी मुझे ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, अगर अब दिखी तो गड़बड़ होगी। अब ये सोच लो अगर किसी का ऐसे दिखी ना तो गड़बड़ होगी फिर, ठीक है ना? यहां से सब दिखता है, दूर तक का दिखता है। ओए बात में बात करना, ठीक है? अच्छा सुनिए, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ स्कीम्स चलाती है। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग वगैरह जो देनी होती है, सपोर्ट सिस्टम देना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अब कुछ स्टेट है जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली है और कुछ स्टेट है जो इंडस्ट्रियल फ्रेंडली नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल बता सकता हूं आप लोग, जो स्टेट हो जो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो, गुजरात, ठीक। और कोई ऐसी स्टेट, नहीं नाम मत बताओ, जो इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है, बोलो मत, समझ गए ना? तो इसलिए वहां का डेवलपमेंट नहीं है ना। वहां के लोग यहाँ थे ना काम करने के लिए, इसीलिए गुजराती जाता है यहाँ से काम करने के लिए, वहां नहीं जाता, बिजनेस करने के लिए जाता, लेकिन काम करने के लिए नहीं जाता, ठीक। तो इसलिए अब जो है ना, हर स्टेट ने ये रियलाइज किया कि अगर उसको अपनी स्टेट का डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज, अच्छी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, फैसिलिटेट करना पड़ेगा। और इसीलिए अब नैनो को वहां से भगाते नहीं है, टाटा को नहीं भगाते हैं, नैनो अब हमारे यही बनाना पड़ेगा, नहीं तो चली जाएगी कहाँ? गुजरात, ठीक। तो अब उन्होंने भी पॉलिसीज कुछ बनानी शुरू कर दी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। आदित्य सूर्योदय ने पीछे से आगे आने में टाइम लगता है कि नहीं लगता? कितना जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसे करके पीछे से आगे आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अब सबका होने लग गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग की किस टाइप की फैसिलिटीज है, थोड़ा सा देख लेंगे क्विकली, ओके। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, आपको बता दूंगा, उसमें आपको मिल भी जाएगी, देखना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट दीजिए प्लीज। देखिए हम लोग समझते हैं, एंटरप्रेन्योर समझते हैं ना आप लोग, जो खुद का बिजनेस करने वाला, थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहा हो, एक ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं हो, जिसका उद्देश्य खाली पैसा कमाना नहीं हो बल्कि नाम भी कमाना हो साथ में, ठीक है। ऐसे आदमी को हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जनरल रफ लैंग्वेज में बिल्कुल बता रहा हूँ। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। तो हम लोग इसको दो कैटेगरी में बांट लेते हैं। एक है जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब जो काम शुरू करने की सोच रहे हैं, जैसे आप जैसे लोग, और एक हम ऐसी कैटेगरी बांट लेते हैं जिन्होंने काम पहले से शुरू कर रखा है, वो हो गए एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, ओके। तो स्कीमें जो है इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो नया काम शुरू करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए जो इन्होंने काम ऑलरेडी शुरू कर दिया, बराबर। अब देखो जो है उन लोगों के लिए क्या, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, मतलब उन लोग को बताया जाता है कि क्या क्या चीजें हैं, किस टाइप का होता है, कैसे काम करना चाहिए, और उनको मोटिवेट किया जाता है। यू कैन गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर ऑप्शन, ओनली गोइंग फॉर द जॉब और एम्प्लॉयमेंट इज नॉट द ओनली ऑप्शन। इस टाइप की चीजें होती है। जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, एक तरह से मोटिवेशन का प्रोग्राम हो रहा है, या ट्रेनिंग टाइप की हो रही है, ठीक है। इसके सिवाय लॉन्गर टाइम की भी ट्रेनिंग होती है, जिसमें कि 1.5 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने के अलग अलग ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो ये एक प्रोग्राम होता है। दूसरा आता है सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। क्या होता है, जब आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो एक बिजनेस प्लान बनाना होता है। एक बिजनेस प्लान जो बनाना होता है उसी को प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी बोलते हैं। तो एक गाइडेंस के लिए, जनरल गाइडलाइन के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स बनी हुई हैं, जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और ऑफिसों में कई गवर्नमेंट के ऑफिस जो प्रमोशन करने वाले हैं उनके यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। अदरवाइज कुछ पैसे दे के भी लोग बनवाते हैं इस टाइप की चीजें। तो ये हो गया सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स, उससे एक जनरल वे में आइडिया लग जाता है। एक एग्जांपल दूं आपको, इस प्रोजेक्ट प्रोफाइल का कितनी इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने निरमा वॉशिंग पाउडर का नाम सुना, शब्द सुना होगा, ठीक। इनको जो शुरू करने वाले थे ना, वो हमारे ऑफिस में आए थे अहमदाबाद में। हमारा ऑफिस है एमएसएमई का अहमदाबाद में, वहां पे आए थे, और उन्होंने एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल पढ़ी थी कि वॉशिंग पाउडर कैसे बनाया जा सकता है। उन दिनों में जो वॉशिंग पाउडर चलता था, ज्यादातर सर्फ चलता था, ठीक?
सर्फ का चलता था, तो उन्होंने उसको देखा और उसके हिसाब से थोड़ा सा केमिकल का उनको भी जानकारी थी, तो उसके हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा थोड़ा उन्होंने बनाया और उसके बाद में उसको साइकिल पे जा जाके बेचते थे, अड़ोस पड़ोस में दूसरी जगहों पे ऐसे जाके बेचते थे। ठीक, धीरे धीरे करके और हुआ, फिर लोगों की शिकायत आई, फीडबैक आई कि हाथ जो है ना जलता है इससे, लेकिन साफ ठीक होता है, ऐसा ऐसा करके, तो उन्होंने थोड़ा सा फॉर्मुलेशन में और चेंज किया। तो सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल जो थे ना, उसने उसकी बहुत मदद की, उससे उनको केमिकल के बारे में पता चल गया, कौन सा केमिकल डालते हैं, कितने में डालते हैं, कौन सी मशीनरी चाहिए, ऐसा करके सारी चीजों का आइडिया पड़ गया और बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाते चले गए। उनकी एक खासियत थी कि उनका जो पाउडर होता था, सर्फ पाउडर, जो मतलब वॉशिंग पाउडर होता था, वो स्टेपल करके थैलियों में बिकता था। समझ गए कैसे करके? स्टेपल करके। और जब उनका माल बहुत बिकने लग गया तो भी वो स्टेपल करके ही बेचते थे, तब भी उसको स्टेपल करके बेचते थे। इवन इस हद तक कि उन्होंने स्टेपलर पिन्स बनाने की एक फैक्ट्री डाली। ठीक, सुन के बड़ी हंसी आती है, लेकिन असली राज क्या बताऊं? अगर वो थैली स्टेपल की हुई है तो एक्साइज ड्यूटी कम लगती है। ठीक, अगर वो थैली स्टेपल की हुई है, स्टेपलर पिन लगा रखे है, तो एक्साइज ड्यूटी कम लगती है, बल्कि नहीं लगती। और अगर वो सील की हुई है तो एक्साइज ड्यूटी उस पर 28% की थी। तो 28% प्रॉफिट का साफ साफ फायदा हुआ या नहीं हुआ? ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप, ये होती है सोच। बात समझ में आई? ठीक है ना? ऐसे करके देखेंगे आप तो बहुत सारी चीजें उसमें इसी टाइप से आती। तो सैंपल प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्लियर हो गया। अब एक चीज आती है, पैसा कहां से आएगा? ठीक, उसकी बहुत सारी स्कीमें हैं। एक स्कीम है मुद्रा। मुद्रा लोन का किसी ने भी नाम सुना है? मुद्रा लोन, इसमें 10 लाख तक का लोन मिलता है विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, जब भी लोन मिलता है ना, तो 2-3 चीजें होती है, उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। नंबर 1 कोलेटरल या गारंटी, समझ में आई? पता है सबको, आगे बढ़े। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट, कितने का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तीसरा होता है मार्जिन मनी, कि मार्जिन मनी कितनी लगेगी। ये भी समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ हाँ बोलो, ये तो फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड, अब मजा आ रहा है। इसी टाइप से आप लोग, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, मैंने जस्ट टेस्ट करने के लिए बोला था। मार्जिन मनी क्या है मुझे भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन सब लोग हाँ हाँ बोल रहे थे। तो मुझे बताओ कौन मार्जिन मनी क्या है, पता है किसी को? तो जोर से बोलो। नहीं, नहीं पता किसी को भी। जो बिजनेस करता है वो अपनी तरफ से जो पैसा लगाता है उसको मार्जिन मनी बोलते हैं। ओनर्स कंट्रीब्यूशन इज नोन एज मार्जिन मनी, ठीक है। अब अगर मान लो मुझे 1 लाख रुपए का या 100 रुपए का लोन लेना है और बैंक ये कंडीशन रखता है कि भाई 20 रुपए आपको अपने लगाने होंगे, तब मैं 80 रुपए और लोन दे सकूंगा, क्लियर? तो इसमें मार्जिन मनी कितनी हो गई? 20 रुपए की। वो 100% कभी भी नहीं देगा, क्योंकि 100% देगा ना तो फिर ये हो जाता है कि कुछ भी नहीं होता। तो ये मार्जिन मनी जो है 5% से लेकर 50% तक वेरी करती है। जनरली इसमें 20%, 25%, 30% की मार्जिन मनी होती है। क्लियर हो गई बात? तो एक मार्जिन मनी हो गया। एक और टर्मिनोलॉजी आती है, वो आता है सब्सिडी। वो तो पता होगा, सब्सिडी जो गवर्नमेंट जो कंसेशन देती है, डिस्काउंट देती है लोन में, जो उसको पैसे वापस कर दिए जाते हैं, उसको सब्सिडी बोलते हैं, ठीक है। अब मुद्रा की जब बात करते हैं हम लोग, तो इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन है, ठीक, और इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। और इसमें ओनर्स कंट्रीब्यूशन जो है वो 5% से 10% तक वेरी करता है, 10%, 20% तक, ज्यादा से ज्यादा 5%, 10%, डिपेंडिंग ऑन की जो लेने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। सिबिल स्कोर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्रेडिबिलिटी उसकी कितनी क्या है, ये सब चीजों को देखा जाता है, उसके बेसिस पे उसको लोन दिया जाता है, ठीक। और इसमें 3 कैटेगरी के लोन होते हैं मुद्रा में। एक होता है शिशु मुद्रा, जिसमें 50,000 तक का लोन, ठीक। दूसरा होता है किशोर मुद्रा लोन, जिसमें 5 लाख तक का लोन। तीसरा होता है तरुण मुद्रा लोन, जिसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे पेपर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। 50,000 तक का जो लोन है वो सिर्फ केवाईसी, जैसे हम बैंक अकाउंट खोलते हैं, इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, आधार, पैन वगैरह, इस टाइप का एड्रेस प्रूफ, रेजिडेंशियल प्रूफ, फोटोग्राफ, इस टाइप छोटी छोटी चीजों की जरूरत पड़ती है और वो मिल जाता है। कई बार इतना छोटा लोन बहुत बड़ी मदद कर देता है बहुत से लोगों की, क्योंकि जो छोटे छोटे व्यापार करने वाले होते हैं ना, जो स्टार्टिंग करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी मदद है। तो ये एक नया सिस्टम शुरू किया गया था अपने ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। मुद्रा लोन समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट है PMEGP, इट इज प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें 25 लाख तक का, 25 लाख तक का लोन मिलता है।
10 लाख का अगर वो सर्विस इंडस्ट्री है और 25 लाख का अगर वो कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। क्लियर हो गई बात? सुनते जाइएगा ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग कवर करेंगे, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो डेफिनेटली पूछना। तो 10 लाख का अगर सर्विस इंडस्ट्री है और 25 लाख तक का अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इसमें सब्सिडी है। मुद्रा में सब्सिडी नहीं थी, इस वाले में सब्सिडी है, जो 15% से लेकर 35%, 35% तक की सब्सिडी है। अगर मान लीजिए किसी ने 25 लाख का लोन लिया, ठीक, या 10 लाख का लोन ले लेते हैं, चलिए 10 लाख का लोन लिया, तो उसको 35% की सब्सिडी मिली, मतलब कितना मिला उसको? 3.5 लाख रुपए और कम होगा, मतलब उसको सिर्फ 6.5 लाख रुपीज जो है ना, ये और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो वापस करना है। तो है ना फायदे की चीज, ये बहुत बड़े फायदे की चीज है, और ये ऑल इंडिया ये स्कीम अप्लीकेबल है। अगर आप लोग अपना काम शुरू करोगे तो ये वाली स्कीम सबसे अच्छी स्कीम। समझ में आ गई बात? अगर आप लोग अपना काम करोगे, क्योंकि 25 लाख का लोन बहुत होता है, 10 लाख का लोन बहुत होता है, इतने से काम शुरू किया जा सकता है। 99% काम जो है ना इससे से शुरू हो सकते हैं। गुजरात के बारे में नहीं बोल सकता भाई, क्योंकि गुजरात में मोटा भाव है, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग आ गए यहाँ पे, इसलिए नहीं कर सकता। लेकिन भाई यूपी बिहार वगैरह में तो 25 लाख बहुत है, ठीक। बोला तो नहीं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पर बोला क्या 25 लाख कुछ होता है क्या? बोला वो तो पल्ला झाड़ देंगे तो 25 लाख गिर जाएगा, ठीक है ना। खैर चलो, एनीवे, तो ये स्कीम जो है ना अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है। इसके सिवाय क्या हुआ है, on the same pattern, this is central government scheme, in the same pattern, in the multi states, they have come out with the chief minister युवा रोजगार योजना। समझ गया? आई डोंट नो अबाउट गुजरात, मैंने पढ़ नहीं पाया, अगर आप गूगल सर्च वगैरह करेंगे तो देख लेना, हो सकता है यहाँ पे भी हो, जैसे यूपी में है ये चीज, एमपी में है, दूसरी कई जगहों पे है, हो सकता है, डेफिनेटली आई एम श्योर कि गुजरात में भी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। जैसे यूपी की मैं बता देता हूँ, यूपी का जो युवा स्वरोजगार योजना, उन्होंने कंडीशन लगाई हुई है कि कोई भी आदमी जो यूपी का रहने वाला हो, ओके, जो पिछले 3 साल से यूपी में रह रहा हो, जिसकी एज 18 to 40 ईयर्स हो, उसको 25 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी का, और 25% सब्सिडी मिल जाएगी। सिंपल उन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है। किन्होंने? वो नहीं, यूपी में बाबा है ना, यूपी में बाबा है ना, उन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, बोला 25 लाख का लोन, 25% सब्सिडी, बोला कोई झमेला नहीं, फालतू कुछ चक्कर नहीं। अब ये पीएमईजीपी जो है, इसमें ये है 15%, 25% और 35%। अगर मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट है, जनरल कैटेगरी का, और मेल कैंडिडेट है और सिटी में लगाता है, अर्बन एरिया में, उसको मिलेगी सब्सिडी 15%, 15% की। अगर वो रूरल एरिया में लगाता है तो उसको सब्सिडी मिलेगी 25% की। क्लियर? अगर मान लीजिए उसी यूनिट को कोई दूसरा है जो वीमेन है, ठीक, SC ST, वीमेन, ओबीसी, डिफेंस, फिजिकली हैंडीकैप्ड, माइनॉरिटी, इस कैटेगरी का है, तो अगर वो सिटी में लगाता है तो 25% और रूरल एरिया में लगाता है तो 35% सब्सिडी मिलेगी। क्लियर? क्लियर हो गई बात? रिपीट करने की जरूरत है या फिर से हो गया? फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, इसके बारे में सबको जानकारी चाहिए। इसमें 15% अगर कोई जनरल कैटेगरी का सिटी एरिया में लगाता है, अर्बन एरिया में, तो 15% की सब्सिडी। अगर वीमेन है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, SC ST है, माइनॉरिटी है, डिफेंस है, तो उसको 25% की सब्सिडी अगर अर्बन एरिया में है। और अगर वो रूरल एरिया में चले जाते हैं, जनरल कैटेगरी को 25%, और अगर वो SC ST, वीमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, माइनॉरिटी, डिफेंस का कैटेगरी का हो, तो उसको 35% की सब्सिडी मिलती है। ठीक? आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। इसमें एक कंडीशन है, अगर 25% का लोन लेना है तो उसके लिए पढ़े लिखे होना जरूरी है। ठीक, मतलब उसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी है। मतलब 10 लाख तक वाले लोन के लिए एजुकेटेड होना भी जरूरी नहीं है। ठीक, लेकिन अगर 25 लाख का लोन लेना है तो एजुकेटेड होना जरूरी है, कंडीशन उसमें लिखी हुई है। और एजुकेटेड मतलब 8th पास। ठीक, एजुकेटेड मतलब 8th पास। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैंड अप। इसमें क्या है, हर बैंक को एक इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, हर ब्रांच को एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको 1 करोड़ तक का लोन, 1 करोड़ कोलेटरल फ्री, एक SC ST को और एक वीमेन को देना है, एक वीमेन एंटरप्रेन्योर को और एक SC ST एंटरप्रेन्योर को देना है। दोस्त मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ पैसे की लेन देन की बात हो रही है ना,
पहले तो थोड़ा दूसरे तरीके से समझा रहे थे, इसलिए मैंने कहा यहाँ से मैं शुरू कर देता हूँ, ठीक है? आई होप सर यू विल परमिट मी, ठीक है ना? क्योंकि पैसा सबसे पहले समझ में आता है, नहीं नहीं खैर ये चीजों की सही मायने जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो इसके बिना अधूरी है जानकारी, इसलिए मैंने कहा कि इसको कवर कर देते हैं, ठीक है? तो 1 करोड़ तक का लोन बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी का देना है। नेक्स्ट है CGT MSE, ठीक, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसमें देखो एक चीज है, CGT MSME नहीं है, मैं भूल गया, सॉरी, या सही है? बोलो सही है, सही लिखा होगा या गलत हो गया होगा मेरे से? सही, आप लोग को भरोसा है ना? अरे मैं गलती कर सकता हूं ना या नहीं? नहीं, ये वाली स्कीम सिर्फ माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए है, इसलिए मीडियम वाला M नहीं है, सेकंड M नहीं है। ये वाली स्कीम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फंड रख दिया सिडबी के पास में, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे RBI इस टाइप का है, और ये कह दिया कि 2 करोड़ तक का लोन, 2 करोड़ तक लोन अगर कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर लेता है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर लेता है, तो उससे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं लेने का, वो मैं देगा, गवर्नमेंट बोलते हैं कि मैं दूं, ठीक? उसमें कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी ऐसा है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, हर एक किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है तो ये डेफिनेटली मिलता है, बहुत से लोगों को मिला हुआ है, ठीक? क्लियर? CGT MSE क्लियर हो गई सर? इसके बाद में इंक्यूबेटर्स का मैंने बता दिया, वो 15 लाख का जो है वो इंसेंटिव मिलता है, जो ग्रांट मिलती है, और इसके सिवाय सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स होती है, कोई अलग स्कीम है, जैसे कोई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है, उन्होंने अपनी स्कीम निकाली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने अपनी स्कीम निकाली हुई है, ऐसे करके अलग अलग निकाली हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उसने भी कोई स्कीम निकाली हुई है, पता है आपको? एनीबडी कोई बता सकता है कोई स्कीम है? चलो कभी गूगल सर्च करना आज रात को, एग्री क्लिनिक के नाम से। आप लोगों में से मेरे ख्याल से सर एग्री बिजनेस वाले भी तो हैं इसमें, यार एग्री बिजनेस वाले जरा हाथ तो खड़ा करो, एग्री बिजनेस वाले, बस, अरे एग्री बिजनेस के बगल वाले थोड़ा हाथ पकड़ के उसका खड़ा करो। अच्छा, चलो खैर, एग्री बिजनेस वाले आप लोग को बताता हूँ खास तौर से, एग्री क्लिनिक नाम की स्कीम है आप लोगों के लिए, आप उसको गूगल सर्च करके देख लेना, 25 लाख तक का उसमें लोन देते हैं, जिसमें आप कोई भी फार्म इनपुट्स वगैरह इस टाइप की चीजों को दे सकते हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट वगैरह भी, इवन ट्रेडिंग वगैरह भी कर सकते हैं, सारी चीजें उसमें अलाउड है, ठीक? और ये अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है और बहुत से लोगों ने इसका फायदा उठाया है। ये जनरल लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, एग्रीकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट में, तो आपको प्रेफरेंस है, इसका जरूर फायदा उठाना अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे सीड वगैरह बेच रहे हैं, फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, कस्टम हायरिंग वगैरह इस टाइप की सारी चेक कर रहे हैं, तो इन सब में भी उसका बहुत फायदा हो सकता है। अगर ये बात आशीष जी को पता चले, जिनका बात हो रही थी, वो अगर अपने वेंडर्स को जिनको की ओर लेके आना चाहते हैं, उनको इस स्कीम के साथ में जोड़ दे, तो सही माने स्काई इज द लिमिट, क्योंकि उनका कस्टम हायरिंग का जो काम है सारा का सारा इससे कवर हो सकता है। नेक्स्ट दीजिएगा सर। तो ये था भैया उनके लिए जो होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट इस पे आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स है उन लोगों के लिए क्या स्कीम्स है। उसमें से फाइनेंस से रिलेटेड उनको कई चीजों की जरूरत पड़ती है। फाइनेंस की जो बात है, CGT MSE क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये उन लोगों को भी दी जा सकती है। ये वाली हो गई। एक है ECLGS, सर कभी नाम सुना आपने ECLGS का? नहीं। ECLGS जो है अभी कोविड में निकाला गया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अगर किसी MSME वालों ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, उस लोन की रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, 2 महीने के लिए भी डिफॉल्टर हो गए, 3 महीने के लिए डिफॉल्टर हो गए, तो उनको 20% एक्स्ट्रा अमाउंट लोन का दे दिया जाएगा। कितना? 20% एक्स्ट्रा। मान लो मैंने 1 करोड़ का लोन ले रखा है बैंक से और मैं उसको नहीं कर पा रहा, तो मेरे से कोई एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी, 1 करोड़ का लोन लिया, उसके लिए कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह ली होगी बैंक ने, अभी कोई नहीं है, तो मेरे से 1 करोड़ का एक्स्ट्रा कितना हुआ? 20 लाख। एडिशनल 20 लाख का लोन अगर मुझे चाहिए तो मैं जाके ले लूंगा, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स कर दिया कि 8% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं। बल्कि कई बैंकों ने 6% 6% पर महीनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया। सर एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन बता देता, आपने बैंकर से नेगोशिएट करके अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवा सकते हो आप। ठीक है ना, मेरी बात क्लियर हो गई सबको? तो ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है। ये पहले कोविड के टाइम में खाली चलाई गई थी, लेकिन अभी चूंकि ये बहुत अच्छी चली तो इसलिए आगे और भी चल रही है। इससे इतना कोई खास फायदे वाली बात नहीं, सिर्फ ये है कि एडिशनल मनी बिजनेसमैन के हाथ में आ जाती है, एंटरप्रेन्योर के हाथ में एडिशनल मनी आ जाती है, जिसको कि वो वर्किंग कैपिटल के तौर पे
यूज कर सकता है। कई बार पैसों की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है, तो ये उस पर बहुत अच्छा था। नेक्स्ट जो है वो है पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स। ठीक, क्लियर? क्या है पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स। देखो मैं एक चीज पूछता हूं, अपने देश के नेताओं में जो लीडरशिप है, सबसे बड़ा मार्केटियर कौन है? हैं? सबसे बड़ा मार्केटियर जिसके अंदर मार्केटिंग स्किल्स हो, कौन है अपनी कंट्री में? ठीक है ना? है या नहीं है? जिन्होंने पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इंडिया का नाम जो है ना रोशन कर दिया हो, ठीक, कौन हो सकता है बताओ? ठीक है, उन्होंने ये स्कीम निकाली, नाम से पढ़ के समझ में आ गया होगा। लोन इन हाउ मच टाइम? वो जैसे जूता होता है ना 1999 रुपए का, 2499 रुपए का, ऐसे उन्होंने कहा 1 घंटे से कम में लोन देंगे, 59 मिनट्स के अंदर लोन देंगे। तो इसलिए इस स्कीम का नाम उन्होंने रखा है पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स, और ये सही मायने में हो जाता है। उन्होंने एक स्कीम चलाई थी पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स। आप इस साइट पे जाइए, अपनी सारी डिटेल डालिए। अगर आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर है, 3 साल से आपका बिजनेस चल रहा है, आपको और फंड्स की जरूरत है, आप इस साइट पे चले जाइए, अपनी सारी डिटेल डालिए और आप लिखिए कि आपको 1 करोड़ रुपए की और जरूरत है। आप ये सब इंफॉर्मेशन जो है ना दूसरे बिजनेसमैनों को भी बताइएगा, दिस व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू। तो अगर आपने डाला कि 1 करोड़ रुपए की और जरूरत है, वो 10-15 मिनट के अंदर, 5-10 मिनट के अंदर प्रोसेस कर लेता है इंटरनली, जो कि बैक एंड पे सर्वर्स जो कनेक्टेड हैं, और सारे बैंक जितने पब्लिक सेक्टर बैंक से सबके सर्वर से कनेक्टेड है, और वो सारी कंडीशंस लगा के बता देता है। एसबीआई आपको 40 लाख रुपए देगा 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, पीएनबी आपको 42 लाख रुपए देगा। हो सकता है कि दूसरा कोई बैंक जो है वो आपको 60 लाख का वो देगा, ऐसे करके आपके पास सारी डिटेल आती है। आपकी चॉइस है, आप उस पर जाके क्लिक कर दीजिए, जिसको आपको चॉइस चाहिए उसको आप क्लिक कर दिए। वो बैंक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने कहे वो सही है, उसको वेरीफाई करेगा तो आपको उसमें का लोन दे देगा। क्लियर हो गई बात? इसकी अच्छी है नहीं है? बोलो। और फिर से मैं कहूंगा, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, 99% लोगों को ये बात नहीं मालूम, जो बिजनेसमैन है जिनको किसकी सख्त जरूरत है, उन लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि कहते बोले इसका क्या है, बोले ऐसे ही बोलते रहते, बोले झूठ होगा, कुछ नहीं, कुछ तो कुछ चकवा होगा इसमें, जुमलेबाजी होगी वगैरह वगैरह, बट दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, मैंने खुद देखा है बहुत से लोगों को, बैंकरों के साथ में मीटिंग हुआ करती थी, बैंकर आया करते थे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे, और वहां पे सब एंटरप्रेन्योर बैठे होते थे, उनको कहते थे कि आप अप्लाई करो, वो नहीं मिलता। फिर जब हर हफ्ते मीटिंग होती थी, 1.5-2 महीने बाद जब मीटिंग होनी शुरू हुई, तो उसमें से 10 लोग खड़े होकर कहते थे, बोले कैसे नहीं मिलता, मुझे मिला है उसी में से। ठीक है ना? तो इसलिए ये बहुत अच्छी स्कीम है। और फिर से सेक्टरल जो है अलग अलग उसकी होती है, जैसे एग्रीकल्चर है, किसी का फूड का है, फूड के ऊपर में बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की। अगर आप लोग उसको देखना चाहेंगे तो उसको देखिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज का अगर मान लीजिए कर रहे हैं, इवन जनरल स्टोरेज का कर रहे हैं, इस टाइप की बहुत सारी स्कीमें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए। खासतौर से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग आप लोग लिख लो, लिखना चाहो तो MOFP, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इसकी वेबसाइट देखिए और इस पे देखिए कि किस टाइप की स्कीमें हैं, तो बहुत अच्छी स्कीमें मिलेंगी जो एग्रीकल्चर वालों के लिए बहुत सूट करती है। इसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। जनरली क्या होता है कि जो MSME वाले होते हैं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? श्योर, कंटिन्यू कर सकते हैं ना, क्योंकि लंच के बाद का सेशन है, कहीं ऐसा ना हो कि बोरियत हो जाए, इसलिए हम पूछ रहे हैं। तो बस ये छोटी सी चीज रह गई, थोड़ी सी चीज रह गई बस, तो लेकिन ये जरूरी है इसलिए मैंने कहा कि कवर कर देता हूं। तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, जनरली क्या होता है कि जो MSME वाले शुरू करते हैं काम को, तो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, लोअर ग्रेड की टेक्नोलॉजी पे लेते हैं, लेकिन जब उनका काम चलने लगता है, जब वो ग्रो करते हैं, तो हाई टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं। तो जब वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हैं, उसके लिए अगर वो बैंक से फाइनेंस कराते हैं मशीनरी को, टेक्नोलॉजी को, तो 15% का उसको डिस्काउंट दिया जाता है। ये CLCSS स्कीम है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इसके सिवाय एक स्कीम है ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डिजाइन क्लिनिक की। असल में जनरली क्या होता है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो है ना, ये पुअर क्वालिटी वगैरह के माने जाते हैं, कि एक्सपेंसिव होते हैं, पुअर क्वालिटी होती है, फंक्शनली अच्छे नहीं होते, कई बार कई जगहों पे इस टाइप की कंडीशंस आती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये किया हुआ है कि अगर आप डिजाइन को इंप्रूव कराना चाहे, कोई ऐसी चीज है, तो आप बताइए कि आपके क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, क्या चीजों में आप डेवलप कराना चाहते हैं, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट या प्रोसेस, उसको आप क्या डेवलप कराना चाहते हैं, वो डेवलप कराने के अगर आपको है, आप प्रपोजल दीजिए। एक एक्सपर्ट्स है जो डिजाइन एक्सपर्ट्स हैं, और 15 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिलती है।
जिसका 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, 25% सिर्फ आपको देना होता है। अगर वो सेम टाइप की इंडस्ट्री, 3 इंडस्ट्री हो तो तीनों को मिला के 25% देना होगा, 75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ सब स्टूडेंट्स के लिए, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें? फाइनल ईयर के सब। फाइनल ईयर में हम लोगों को एक प्रोजेक्ट करना होता है या नहीं? जनरली लास्ट सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट करना होता है, और उस प्रोजेक्ट को कैसे हम लोग करते हैं? कहीं से भी कोई भी आइडिया देखा, इधर से देखा उधर से देखा, प्रोफेसर से पूछा, जनरली कहीं से भी कुछ भी करते हुए उसको करते हैं और थीसिस बना के उसके सबमिट कर देते हैं। ठीक, कुछ प्रोडक्ट भी बनाने की कोशिश करते हैं। यही होता है या नहीं होता सर? ओपन कन्फेशन है, सब अपने तो हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, ऐसे ही होता है जनरली। तो इसके लिए AICTE ने मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ में मिलकर ये अरेंजमेंट किया है। अगर फाइनल ईयर, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स किसी MSME के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई डिजाइन वाला प्रोजेक्ट लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट को फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मान लिया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूं, उस प्रोजेक्ट को फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट मान लिया जाएगा और उसके लिए 2 लाख रुपए मिलेगा, जिसमें से 50,000 रुपए इंडस्ट्री वाला देगा और 1.5 लाख रुपए हम लोग देंगे। समझ में आई मेरी बात? ये है डिजाइन क्लिनिक स्कीम। अब मजा आया? ठीक नहीं, ये सही माने समझ। हम लोग, चूंकि आप लोग के बीच में कोई है नहीं, तो आप लोग अपने जूनियर्स को बता दीजिएगा। आप लोग के तो प्रोजेक्ट पूरे हो गए होंगे। फिक्स है, ठीक। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा था VC साहब को भी और दूसरे प्रोफेसर्स को भी कि जनरली सर इसमें सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर आइए। जो फाइनल ईयर के ना, उन लोग के सामने बहुत सारे दूसरे इश्यूज होते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब बेटा फाइनल ईयर में जाओगे ना, तो आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चूज करोगे। ठीक, क्या होता है जनरली हाइपोथेटिकल लेकर चलते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ले लेते हैं, जो पहले से कुछ डेवलप किया उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस वगैरह करके किसी तरीके से करके थीसिस सबमिट कर देते हैं। क्योंकि रियल लाइफ जो है, रियल इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट मिलता नहीं है, तो आपका टैलेंट भी वेस्ट हो गया और इंडस्ट्री का भी जरूरत है वो खत्म हो गई। अब जैसे एक इंडस्ट्री वाले हमारे पास में बैठे हुए राजन भाई, ठीक है ना, ये रोटावेटर वगैरह इस टाइप की चीजें बना रहे हैं। अब अगर मान लो इनको कुछ और डेवलपमेंट करना है, सर आप लोग डेवलपमेंट करते होंगे, इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं, ये इन हाउस डेवलपमेंट करते हैं, अपने मैकेनिक वगैरह को लेके खुद आइडिया लगा के यहाँ से देखा वहां से देखा, इस टाइप की चीजें करके देखते हैं। अगर इनको ये हो कि भाई मुझे रोटावेटर में या किसी दूसरे एक इम्प्लीमेंटेशन में मुझे ये चीज और ऐड करनी है, उसको आप प्रोजेक्ट के तौर पे ले लो। ठीक, समझ गए आप? या कोई नया इम्प्लीमेंट इनको ऐड करना है या आपने सजेस्ट किया, उसके बेसिस पे इन्होंने ले लिया। अब क्या होगा, आपके कॉलेज का रिसोर्स, आपकी मेहनत, आपके प्रोफेसरों की जो आपका गाइड होगा उसकी मेहनत, और इनकी फैक्ट्री का रिसोर्स, इनके यहाँ जो सुपरवाइजर होगा, जो मैकेनिक होगा, वो सब, और खुद इनका दिमाग, इतने लोग मिलकर उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकालेंगे। समझ में आ गई बात? और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट मान लिया जाएगा। क्लियर? इसके लिए 2 लाख रुपए तक आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसका 25% ये देंगे, जो नहीं देंगे, लेकिन मान लो, ठीक, और 75% हम लोग देंगे। समझ आ गई बात? ये इस पर थोड़ा सा एक लोचा है, वो आपका प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे ना, पहले बना के अप्रूवल लेना होगा हमारी मिनिस्ट्री से। उसके लिए कुछ टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, टेक्निकल जो इंस्टीट्यूट्स है, उनकी कमेटी है, वो उसको मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ इस प्रोजेक्ट में दम है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर रखा है, उसको कर दिया और सांठगांठ हो गई, बस सर आप 50,000 मत देना, 1.5 लाख गवर्नमेंट तो देगी ना। ठीक, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये है, लेकिन ये अपने आप में बहुत अच्छी स्कीम है, इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका फायदा उठाया, लेकिन लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा आप लोग को बता दूं। क्लियर? अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है इससे? इसके बाद में आता है ये डिलेड पेमेंट, ये मैं बता चुका हूं आप लोग। प्रोक्योरमेंट है सर, ये चीज आपको बताना था मुझे कि प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग के लिए, एक मार्केटिंग जब करना होता है ना, सबसे बड़ी समस्या होती है आप बना किसी भी चीज को लीजिए, उसको जब बेचने जाते हैं ना, वो सबसे मुश्किल होता है। टफेस्ट जॉब जो है वो है कि आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट, मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, अगर उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक, तो 1.5 लाख रुपए तक का रीइंबर्समेंट आपको दे दिया जाएगा, जो कि स्टॉल के चार्जेस होंगे, सामान लाने ले जाने के, और एक आदमी के आने जाने का खर्चा। ठीक, 1.5 लाख
अगर बड़ी सिटी में है तो 1.5 लाख, छोटी सिटी में तो 1 लाख, उससे छोटी में है तो 80,000, ऐसे करके अमाउंट होता है। क्लियर? अगर इंटरनेशनल जाते हैं फॉरेन कंट्री में तो ये अमाउंट और ज्यादा बढ़ जाता है, 2.5 लाख हो जाता है, जिसमें हवाई जहाज का खर्चा आ जाता है, एक आदमी का टू एंड फ्रो का, और साथ में वहां पे स्टॉल वगैरह लेने के चार्जेस हो जाते हैं। ठीक, इसके सिवाय क्या होता है, गवर्नमेंट परचेसिंग करती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट को परचेस करने के लिए, जैसे माइक हो गया, दूसरी चीज हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो गवर्नमेंट परचेस करती है। तो जब गवर्नमेंट कोई चीज परचेस करती है तो उसके लिए कंडीशन है जो कि इसमें लिखा हुआ है, पीपीपी पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2012 एक उसमें रूल बनाया गया था कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट का जो साल भर में जितना माल खरीदता है उसका 25% माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस लेना पड़ेगा, एमएसएमई नहीं, एमएससी से लेना पड़ेगा, और उसमें से भी 3% वीमेन एंटरप्राइज से, 4% एससी एसटी से, अगर वो नहीं है उसका टेक्निकल होगा तो जनरल से ले लेंगे, लेकिन 25% तक का जो माल है वो उनको माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस लेना पड़ेगा। इसकी पूरी डिटेल, स्कीम की पूरी डिटेल एज इट इज वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी देखना चाहे तो वहां से पूरी देख सकता है, अदरवाइज किसी को और जानकारी चाहिए तो कभी भी हम लोगों के पास से किसी से भी कॉन्टेक्ट करके भी ले सकता है। इसके बाद में आता है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट के लिए अभी मैंडेटरी कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी और कई स्टेट गवर्नमेंट में भी हो गया कि उनको जो सामान खरीदना है वो जेम नाम का एक पोर्टल बनाया हुआ है, जैसे अमेजॉन है, दूसरे फ्लिपकार्ट है, ऐसे करके जेम का एक पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वहां से लेना पड़ेगा। अगर उसमें भी एमएसएमई वाले रजिस्टर्ड करते हैं तो 25% वाली कंडीशन उसमें भी लगती है और उनके पास ऑटोमेटिकली ऑर्डर आने लग जाते हैं, क्योंकि अब ये हो गया कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, जैसे आईओसीएल हो गया, बीएचईएल हो गया, एटीपीसी हो गया, ये सारी की सारी कंपनियों को अपनी जो साल में हजारों करोड़ का माल खरीदती है तो उनको 20% जो है यहाँ से खरीदना पड़ता है। तो अब वो खोज रहे हैं कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस वाले कौन कौन है जो दे सकते हैं। तो जैसे ही उस पर हम रजिस्टर करते हैं तो सिस्टम उससे बता के उसको इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये आईओसीएल ये चीज खरीदने वाली है, तो ये चीज को ले लिया जाए। ठीक, तो ये जेम पोर्टल हो गया। इसके बाद में समाधान जो है ये डिलेड पेमेंट मैंने बता दिया शायद आप लोगों को, इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग एक ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, खासतौर से इंजीनियरिंग वालों को पता होना चाहिए। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक टेक्निक है जिससे वेस्टेज का मिनिमाइजेशन होता है। वो वेस्टेज चाहे तो मशीनरी का हो, चाहे टाइम का हो, चाहे फाइनेंस का हो, चाहे रॉ मटेरियल का हो, किसी भी चीज का हो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसपे बहुत सारे वो आते हैं। टोयोटा ने सबसे पहले शुरू किया था और ये कहा जाता है कि आज तक टोयोटा ये कहती है कि हम तक इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अप्लाई नहीं कर पाए, इतना जबरदस्त सिस्टम है। लेकिन ये एमएसएमईज के लिए है ये, और इससे जो है उसका जो खर्च होता है 36 लाख तक का खर्च होता है, जिसका 20% 10 यूनिट मिल के देती है और 80% जो है उसका वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। इस पे जनरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सभी लोगों से बात करते हुए, क्योंकि हम लोग जाते हैं उन यूनिटों का ऑडिट करते हैं जिनको होता है, वो उनका कहना है सर 36 महीने की स्कीम है, पहले 36 की थी 18 हो गई, फिर बोले सर हमारा पहले दूसरे महीने में ही हमारे पूरे पैसे वसूल हो गए जो हमने दिया, क्योंकि इतनी बचत हो जाती है, क्योंकि उसके बहुत हाई लेवल के कंसल्टेंट्स होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और सारी चीजें जाके उनका स्क्रैप कहाँ पे है, 1S 5S और लीड कंपोनेंट के दूसरे जो हैं ये सब चीजों को SMED सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाइस वगैरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काइजन वगैरह करके 10 12 15 कंपोनेंट्स होते हैं, टूल्स हैं जो उनके, उन सबको इम्प्लीमेंट कराते हैं धीरे धीरे करके, उसको उनका एक्सपीरियंस होता है। तो 1.5-2 महीने के अंदर ही उनकी इतनी बचत हो जाती है, कहते हैं सर हमारे जो 72,000 रुपए लगे थे वो तो वसूल हो चुके। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है क्लस्टर डेवलपमेंट। चाइना को बीट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि चाइना मास प्रोडक्शन करता है, ठीक, बहुत वॉल्यूमिनस प्रोडक्शन है उसका। उसको बीट करने के लिए हम लोग की चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी को ये कहें कि भाई तुम मास प्रोडक्शन करो, हर कोई अंबानी अडानी नहीं हो सकता। ठीक, चाहे हम कुछ भी बोले, हमें अंबानी अडानी की भी जरूरत है, और हम ये चाहते हैं कि आज के जो माइक्रो इंटरप्राइजेस हो वो भी अंबानी अडानी बने। ठीक, लेकिन क्या देखा गया कि बहुत सारी एक जैसा काम करने वाली यूनिटें होती है, ठीक, एक सेम या सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे करके एक जगह पे कंसंट्रेशन है उस टाइप के लोगों का। जैसे बनारस में क्या होता होगा, बनारसी साड़ियां, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। राजकोट में क्या है, इंजीनियरिंग के, ठीक है ना, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट कास्टिंग वगैरह से, कास्टिंग ओरिएंटेड जो है इस टाइप की चीजें। तो ऐसे एक साथ बहुत सारी यहाँ पे 50-100 यूनिटें हों छोटी छोटी, उनको एक इकट्ठा कर लिया जाए, उसको बोला जाएगा क्लस्टर। ठीक, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो गया उस चीज का, और उसके बाद में उनके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाता है, CFC। तो बहुत ज्यादा हो गया ना,
बहुत टेक्निकल होते जा रहा है, लेकिन जल्दी से कवर कर देता हूँ ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और जानना चाहिए सबको। कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार 20 करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट फाइनेंस करती है, जिसमें से 90%, कितना हुआ 90%? 18 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और 10% दैट इज 2 करोड़ वो इंडस्ट्री वाले और वो स्टेट, जिस स्टेट में वो है वो मिल के देंगे। समझ में आ गई बात? और ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर हो जाएगा, जिसमें हाई क्लास मशीन हो सकती है, हाई क्लास टेस्टिंग इक्विपमेंट हो सकते हैं, रॉ मटेरियल बैंक हो सकता है, क्वालिटी चेकिंग हो सकती है, ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, ऐसे करके बहुत सारे काम है जो कि उसमें किए जा सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ये? तो ये सीएफसी है, और ऐसी क्या है, इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, जो औद्योगिक क्षेत्र है, उनकी हालत बहुत खराब हो गई है कई जगहों पे, रोड सही नहीं है, सीवरेज सही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट को 10 करोड़ तक की वो देती है, सपोर्ट देता है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को डेवलप कर दिया जाए। वो आईआईडी स्कीम हो गई। और ये नेक्स्ट इंक्यूबेटर, मैंने आप लोग को बता दिया, इंक्यूबेटर क्लियर है। नेक्स्ट आता है आईपीआर। आईपीआर पता है आपको, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये है। अगर किसी को इंडिया का पेटेंट मिला हुआ हो तो हमारी मिनिस्ट्री 1 लाख रुपए उसको ग्रांट के तौर पे देती है। अगर किसी को इंटरनेशनल कोई पेटेंट मिला हुआ है तो 5 लाख रुपए देती है। अगर किसी को ब्रांड जो है वो मिला हुआ है जो उससे, तो ब्रांड के लिए 10,000 रुपए देती है, जो कि उसका जनरली खर्चा, ट्रेडमार्क जिसकी बात करते हैं तो 10,000 रुपए का खर्चा देते हैं, जिसके 7-8 हजार 10,000 रुपए करीब का खर्चा था, वो सारा का सारा खर्चा उसको वापस मिल जाता है। ये आईपीआर में हो गया हमारा। इसके बाद जेड है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, क्योंकि अब ये समय नहीं रहा कि पहले कुछ भी कैसे बना देते थे, अब सब क्वालिटी की चीजें बनती है। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में बायर आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, सारी क्वालिटी देखनी होती है कि वहां पे हाइजीन है कि नहीं है, सैनिटेशन वगैरह है कि नहीं है, चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व तो नहीं किया हुआ है, कोई रिस्की जोन तो नहीं है, वहां पे सारे सेफ्टी फीचर्स लगा रखे कि नहीं लगा रखे, एक सर्टिफिकेशन होता है। और एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो मैंने आप लोग को बता दिया कि एक डिवीजन वगैरह में जाते हैं, ट्रेड डेलीगेशन वगैरह जाता है, तो उसका खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ठीक, तो ये सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है। क्लियर हो गया? यहां से यहां तक में किसी का कोई डाउट हो तो क्विकली पूछे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन थी, ये मुझे शेयर करनी आप लोग के साथ में जरूरी थी। किसी को कोई चीज पूछनी है? नेक्स्ट दीजिए। ये लीड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है जिसमें ये है। नेक्स्ट दे दीजिए, एक बार एग्जांपल दिख जाएगा। नेक्स्ट, ये देखिए, दिखा बिफोर एंड आफ्टर। एमएसएमई की हालत थी वो बिफोर वाली, जब ये लीड वाली उस पर लगा, सिर्फ 1S, ये 5S तक जाता है, ठीक है ना, जो साफ सफाई से रिलेटेड दूसरी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए सिर्फ 1S लगाया। दिखाइए, वो जनरली इस टाइप का रखते थे, कंसल्टेंट सर्विस की सबसे बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक चीज है। उन्होंने ऐसा रखना शुरू कर दिया, देखते ही समझ में आ गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पे किसकी जरूरत है, कोई नीड है, मिसिंग है, क्या है, इस टाइप की चीजों से समझ में आ गया। नेक्स्ट कीजिए। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारी स्कीमों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट करते चलिए। नेक्स्ट दीजिए, मैं इनको वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए। बस वेबसाइट से अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नोट करने में तकलीफ हो फोटो ले लीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा।
हेलो, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं, ज्यादातर चीजें हम लोग को पता भी है कि आत्मनिर्भर भारत पे क्या चलता है। थ्योरेटिकली ना जाके थोड़ा सा मैं कवर कर देता हूँ। खाली ये जो है आज 12 मई 2020 को अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको अनाउंस किया था कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि उस समय कोविड का बहुत ज्यादा जोर चल रहा था। उस समय ये पोजीशन थी कि हमें आत्मनिर्भर, और मुझे लगता है कि वीसी साहब ने जितने अच्छे तरीके से इसको कवर किया था, आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया था। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पहले अपने यहाँ पे पीपीई किट नहीं बनती थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बाद में बननी शुरू हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग कैपेबल हैं, लेकिन हम लोग उसको बना नहीं पाते, ध्यान नहीं दे पाते, सारी चीजें। कोविड के टाइम में पूरी दुनिया को दवाई किसने दी? इंडिया ने दी, ठीक। और पीपीई किट हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होती थी, बहुत महंगी इंपोर्ट होती थी और देते नहीं थे, ये पोजीशन थी। आखिर ये डिसाइड किया कि इंडिया के अंदर क्यों न बना लिया जाए, और ये पोजीशन है कि हम पीपीई किट इंडिया से फॉरेन में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारे पास रिक्वेस्ट करते हैं, बाद में प्रेशर डालते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं कि आप हमें इतने दे दो, इतने पीस तो कम से कम दे ही दो। इंजेक्शन के लिए, वैक्सीनेशन इंजेक्शन के लिए, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारे ऊपर रेगुलर प्रेशर आता है, प्लीज इतना तो दे दो, चाहे जो मर्जी रेट लगा लेगा, चाहे जो मर्जी रेट लगा। तो इस टाइप की चीजें हैं जहां अगर हम लोग करना चाहे ना तो बहुत सारी चीजों पे जा सकते हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को लिया जाए, उस पर सबसे ज्यादा चला जाए। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड एक लिया हुआ है। आप लोग को पता है कि सैमसंग की वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री लगी है, कहाँ लगी है? इंडिया में लगी हुई है, नोएडा में, ठीक है। खैर, तो ये क्लियर, नेक्स्ट दीजिए सर। ये इसके 5 पिलर्स कहे गए थे, ठीक है। इसके ऊपर बात कर चुके हैं हम लोग, इसलिए इसको छोड़ते हैं। इस पे एक चीज, ये नेक्स्ट वाली चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जरूरी है। नेक्स्ट दीजिए सर। ये 2 जो है स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज 2 चीजों की स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई। एक है आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक, और दूसरा है बी वोकल फॉर लोकल। ये 2 मेन स्ट्रेटजीज है जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपनी जो जरूरतें है वो सारी की सारी यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। पहले हुआ करता था स्वदेशी, आप लोगों ने सुना होगा नाम कभी, स्वदेशी। ये स्वदेशी से संबंधित नहीं है, इट इज मच बियॉन्ड स्वदेशी। कोई भी इसको स्वदेशी समझने की गलती ना करे। इसका मतलब यह है कि हम इंडियन कंपनीज को इतना स्ट्रांग बनाएं कि वो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर पाए, ठीक। और जो ग्लोबली एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं उनको इंडिया में आके बुलवाए कि आप इंडिया में आओ और मेक इन इंडिया करो, इंडिया में आओ, इंडिया के लिए बनाओ और इंडिया से ही बाहर एक्सपोर्ट करो। उसके लिए उनको स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती हैं, इस टाइप की चीजें। और धीरे धीरे करके काफी कंपनियां आ भी रही हैं इस टाइप की चीजों पे, ठीक है। तो ये हो गया। और जो दूसरा था बी वोकल फॉर लोकल, इस बार दिवाली पे, सॉरी होली पे जो पिचकारियां थी ना, नहीं चल पाई चाइना की, ज्यादा बहुत कम चली। तो हम लोग कर सकते हैं इन सब चीजों को। दिवाली पे वैसे ही बहुत कम चाइना का सामान आया, वो तो स्ट्रेटेजिकली रोका गया था, ठीक है ना, उसको मार्केट में नहीं आने दिया गया। लेकिन होली के टाइम में लोगों ने खुद ही उसका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर में ही सारी चीजें बनने लग गई, सारी चीजें होने लगी। तो बहुत सारी इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, दूसरी चीजें हैं, इंडियन कुजीन है, सब बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और जिसको हमें आगे आगे बढ़ाना चाहिए। और इसकी लाइकिंग फॉरेन कंट्रीज में भी है। बेटा थोड़ा सा ध्यान दे लो प्लीज, थोड़ा 5 मिनट का बस, ठीक है ना। दिखता है यार, यहाँ से सेम दिखता है, दिखाऊं? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये जो है, मेरी बात समझ में आ गई। तो हमें जो है ना इंडियन प्रोडक्ट्स को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए, जहां तक हो सके वहां तक लेना चाहिए और हमें उसको इंप्रूव कराना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नेक्स्ट सर दे दीजिए। ये उसी चीज को जो मैंने आपको कह दिया उसी को खाली लिखा हुआ है, बस कीजिए, हो गया, एनफ। कोई क्वेश्चन है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये है बेटा आपका मैसेज, ठीक है। अगर किसी को अपना बिजनेस करना है तो उसके मैसेज ये है, एक एक लाइन पढ़ेगा। पहली लाइन क्या है? बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, ठीक है ना। तो उसको कैसे हम बड़ा से बड़े पहुंचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, कि छोटे से शुरुआत करो, ये नहीं कि बड़ा सोचा और बड़े से कर दिया। और नेक्स्ट लाइन क्या है, ये थर्ड लाइन की मीनिंग क्या है? फर्स्ट 2 लाइन तो बड़ी इजीली समझ में आती है, थर्ड लाइन की मीनिंग क्या है? बताओ थर्ड लाइन की मीनिंग क्या है? थर्ड लाइन देखो मैं क्लियर कर देता हूं, आपने बड़ा सोचा, बड़े लेवल पे सोचा, छोटे लेवल से शुरुआत की, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद जब आप ग्रो करेंगे ना तो धीरे धीरे ग्रो नहीं करेंगे, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, स्केल इंस्टेंटली, अदरवाइज यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी। तो बेटे जो आपका क्वेश्चन था ना कि मेरा आइडिया हैक हो जाएगा, इसलिए आइडिया हैक तब नहीं होगा जब आप स्केल इंस्टेंटली करोगे। आप उसकी इतनी थरो स्टडी कर लो, एक जगह पे एक्सपेरिमेंट करके एक छोटे से निश एरिया में, उसके बेसिस पे आप काम करो, उसके बाद उसको चाहे कितना भी बढ़ा दो तो चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज और मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम के बाद में आप लोग के अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज आया होगा कि नहीं आया होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रोग्राम किस लिए किए जाते हैं? इसीलिए तो किए जाते हैं कि हम लोगों के नॉलेज में दूसरी चीजों में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, है या नहीं? सर 44 कीजिए जरा, 44 देखिए तो, कार्ड नंबर 44 क्या करता है, ठीक है। तो ये चेंज मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, इस टाइप का चेंज आपके अंदर में डेफिनेटली आया होगा, आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ इट, इस टाइप का चेंज जरूर आया होगा। आया? ये देखो, ये है चेंज, आया या नहीं आया चेंज? ये अच्छा, ये चेंज आया या नहीं? यही चेंज चाहिए था हमें या दूसरा कोई चेंज चाहिए था? तो ये चेंज जो है कॉस्मेटिक चेंज है, हमें कॉस्मेटिक चेंज नहीं चाहिए, हमें क्वालिटेटिव चेंज चाहिए, ठीक। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करें, बी वोकल फॉर लोकल की बात करें, तो हमें इस टाइप का दिखावे वाला चेंज नहीं चाहिए। अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सुबह से लेकर अभी तक अटेंड कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि सेवा डिफिकल्ट होता है, पूरा टाइम दे पाना बहुत मुश्किल होता है इतना, लेकिन अगर आप लोग इतने पेशेंस के साथ में इतना टाइम दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज आना चाहिए, आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए, तभी इस टाइप का प्रोग्राम करने से फायदा है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन है? देखो मैं फर्रे बना के लेके आया हूं अपने, अभी आप लोगों ने ब्रेक दिया था ना मुझे, तो मैं फर्रे बना लाया आपने, समझे? पुरानी आदत इतनी जल्दी थोड़ी छूटेगी। सर एक 50 और दे दीजिए, 50। अच्छा सुनिए, थोड़ा सा एक टेस्ट ले लूं आप लोग का, हाँ या ना? सबकी आंखें वाखें ठीक है? भरोसा है? ठीक। सर 50 दीजिए जरा। हाँ बस रुकेगा सर आप, ठीक है ना? टेस्ट योर आईज, ओके। आप लोग क्या आई टेस्ट के लिए तैयार है? नहीं या नहीं? ठीक, गुड। एक मारिएगा सर इंटर, सिर्फ एक बार। ये है टेस्ट आपका, आई टेस्ट। आप लोग आई टेस्ट के लिए तैयार हैं? टेस्ट की कंडीशन समझ में आ गई? क्या है कंडीशन? अभी मैं आपको एक सेंटेंस दिखाने वाला हूं, इसके बाद उसमें आपको यह बताना है कि एफ लेटर कितनी बार आया है। जानते हैं एफ लेटर पहचान लेंगे कि नहीं? आंख सब ठीक है ना? पढ़ाई लिखाई इतनी तो कर ही रखी है, 8th पास है, 8th पास है सब लोग, गुड। तो एफ लेटर, और सुनो, कोई ट्रिक, कोई गिमिक, कोई इसमें चालबाजी नहीं है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टेस्ट। अभी मैं एक सेंटेंस आपको दिखाऊंगा, आपको ये देखना, बोलना नहीं है, प्लीज मुंह से मत बोलिएगा, ठीक। आपको खाली ये देखना है कि उसमें आपको कितनी बार एफ लेटर दिखा, ठीक है सर? कर लेंगे? मुश्किल है क्या? फिर से मैं बोल रहा हूं, दूसरे लोगों से बातचीत नहीं करेंगे प्लीज, ना मुंह से कोई शब्द बोलेंगे, खाली मन में देखना है और मन में करना है, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तभी इस टेस्ट का मजा आएगा, ओके। सर इंटर एक मारिए, ये थोड़ी सी देर के लिए दिखाऊंगा बस, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद जमा करूंगा।
देखा सबने? बोलेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं प्लीज। सब लोगों ने देख लिया, हाँ या ना? कितनी बार देखा भी नहीं बोलना है, ठीक है? सब लोगों ने पढ़ लिया, सफिशिएंट टाइम दिया, कोई चालबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं पूछता हूं, कितने लोगों ने सिर्फ 2 बार देखा? हाथ खड़ा करे, ईमानदारी से खड़ा करो यार फटाफट। कितने लोगों ने 3 बार देखा? वेरी गुड, हाथ नीचे। कितने लोगों ने 4 बार देखा? ओ माय गुडनेस। अच्छा, कितने लोगों ने 5 बार देखा? 5 वाले, ओ माय गॉड, 5, ये 5 बार देखा? कितने लोगों ने 6 बार देखा? ऐ शाबाश। 7 बार नहीं। तो दोस्तों क्या समझ में आया? सेंटेंस अलग था क्या? एक चीज बताओ, सेंटेंस अलग था क्या? सबके लिए सेम सेंटेंस दिखा था? कितने लोग थे 3 वाले? हाथ खड़ा करो, ईमानदारी से बताओ। 3 ही बार दिखा था? 4 हो सकता है क्या? 5 हो सकता है क्या? 6 हो सकता है क्या? 7 हो सकता है क्या? हाँ या ना? अच्छा, 4 वाले बोलो। 4, जितने लोगों ने 4 बार देखा? 4 बार देखा था ना? तो ये लोग 3 वाले क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये 4 वाले झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, 5 वाले भी तो हैं। 5 कितने लोग 5 बार देखा? सर आप तो झूठ नहीं बोलोगे, है ना? 5 बार कितने लोग ने देखा? अरे उसी सेंटर में 5 बार देख लिया। वेरी गुड। तो मजा आया है? जादू। इनको मैंने हिप्नोटाइज कर दिया, बोला 3 बार से ज्यादा नहीं देखने का। इनको मैंने बोला 4 बार से ज्यादा नहीं देखने का। उनको 5 बार देख ले, कुछ नहीं होता। फिर से देखना चाहोगे? हैं? देखना चाहोगे? कितने लोग जो नहीं देखना चाहेंगे? हाथ खड़ा करें। अरे कोई नहीं, सब लोग देखना चाहेंगे इसका मतलब। चलो एक बार और दिखा दो भाई। सर डाउन एरो दबाइए जरा फिर से, लेकिन वही थोड़ा सा टाइम के लिए दिखाऊंगा। बोलेंगे नहीं? कोई नहीं, मुंह से नहीं बोले। अब करो, अब करो। 1 मिनट बस, मुंह से नहीं बोलने का मैंने कहा था ना। सब लोगों ने देख लिया? कितने लोग हैं जिनका आंसर चेंज हो गया? हाथ खड़ा करें। चेंज हो गया जिसका आंसर? कितने लोग हैं जिनका आंसर चेंज हो गया? हाथ खड़ा करें। अच्छा चलो फिर से कर। कितने लोग हैं जिनको 2 बार दिखा? 2 बार वाला तो कोई नहीं था। 3, शाबाश। और 4 वाले, 4 बार वाले, और 5 वाले। शाबाश, देखे सर क्या जबरदस्त स्कोर रहा। 6 वाले, 6 भी, शाबाश। और 7 वाले, 7 जिन्होंने 7 टाइम्स जिन्होंने देखा। वेरी गुड, 7 टाइम्स। 3 लोग। अच्छा, और 8 बार जिन्होंने देखा होगा? कोई नहीं। अच्छा मजा आया है? अच्छा एक बार और, किसने एक बार जिसने देखा? हाँ, इन्होंने पहली बार इन्होंने खाली पहला सेंटेंस देखा, दूसरी बार के लिए बोला बस काफी जमा। यस, वो इनका जो है ना, ये स्मार्ट आदमी है। ये कहता बोला मैं दूसरा देखूंगा नहीं, मैं तो अर्जुन के समान हूँ, खाली बस चिड़िया का आंख देखूं। बोला पहला सेंटेंस है, उसके बाद देखने का नहीं। काफी जमा कर दिया, काफी मैंने जमा कर दी, अब मैं दूसरा नहीं देखूंगा। सर इसके बाद का ही सेंटेंस देखना था। ट्रिक नहीं है, मैंने कहा ना ट्रिक नहीं है अभी तक। अच्छा एक बताओ, मैंने कोई ट्रिक खेली क्या? सेम सेंटेंस दिखाया हर बार या नहीं? हर बार आपका आंसर बदला या नहीं बदला? मुझे कैसे पता था? मुझे कैसे पता था कि आपका आंसर बदल जाएगा? क्योंकि ऐसा होता है। ठीक, एक बार और देखना चाहोगे क्या? दिखा दो सर, एक बार और दिखा दो सर। हमारे से ज्यादा दरिया दिली किसको मिलेगी? बोले नहीं है, प्लीज बोले मत, बोलो मत। ऊपर करो। हाँ अब बोलो भाई, मजा आया? अच्छा, आप कितने लोगों के आंसर बदल गए? जिनके आंसर बदले होंगे यार, एक सेकंड प्लीज। देखो ये जो है ना, मैं गेम खेलने के लिए नहीं आया हूं। मैं असल में एक मैसेज देना चाहता हूं, लर्न विथ फन। ठीक,
अभी एक चीज बताओ, कितने लोग हैं जिसका आंसर बदल गया? ईमानदारी से बताओ, जिनका आंसर बदल गया तो हाथ ऐसा करो। मुझे अच्छा लगता है ऐसा देख के, पता चलता है रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, गुड। अच्छा, कितने लोग हैं जो 3 पे हैं अभी भी? 3 वाले, ठीक। एक मिनट, हंसो नहीं। देखो, लेट अस एप्रिशिएट देयर ऑनेस्ट फीडबैक। जितने लोगों ने 3 बार देखा है, कितने लोग हैं बताओ? इधर से कोई 3 वाला, इधर से 3 वाला। 3 डेफिनेटली गलत आंसर है, लेकिन हमें एक उनके फीडबैक को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है ना? जिन्होंने 3 देखा है तो 3 बोल रहे हैं, जिन्होंने 4 देखा 4 बोलेंगे, जिन्होंने 5 देखा 5 बोलेंगे, जिन्होंने 6 देखा 6 बोले, 7 देखा होगा 7 बोलेंगे, जिन्होंने 8 देख लिए होंगे वो 8 बोलेगा। ठीक है कि नहीं? क्लियर? तो 3 वाले हो गए, 4 वाले, 4, 5। उधर देख के क्या बोल रहे बेटा? इधर देखो ना, इधर देखो। हाँ, और 6 वाले, गुड। 7 वाले हैं, चल ठीक, गुड, मजा आया। 8 वाला तो कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं है तो मैं हाथ खड़ा कर देता हूं यार, एक तो हो, कोई भी नहीं है ना 8 वाला तो, चलो ठीक है। अच्छा, हम लोगों को क्या समझ में आया, एक ही बताओ, इस एक्सरसाइज से हम लोगों को समझ में क्या चीज आई? What did you learn out of this exercise? Can anybody stand up and say कि सर फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोगों ने इसमें ये चीज समझी? कोई बोल सकता है? हाँ, Hello. We all look at same thing differently. We all have a different perspective. वैल्यूएशन कितना अभी रुको, मेरी बात क्लियर हो गई? हम लोग तो देखते हैं, जैसे उन्होंने भी काम कहा, वैल्यूएशन देखो, फिक्स डेट बनाओ, ये करो। फादर, उसके सिवाय और क्या देखा हमने? एक चीज ये तो सीखी कि डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट परसेप्शन। वेरी गुड। आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। और देखो, आप लोग अपना फीडबैक दो, आप लोग पीछे मत रहो प्लीज, नहीं तो आपको पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हो। सर हर बार एनालिसिस करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट निकल के आएगा। सो बाय मोर एक्सपीरियंस यू लर्न मोर, यू बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट। ठीक? But at the same time, there are some persons who, in spite of keep on practicing, don't understand the things properly because they take it very casually. उन्होंने कहा जस्ट गेम ही तो है। उन्होंने अपने आप को चैलेंज नहीं किया कि यार जब मैंने 3 बार देखा, दूसरे लोगों ने 4 बार देखा, किसी ने 5 बार देखा, किसी ने 6 बार देखा, किसी ने 7 बार देखा, तो कहीं ना कहीं तो कुछ लोचा है मेरे साथ में, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। अगर उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया होता तो 3 वाले 3 नहीं रहते, 4 वाले 4 नहीं रहते, 5 वाले 5 नहीं रहते, 6 वाले 6 नहीं रहते, 7 बार तक पहुंच ही जाते। क्लियर? मेरी बात क्लियर हो गई? एक दूसरी लर्निंग ये हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे, अगर हमें लर्न करना है तो इफ वी कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस until unless we challenge ourselves, we will never be able to our knowledge anything. क्लियर? और कोई, किसी की और कोई लर्निंग? चलो एनीवे, तो इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अब आप एग्जैक्ट आंसर जानना चाहोगे? Shall I tell you the right way of doing this type of thing whenever you come across? एक बार और दिखाओ, देखो मेरे साथ करेंगे। एक बार सर वापस लो, सॉरी वापस लीजिएगा, वापस लीजिएगा। देखो इसका तरीका ये होता है, हम वन बाई वन वर्ड लेंगे। ओके? जहां पे भी एफ आएगा हम उसको काउंट कर लेंगे। से जैसे हम फर्स्ट एफ लेटर पे आते हैं, हम कहेंगे 1। सेकेंड वर्ड उठाएंगे, अगर उसमें एफ है तो 2 और नहीं है तो 1। इज इट क्लियर? मेरी बात क्लियर हो गई? हम इस तरीके को अपनाएंगे, फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, अगर उसमें एफ आया है तो हम कहेंगे 1। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, अगर उसमें 1 एफ आया है तो कहेंगे 2, नहीं आया है तो कहेंगे 1। थर्ड वर्ड पढ़ेंगे, अगर एफ नहीं आया है तो 1, आया है तो 2। क्लियर? क्लियर हो गई मेरी बात? एंड वी विल कीप ऑन एडिंग एफ्स इन आवर मतलब माइंड। क्लियर? सर अब करो।
वी हैव टू डू along with me. आप लोग को खाली 1 2 बोलना है, वर्ड्स में बोलता हूं, ठीक है? Finished. Files are the result of years of scientific research, study combined with the experience of years. How many times? अब इतना जो हमने अगर थॉरो स्टडी कर ली, नाउ वी कैन चैलेंज, नथिंग मोर नथिंग लेस. डिड यू गेट माय पॉइंट? मेरी बात सबको समझ में आ गया? तो ये अप्रोच होता है. अगर आप कभी भी बिजनेस में जाएं, किसी भी चीज पे जाएं, किसी भी प्रोफेशन में जाएं, आप पूरी प्रॉब्लम को एट ए टाइम मत देखिए, उसको प्रॉब्लम्स को स्प्लिट कर लीजिए, थोड़े थोड़े पार्ट को कीजिए, बिल्कुल थॉरोली कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए, फिर उसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए. उसको लेफ्ट बिहाइंड मत छोड़िए. अगर लेफ्ट बिहाइंड छोड़ोगे तो यू विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड. ठीक है? तो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांटेड टू टेल. नेक्स्ट कर दीजिए. So with this, I will like to say this to you. Any question? Next कर दीजिए सर. इनको मेरी जरूरत ही नहीं है, तो I should say, है ना? Okay. Thank you, friends. Thank you, sir. I really enjoyed the session. मुझे बहुत अच्छा लगा. And I have learned also something कि बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती है कई बार. और मुझे लगता है मुझे माफी मांगनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जूनागढ़ से मैं सही सलामत निकल भी ना पाऊं. अगर मुझे जाना है तो मुझे करना पड़ेगा. लेकिन बेटा, मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज गेट इन्वॉल्व. यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री. ठीक है ना? अगर इस देश को आगे लेके जाना है ना, तो थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच छोड़ दो. फॉरेन कंट्रीज में स्टूडेंट्स आपकी जैसे एज के बच्चे इतना टाइम वेस्ट नहीं करते व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे, जितना आप लोग करते हैं. ये स्टेज है आप लोगों की लर्निंग की, वो स्टेज आएगी रिलैक्सेशन वाली, उस समय करना. अपना टाइम थोड़ा सा बचा लो प्लीज. ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे. अगर आप लोग कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो जैसे तैसे हो ही जाएगा. थैंक यू. Indeed, we all will think big, start small, and scale instantly. Thank you, sir, for briefing us about the entrepreneurship qualities, the ideas, and also new terms like APO and all the main schemes that is included in MSME. It was a really good and interactive session. Now we'll have a tea break for 15 minutes, and right after 15 minutes, please everybody take your seats for the next session. The tea break will be just outside the auditorium and not in the community hall.
Hello. Yes. हाँ हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ तो दिख तो रहा है। आवाज आ रही है क्या आपको? ये फोन काट के 1 मिनट देखते हैं कम्युनिकेट करके, है ना? हेलो सर, कैन यू हियर मी? हेलो. Hello. Yes sir. Am I audible? Yes, yes, sir. You are audible. Is everything fine? Yes, yes, everything is fine, sir. And can you see the presentation also, slide? Yes, yes, we can see the presentation, but sir, we are having 10 to 15 minutes break. Yeah, I know. We have just completed one. Yeah, I know. I just wanted to check if things are fine. Yes, yes, yes. Everything is fine, sir. We can see the presentation and your voice is also clear. Okay. Honorable MK, Honorable Doctor.
का कोई जरूरत नहीं। We now welcome Dr. Ajay Joshi, visiting faculty, International Institute of Professional Studies, Devi Ahilya University, Indore, MP, to deliver his expert lecture on indigenous smart sensors in agriculture. Sir, are we audible to you? Hello. Yes. Hello, sir. Hello. Yeah. Yes, sir, you are audible, sir. Okay, sir. So, sir, over to you, sir. Okay, sir. Honorable Vice Chancellor Dr. N.K. Gotia Saab, Dr. R.C. Agrawal sir, Dr. K.K. Goyal sir, Dr. Ganesh Bora sir, and Shri Praveen Sharma sir, and other members of organizing committee. I am presenting this lecture slightly on a different topic, which is the use of sensors in agriculture and how can we leverage in agriculture using the sensor technologies. So I would go to that those slides which I have prepared for you, and we'll see. And you may ask me questions regarding sensors, controllers, and communication lines. So we'll see how the things have evolved and how is the contemporary agriculture uses the technology. So should I present my slides? Okay. Yes, sir. Yeah. So, is it visible? Yes, sir. Now, make it full screen, sir. Next gen agricultural technologies for the startup. Now, startups are using lot of technologies, and it gives them a cutting edge if they use the contemporary technologies which is available in the other parts of the world. So the main component of these technologies are building blocks of these technologies are sensors, controllers, actuators, and communication lines. Now I'll give you a small example how we can differentiate between these four things. So here you have a water level. Our purpose is to maintain a water in the tank. The tank is given here. So float senses the water level. Sensor is a device which converts physical quantity into electrical signal. That is the contemporary definition of a sensor. So here float converts the water level, which it measures the water level at a desired point and converts it into electrical signal. From there, you have a communication line connecting to a controller. Now, controller comes to know whether the water level is up to the mark or the below the mark. Now, controller has to take decision whether to stop the tap or let it run. Ajay, sir. Yeah. Yeah, sorry to interrupt you, sir. Sir, are you changing your slides? Yeah, I am on the third slide. No, we are not here visible the slides. So you make it full screen and then change the slides. It's full screen. So here we are seeing only the first slide. Okay. So I'll get out of this presentation mode and you reshare it, sir. Yeah. Okay. Can you see the first slide now? Yes, sir. So and the second one? Yes. Is the second one? I'm not into the slideshow right now. It's in edit mode, so I'll show it like this only, okay? Okay, sir. But now it's visible, sir. Yeah. So the building block of any technology which agriculture uses has got mainly four components. First one is sensor, second one is controller, third one is actuator, and fourth one is communication lines, okay? And we'll see how these things have changed over a period of time. Now I'll give you a small example
I'm going to the slide number 3. Let me know if it is visible there. Yeah. Is it visible? Slide number 3. Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Okay. So our main purpose is to maintain water level at a desired point. So here we have got a float wall connected. Float wall is a wall, but here it is acting as a sensor. Okay. So it is converting the physical quantity into electrical signals. Now these electrical signals through communication lines are going to the controller. Now controller basically takes logical decisions. It decides whether the water level is up to the mark or it's below the mark. If it is below the mark, it lets the tap open and let the water flow to the water tank. If it is above or up to the mark, then it would stop the water to flow. Okay, so this is a simple system which we use, and we can emulate this system in many other ways. Okay, so let's see how this can be applied in maintaining the soil moisture level in the field. I'm just giving an example. You can manage pH level also, you can manage soil salinity also, you can manage other things also. Many other parameters are there. I've listed them also. So I am going to the slide number 4 now. Is it visible? Slide 4? Yes, sir. Okay. So this is something which we did at IIT Kharagpur. So the main purpose here is to maintain the soil moisture level at a particular point. Okay, so just see one plot here. We have got basically 8 plots here. So each 8 plot has got one soil moisture sensor. So this soil moisture sensor is sending electrical signals to an interfacing unit. Interfacing unit is a translator. It translates one language into the another. Say, for example, sensor is talking in Russian and the computer listens to the English. So this interfacing unit is translating Russian into the English, and then it makes those things understandable to the computer. Now computer is acting as a controller here. It takes logical decisions. It measures the soil moisture, and based on the level of soil moisture in the field, it would take decision whether to start irrigation or not. The irrigation is started and stopped by the red lines shown in the figure. And blue lines are communication lines for the sensor, and the red lines are the lines running or communication lines which are connecting to a actuator or a valve which starts or stop the irrigation. So the simple water level measuring measuring system which I showed in the transparency number 3, or I'm using the word transparency, slide 3, is converted into actual system on the field. It is doing the same thing. It is sensing, it is communicating, it is actuating. So these are the things which a system is doing. So you now understand how we convert a simple system into a practical system. Now we'll talk about the thing which is a term which is in trend, which is IoT, Internet of Things. Now, what is Internet of Things? You can apply Internet of Things on the same system which we have studied which we have seen earlier, and it's like this: Internet of Things in agriculture. Is the slide visible? Yes, sir. Okay. So here you have got a field. Now the communications lines which were earlier wired, they have been converted into radio signals. Radio signals could be Bluetooth signal, it could be Wi-Fi signal, or it could be simple RF signal. I have shown my earlier figure also for your reference. So the sensor is now located at a remote position, and it's connected through radio frequency, as I have already told. It could be Bluetooth, it could be Wi-Fi,
or it could be Ethernet line also. Wi-Fi connected to a broadband 3G or 4G. Now this radio frequency communicates with the central computer, which is installed in the field or outside the field at a common point, and it gets the data from all the sensors. So here in earlier figure in the slide number 4, where we are using the communications line, these blue and red communications line, those communication lines have been replaced by the radio frequency. When we do things like this, it is called Internet of Things, IoT technology. We are implementing IoT technology into the agriculture. Now, to implement IoT technologies, you need to know what are the sensors available. If the sensor is not available, then you have to design your own sensor. Now I'm going to the slide number 5. So the types of sensors which are available are mechanical sensors like tensiometers and diaphragm sensors. Now we have got electromechanical sensors also, which convert electrical signal, which convert mechanical signal into electrical signals. We have got electrical tensiometers also, and these diaphragm balls are also there. These diaphragms are majorly and very commonly used in washing machines for sensing water level in the washing machines. Then we have got electrical sensors. They might be sensing one of these things like resistance, capacitance, or electric pulse. The change in resistance is related with the change in physical quantity, like salinity can be measured by change in resistance of water. Your AquaGuard, which senses the salinity in real time, has got these kind of sensors connected to them. Then we also have chemical sensors, which can sensor NPK, micronutrients, and CO2 also. Then you have got optical sensors. Optical sensors are infrared sensors, laser sensors, color camera sensors, location. Then fifth one is location sensor, which uses GPS technology, and sixth one is ultrasonic sensor. This is not the exhausting list, but we have got other sensors also, other technologies also, which can be used as a sensor in the field. Now these sensors are commonly available. I'll just say these sensors are commonly available. This is DTH11 sensor, which measures the temperature and relative humidity. This is a thermistor, which is shown like a button. This cost only 10 rupees, and this sensor, DHT sensor, it costs 250 or 350 rupees, and they are widely available at any electronic shop. Then we have got a now where you can use these sensors is the application of these sensors is like monitor climate conditions. You can monitor climatic conditions like using the temperature sensor, humidity sensor, sunshine recorders. All these are available commonly at every place, and only thing is that you have to assemble these things. Then they can be used in the greenhouse automation. They can also be used in crop management. You have got cattle management and monitoring, and similar sensors can be used there. Then you have got small precision-based agriculture using these sensors, like the one I've shown, that soil moisture can be sensed, and you can manage the soil moisture level in the field at a particular point. Then you can have agricultural drones. These sensors can also be installed in agricultural drones and monitor the crop parameters, crop and soil parameters. Now let's see how these sensors can be connected to controllers. Now having understood about the sensors, now you have to connect these sensors to the controllers. These are the common controllers available. This controller Arduino, which I have shown here in the figure, they are in 3 different sizes. All the 3
do the same work. They have got the same capabilities, but they are of different sizes. So you have to connect those sensors to these controllers. In earlier times when we did our PhD and we did our research, we used to have PCs as controller, and the interfacing sensors with the PC was a very difficult task. Nowadays, you have got Arduino and Raspberry controllers available. They have got same functioning as your computer. They take input, they take analog input, they take digital input, and they can be programmed like a PC, like you program in a C language, and you can get the desired results from there. Now the sensors which I've shown earlier here in this slide number 7, this sensor, this measures the relative humidity and temperature. This can be directly connected to this controller. Only you have to connect these 3 wires to the desired port here and program it likewise. In these 3 wires, only these 2 wires are for 5-volt power supply and 1 wire is out for data. So you have to collect this data, and based on the parameter you are measuring, you can have the output like this, temperature and humidity. These display boards are also available. Now they are widely used in infrared thermometers also. They were quite in demand recently when COVID was there. So you can connect these sensors, controllers, and display units and make a wholesome project, or a wholesome technology can be provided to our farmers based on their local needs. So this is something you can do it in startups. And now here the sensor is connected to the controller using wire, display is connected to the controller using wire. You can eliminate these wires and use the IoT technology. If you eliminate these wires and communicate between this sensor and the controller using the Wi-Fi or Bluetooth or RF frequency, then it becomes IoT. So my next slide, this slide number 11. I hope we are on the slide number 11. You are also seeing it there. So here this is a Wi-Fi dongle which is connected to the controller. Now you can have a sensor in the field, and that sensor with a Wi-Fi dongle there also can communicate with this Wi-Fi dongle using the Wi-Fi signals available. So that's how you convert communication lines, wired communication lines into wireless communication lines. So now this dongle can, or this controller can get data even in New York from Junagadh. So this is the kind of scalability you can attain. Now in this, if you are using a drone technology, you can connect these Wi-Fi dongles to the drone, and drone can have a sensor. Drone would, or in field you can put a sensor. That the sensor which we have put in the field has got a Wi-Fi dongle there itself, and that dongle would connect to the drone's Wi-Fi dongle, and the data from the sensor would be transferred to that drone, and drone can read the soil moisture or other parameters which are of importance to you. So that's how the drone technology is working. Making drone doesn't mean designing a drone. It means how we collect the data using drone which are already available. So all these modules, Wi-Fi modules, Bluetooth modules, and communication modules, they are all available even at a local shop. Here at Indore, in Jabalpur, in Junagadh, these all things are available. If they are not available at your local shop, you can get them from Amazon also. And the programming part, as far as the programming part is concerned, the programs, ready-made programs are also available. Only thing is that you have to get the right program and load it into the chip. Now you can eliminate this controller also, this Arduino controller.
the bigger one, this can be eliminated, and this Wi-Fi dongle has the capability to get programmed. This also has got a little small controller in it, so it can also be programmed like they have programmed in smart technologies at home, like Alexa and Siri and OK Google. They all use same chip inside them, and using those chips they put on or put off your TV or a light or increase the volume. All those things can be converted. So next slide, I would be showing a block diagram of same technology. Is it showing the slide number 12? Yes, sir. Yeah, so I am taking soil moisture as an example. So you have got in field this soil moisture, and number of soil moistures are there. Each soil moisture has got its own Wi-Fi dongle, the one I have shown you there. And these dongles operate at a 3.3 volts. So they consume quite a less power. So they can be powered using the small solar panels. Small means 10-inch by 10-inch solar panels can power them. So it's a network of sensors. The first block shows network of sensors. Then sensors have got a Wi-Fi dongle. They connect to the 3G or 4G Wi-Fi available to them, and then the data is sent to the computer. Now computer has a graphical and visualization capabilities, and these capabilities plus some decision making capability using artificial intelligence, and based on those decision making capabilities you can send the SMS, or on your application or on your mobile based app, Android or iPhone based app, you can send a signal to the farmer or send a message to the farmer to start or stop, or you can directly start or stop the water pump at the farmer's field. Then they can also have graphical or visualization capabilities also, like in our health smart watches, which uses health, which we wear. So they measure your movements, they measure how many steps you have walked, and they when you want to see, they will show you in graphical format. So similar things can be done here itself using the sensors and controllers which I have already shown, and it won't cost you more than 1,000 rupees if you assemble all those things at your end. So these technologies can be converted into businesses. Then I have shown an example of, is it visible? Yes, sir. IoT based integrated irrigation management system. In fact, it's an animation, but I'll try to explain it without the animation because the full slideshow is not working. So you have got different fields here, which are represented by green leaves and red fruits. So these are the different fields, and mind you, these fields are spread across the geography of our country. So our scalability improves. So we have got a great scalability using these technologies. Now you have got different fields. Now these fields are sending data using the Wi-Fi dongle and the internet available to them to a centralized location. Say, for example, to Delhi. They are sending the data to the Delhi, and at Delhi we have got a computer or a server which collects all these data, and then it makes some sense out of this data. It has got capability for graphical presentation of that data. Based on that data, it takes some decision whether to irrigate or not to irrigate, and from there it will send signal to each farm to start or stop a motor in those farms, or it might send a message to a farmer to start irrigation and also to stop irrigation. So these are the things which we can achieve. Now, having shown all these things, all these technologies which are available here, they available in India at your local shop, the electronic shop next door to you, and only thing you have to do is to connect these things and come with some great idea. What we are lacking is the manufacturing of these chips. Say, for example, this sensor is not done in India. This thermistor, which is button shape, this is not done in India. Most of them are manufactured in China.
So currently we are importing, but we might in future start manufacturing these sensors and these small thermistors in India also. We can manufacture our controllers also. These controllers we can manufacture in India, so it doesn't have a it doesn't require a great technology to manufacture them. Only thing is that we do not have a will to manufacture these things here in India. So I am coming to the sensor part where we can contribute in the sense we don't have a soil moisture sensor even till today, which is manufactured in India and which is used in Indian farms. Some big farmers are using them, but they imported. Some Indian irrigation companies also import these sensors. So you can manufacture your own sensor. This sensor I'm showing, it has got 2 electrodes and it measures the resistance between these 2 electrodes, and this resistance is then calibrated with soil moisture in the field. So you get the soil moisture in the field, and over a period of time, if it doesn't work as desired, you can improve these sensors. Instead of electrical resistance between these electrodes, you can measure capacitance between these 2 electrodes and improve your sensor. So this way we can have a great startups dealing with technologies, or using these technologies we can have great advisory startups in our country, which may help increase the income of farmers. So that is all I have got. See, this is the sensor which we made at IIT Kharagpur. So it measures the soil moisture. This is giving a absolute figure of a number which is between 0 and 1024. That is the number we get based on the soil moisture sensor. So this number can then be calibrated against the amount percentage soil moisture in the field. So I have not done anything great in this. I have only connected the thing. Only thing is that this soil moisture sensor is ours. So we can start having our own technologies, or start encroaching into the technological manufacturing field also. Now the thing is that you need to manufacture this sensor. We need to produce these sensors at a commercial scale and market them, which makes a great business sense. So that is all I have got with this technology. Any questions from students, faculties? Hello? Am I audible? Students, if you have any question, you can ask. Hello? Yes, sir. Yeah, please. Any questions regarding these technologies? Though I have run very fast because of the limitation of the time. And hello? Yes, sir. So should I stop presentation, slideshow? Or there are some questions regarding IoT, sensors, controlling systems, and these can be used in the plants also. Your this SpO2 monitor, which measures the oxygen in the blood, has got only a light sensor which sends a light of particular frequency into our finger, and the reflected light is calculated, and that is calibrated against the oxygen in your blood. And the movement or the rhythm which it makes, from there they measure the heartbeat. So these light sensors, optical sensors, these are very normal things which are being used in technology, even in biomechanics. So SpO2 sensors or oxygen sensor, you can make it yourself and measure the oxygen in plants also, in plant leaf also. All these research and new starting can be done. Or you can put these optical sensors in drone also and measure the soil moisture or the stresses in the
plants while drone is flying. Thank you, Dr. Joshi. Thank you, ma'am. Thank you, students. Thank you, faculties and organizers. So in the series of interesting information, we are moving further. And let me call Mr. Karthik Iyer, CEO, Startup Agri FinTech, who is virtually with us and is going to deliver information on startup. Sir, on the behalf of university, I welcome you and switch over to you, sir. A very good evening to all of you, respected Vice Chancellor, sir, members on the dais, and all my dear students. Just wanted to check if I'm audible. Yes, sir. Okay, fabulous. So, तो क्या करते हैं? Let us keep this whole conversation in a English because मैं देख रहा था कि ये जो पहले मेरे presenters थे, तो उन्होंने जब ये English use किया था तो प्रतिसाद काफी अच्छा मिल रहा था. So let's keep it more conversational. The biggest problem in delivering an online session is that either we become larger than life or students become larger than life. So there's always a fun coming into a class which is filled with energy, and when I'm interacting with students, and this was the first time that I'm addressing somebody more on a virtual basis, and that too so many. Otherwise, what used to happen is that there were largely Zoom sessions that were going on. So we run a company called as Human Ventures. I spent close to about 20 years working with financial institutions after my MBA. And the bigger problem that we are trying to address is, how do we bring in prosperity to the farmers? So just allow me to present my can I be given the presentation rights, please? Yes, sir. Yeah. You can share the screen, sir. Yeah. Is my screen visible? It's going on, sir. Yeah. Do let me know when it's visible. Not yet. Yes, sir. Now it's visible. Okay. So my dear friends, I don't know how to keep it interactive, but चलो try करते हैं, ठीक है? So आपको अभी तक बताया गया कि चीजें कैसे करते हैं, चीजें क्यों करते हैं? Why agri startups, why agri SME, and why agri businesses, and how you need to do it. We spoke so much about the best part of agri, which is how to do things. So many new ideas on how technology changes this entire thing and how we can move forward. But let me tell you one thing which is very important. Business कहाँ करना है? Business होता है यहाँ पे, जहाँ पे किसान है. Don't all of us agree? And this is such a big challenge that who are the people that we are doing business with. Frankly, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक हम लोग आइवरी टावर्स में काम करते थे, MBA करने के बाद तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में 20 साल काम किया था. मैंने कभी जिंदगी में खेत नहीं देखा था. मैंने बस एक ही बार खेत देखा था, वो लगान पिक्चर में, नहीं तो स्वदेश पिक्चर में, नहीं तो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, नहीं तो और कई ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा. Otherwise, I have never seen a farmer, right? So when we decided that after spending 20 years in financial institutions, I figured out that पैसा जा ही नहीं रहा है किसान के पास. And everything that you'll have to do today in agriculture, don't you think that everybody said इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, बट इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से, राइट? दैट इज सच अ बिग थिंग. एंड does every startup has to go out and raise investment? There is only as much money available. और सब लोग अगर इन्वेस्टर्स के पीछे लगे रहेंगे तो धंधा कौन करेगा on the ground? So I'm trying to solve a lot of these issues today, and I'm just trying to present a few models. So one of the model that we would like to present is our own company, what we are doing, and then we'll move and slowly and gradually I'll take you through what are the great opportunities that we have ahead of us, which is not going to require too much of a money. I'm going to give you ideas where we are going to work as a collaborative model.
So I am seeing so much of diversity. I'm so happy that there are so many girls and there are so many boys, because I got a lot of things for even women entrepreneurs who are wanting to go and work there with these kind of farmers. So when we talk about agriculture, we are going to talk about the entire scale of agriculture. We are basically going to talk about right from farm and then to the product. Okay, right? So I'll also walk you through an example and then just show you what are the opportunities that come our way, right? So what we are working on is that we are working with a farmer who is a poor farmer, and we basically make this poor farmer into a rich farmer, or a prosperous farmer, and that too within 18 months. Now all of you will think, ye to bakwas hai, to ho hi nahi sakta. But let me demonstrate to you, how this can happen completely. So what we are working on is called as a irreversible rapid economic transformation model. And why we are calling it irreversible? क्योंकि एक बार आपने अगर होंडा सिटी चलाया तो आप मारुति 800 पे नहीं बैठेंगे. तो ये सिंपल यही है कि एक बार किसी ने कमाने को सीख लिया, वो कभी गरीब नहीं रह सकता. And this is what we think is that ये देश बदलने का पूरा this has the capacity to completely change our nation. And what we are trying to do is that we work across, we toured across the country, we met with a lot of farmers, we went into deeper parts of Marathwada, Odisha, where our projects are currently going on. And where we saw is that the farmer's income on an annual basis is just about 15 to 30,000 rupees per annum per acre. This is probably around the same amount of what electricity bill we pay on a per month basis, right? So whatever we are paying as electricity bill, that is what they are earning. So how do we basically take their incomes, and that too within 18 months, to a 1.5 lakh? So we are talking about the economic principle. We call this as a 10x multiplier over the present income. So let us see what is the current state of affairs in agriculture. And before that, let me give you a very quick story. What happened is that we basically were, when I was in investment banking, I used to work for SBI Capital Markets. This is one of the largest investment banks in the country. Investment bank मतलब वो होता है जो दूसरे कंपनीज के लिए पैसा मार्केट से लेके आता है. तो मैं जब भी एक इजरायली इन्वेस्टर्स के साथ ट्रैवल कर रहा था, हमने सोचा होगा कि आपको पता होगा कि इजराइल में क्या कि सबसे ज्यादा जूस रहते हैं, और ये जूस जो है वो ट्रेडिशनल बैंकर्स है, मतलब ये पिछले 3-4 हजार साल से ये सारे बैंकर्स रहे होंगे, मतलब वो सारा व्यापार का काम करते हैं. And I'm so happy to speak in the state of Gujarat because majority of people in Gujarat are coming from business background, right? So these people also came from business background, and I told them, अरे आपके जो डेवलप कंट्रीज छोड़ के आप लोग इंडिया में क्यों आते हैं? वो लोग ने मुझे बताया कि हम लोग इंडिया में आते हैं क्योंकि अमेरिका इंडिया जैसे बन नहीं सकता, लेकिन इंडिया अमेरिका जैसे बन सकता है. और जब इंडिया अमेरिका जैसे बनेगा, और वो पूरे बनाने में क्या होगा कि देयर वुड बी अ रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंड वी वुड लाइक टू बेनिफिट फ्रॉम दैट ट्रांसफॉर्मेशन. So it is like you are seeing the glass half full or half empty. When you see this as half full, we know that there is so much balance that we can gain out of agriculture. Now let us see. So why is agriculture इतना पिछड़ा हुआ क्यों है agriculture? So more than around 55% of the population is engaged in agriculture, but you look at it, सिर्फ 16% of the contribution is coming from agriculture. अब हम हर बार सोचते हैं कि कंट्री 7% से बढ़ता है, इंडस्ट्री 20% से बढ़ता है, कोई इंडस्ट्री 35% से बढ़ता है, टेक्नोलॉजी इज गोइंग ऑन एट सम क्रेजी रेट्स ऑफ 35%. Agriculture is increasing only at 3%. So I'm saying that majority of the people who are working in this country are only contributing for a 3% growth in the country. Why it is happening? And you can see that this is the sector which is not tapped at all. And believe me, after 5 years or within 5 years, agriculture would be one of the hottest sectors that everybody is going to come to, because बाकी सेक्टर में इतना ग्रोथ नहीं दिखाई देगा जितना एग्रीकल्चर में दिखाई देता है. So till 2035 to 2040, I'm sure all of you who are going to pass out of this batch are going to be extremely fortunate, because you are going to be witnessing the biggest boom. ये tech boom, veg boom will not even come closer to what is going to happen at the level of what agriculture boom we are going to witness. And I'm also going to demonstrate to you why it is going to come like this. Okay. So let us see what is the current state of affairs. ये आपको सबको पता होगा, आप लोग सब, you all of you are experts in agriculture. I am no expert in agriculture. I only have practical experience. So today, a marginal farmer in India, majority of the farmers are marginal farmers. I need not tell you, because you all know what is the definition of a marginal farmer who owns less than 1 hectare of land. So they are only earning between 10 to 30,000 per acre per annum. Okay. Most farmers have only one crop, and that too during rainy season. बाकी टाइम पे क्या करते हैं, वो जाके लेबर बोल के काम करते हैं दूसरे पास. तो एक जमींदार वर्ग है और दूसरा एक लेबरर वर्ग है, और इनके बीच में क्या होता है कि ये जब बारिश गिरता है तो ये सारे लेबर उनके गांव में चले जाते हैं, बोलते हम
लोग हमारा खेती करेंगे. Now this then brings them to a perennial cycle of poverty with no income uptick, no hope. अभी just imagine that we end up hiring one of you and we say pay some salary to you. अभी 20 साल के बाद भी वही सैलरी देंगे तो आप लोग स्ट्राइक नहीं करोगे क्या? लेकिन फार्मर्स का साइकिल उतना ही है. पिछले 10-20 साल से एक ही इनकम कमा रहे हैं, उनका इनकम बढ़ा ही नहीं है. That's why you see, agricultural growth is only 3% in the country. 3% per annum is what we are. First problem is that nobody has done the soil testing in the country. A bad soil generates a low output. A low output generates an income which is less than 30,000 rupees. Now the farmer doesn't have got any, उसके पास कोई contingency नहीं रहता, कुछ नहीं रहता. घर में एक शादी हो गई, बस पैसा borrow कर लेगा और probably there is some medical emergency, the farmer will end up borrowing the money, and you give them the first instance that are you ready to quit farming and come to the to the city. We saw what kind of urbanization is happening. The speaker in the morning basically put up a map and he basically show how Junagadh, how some Pune was and how it is looking today, and how he said if you do same for Junagadh, it will look like this. Farmers are wanting to quit farming. Can we imagine? No farmer is ready to such a. चलो मैं आपको बताता हूँ. There are so many girls in this. So if you basically find a boy and then you go home and you tell the farmer, you tell your father that, or your parents that a boy finds a girl, what happens is that you generally ask what does the partner do. So if you say, oh, he's a farmer or she's a farmer, then what happens is that immediately there is the impression of what the farming is. So as long as there is no economic benefit to do farming, what is the incentive to do farming? ये आप ऑस्ट्रेलिया में जाके बोलते हैं अरे मैं जिसके साथ शादी करना चाह रहा हूँ वो फार्मर है, वो बोलते हैं खुशी खुशी से ब्याह देंगे क्योंकि a farmer basically owns 2,000 acres of land there, and a farmer is considered in Australia and in New Zealand. Farmer is supposed to be the richest class in this entire thing. Why this happens? We conducted an in-depth study. We spent about 18 months plus in the farm and tried to understand what is the issue. So we actually, what we found out was very interesting. We found out that imagine you are a doctor and you are a heart specialist. अभी आप बैठे हो, आप ऑपरेशन टेबल पर हो और आपके पास पेशेंट आया है हार्ट सर्जरी के लिए. जैसे ही आप हार्ट के ऊपर काम कर रहे हो, सडनली आप देख रहे हो कि अरे किडनी में प्रॉब्लम आ गया. जैसे आप किडनी को ऑपरेट करने जा रहे हो, आप बोलते अरे लंग्स खींच रहा है. जैसे आप लंग्स खींच रहे हैं, बोले अरे लिवर में प्रॉब्लम है. फिर आप क्या बोलोगे? अरे ये तो मुझसे नहीं होगा. So this is called as multiple organ failure. So we thought that at one stroke, if you are going to go and say that, oh, I'm going to use technology, I'm going to use finance, I'm going to use X, it is not going to happen. And what we did inside Human Ventures is that this is what we did. We basically brought the farmers together as one community. What we did is that when these farmers came as one community, the banks got interested because banks के पास they don't have this capacity to go and source one farmer के छोटे-छोटे loans होते. Now we also got the collectors of the districts involved and we told them that why they need to do, because all their subsidies are taken away by rich farmers. We said subsidy to poor farmer के लिए, subsidy to सारा rich farmers लेके जा रहे हैं. Then the government people also, which is like the district collector and the administration also came together. And we also, what we did is that the vendors जो होते हैं ना, मतलब we use vendors for drip irrigation, IoT and all these people. We called them, we said चलो साथ में आते हैं. When all of them came together, suddenly we saw that all problems are getting addressed. So the first time in India, what we have done is that we have basically brought this to all of them together. And what we are developing is called as a community credit platform. And what actually happens is that we first test the soil. We basically put irrigation. ये irrigation डालने से ही इनका output 3x हो जाता है. मतलब बहुत दूर तक सोचने की जरूरत नहीं है. Just irrigation and 3x. And now you will ask me, ये irrigation डालने से कैसे 3x होता? जो एक फसल निकाल रहा है वो 3 फसल निकालेगा. Matter over.
And what actually happens is that you have a kharif, you have a rabi, you can do intercrop. When irrigation is available, drip irrigation is available, automatically ये चीजें हो जाती है। एक बार फार्मर को पता चलता है कि देखो, everybody is an intelligent person. The problem is that they are not put into that path. Now the farmer has started seeing money, immediately starts thinking that what more I can do. So this income output multiplier just keeps on increasing. And now you put modern farming technology, you tell them there is an abundant production, and then you bring forward linkages. Because अभी हम लोग अभी उड़ीसा गए थे, तो फिर क्या हो रहा था कि ये चार पांच खेतों में कोई पपाया कर रहा था, वो खुद पपाया काट के लेके जाके बेचता था मार्केट में। But if there are about 100 farmers, the markets will come, the wholesalers will come and buy it from the market, they will give the right price to them. अभी ये करने के लिए हमको 70 साल नहीं लगने वाले। This basically can happen within 4 to 5 years. ये तो 18 महीने में जैसे इरिगेशन लग गया, इनका आउटपुट 3x हो जाता है। एंड बाकी क्या क्या है, एक बार इनको कमाने की आदत लग गई तो उनको कोई हाथ पकड़ना नहीं पड़ता। Everybody is intelligent. So we definitely feel that this is possible. So we are an agri fintech. So what we do is that we basically ensure that we conduct financial programs for the farmer through which these farmers become prosperous. Now the problem is, आप ये सब चीज जाके फार्मर को बताओ तो फार्मर बोलेगा मतलब इतने साल से नहीं हुआ, अचानक आप लोग कैसे कर पाओगे इसको? So we basically feel that this prosperity trap is irreversible. Now trap is a very negative word, but look at it. If I am giving you a trap which is like a prosperity trap, मतलब आगे निकलते जाओगे तो आप पीछे कभी निकल नहीं सकते उससे। So like I told you, once you are driven a Honda City, you'll never go back to Maruti 800, you know. So that is the whole scenario. So abhi the farmer has to take a leap of faith where he has to jump from a poverty into prosperity, and till such time the farmer doesn't jump, we are basically going to hold the farmer's hand, and that is what we do as a part of our fintech venture. So once the farmer has earned about 10x within 12 to 18 months, they will never go back to their old standards. You know, you see their houses change, their livings change, their clothes change, their vehicles change. मतलब and farm mechanization changes. मैंने एक फार्मर को बोला था कि 6 महीने पहले बोला था आप लोग पावर टिलर लो, वो तो देख के हंस रहे थे हमको, वो बोल रहे थे मेरे पास पैसा नहीं है। So as soon as his income increase, हमने देखा तो ये लोग पावर टिलर यूज करने को शुरू कर दिए। Now what is required for this farmers, and that is where there is so much amount of opportunity. These farmers require something called as hand holding. This right advice, holding their hand for the next 3 to 5 years. एक बार उनका income 10x, 20x हो गया, so you see there is going to be, India has a potential to become another Israel. And that is what is going to happen in the next 10 to 15 years in this country. And that's what we feel, because we are working with extremely poor farmers. We work with tribal farmers on the ground in Odisha. We work with extremely poor farmers here in Marathwada. Once the farm sector has been taken care, what actually happens is that automatically the market starts coming in. Abhi, the problem I told you is that the poor quality of output, if it gets changed to good quality of output, then automatically these forward linkages happen. Abhi ये सब हमको सब करने की जरूरत नहीं, अभी automatically सब हो रहा है. Means it is not that we are or there is anybody working in isolation. Now whole ecosystem is basically building up. So many agri-techs, so many people like us who are working with farmers on financial inputs. There are so many people who are working on science inputs. It is possible. Well, let us think. Am I bluffing? Is it not? Is it possible? No. Let us take. There are two questions. There are two examples that I wanted to give. The grape farmers in Nashik are the richest. अभी ये मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं. आपको सबको मुझसे ज़्यादा पता है. All of you are agricultural students. Why these farmers are richest? Has anybody even thought about it? Because whole of Europe, January to March is the off season for grapes, and that is the time when Nashik grapes basically hit Europe, and that's why they get the highest price. कोई rocket science नहीं है. What we have done is that we have done a cropping pattern in such a kind of thing that, you know, अगर चलो मैं आपको बोलता हूँ दिवाली में मैं आपको आम बेचता हूँ, आप लोग मेरे को 700 रुपए डजन के बगैर, मैंने बोला कि मुझे 1200 रुपया डजन चाहिए आम का, आप लोग दोगे नहीं क्या? ऑफ सीजन में आम आ रहा है, ऑफ सीजन में आप बोल रहे हैं अरे आम कहाँ से आता है? If you go to a place like say Dubai or any other place in the world, 12 months you get all kinds of fruits. So where do this mangoes come from in off season? They come from South Africa, they come from Kenya, they come from the African subcontinent. Why we can't do this? It is up to you guys. If you can grow off seasonal fruits, you get tremendous amount of pricing that you can do. So what we do as a part of community platform is that first we build this community. We do soil and water conservation. We basically build irrigation for them. We do education and monitoring. We teach the farmers how to do the right empowerment. We basically tell them what is the right farming techniques and take them till the end. Till the time they get their harvest.
We do village level planning, individual level planning, and we also work on financial progression towards prosperity for the farmer. And what we do, which is very, very important, is that we source credit for the farmers. So I'm very proud to tell you that Human Ventures has secured, currently while we are working in Odisha, a loan of 5,40,000 rupees completely on an unsecured basis, completely unsecured, no security, no guarantee from the farmer. And we are doing a sericulture project worth 6 lakh rupees. And this we are giving to poor farmers who can never ever even think about, doing these loans. And how do we do it? I'll basically tell you, this is what is the product innovation and concept. Farmer goes to a bank, he doesn't have any collateral, he doesn't have any record, there is no low credit score, there is low credit score, there is nobody knows repayment capacity because he gets all his money in cash. So bank says, I cannot give you the loan. What we do is that we basically take the government subsidy and we take the other whatever collateral is available, or we take the government schemes, we augment all these things. We structure something called as a structured bank account, and what we do is that we do the disbursement on a basis where the cash doesn't come into the farmer's hand. So for example, currently we are working with 300 farmers. ये सारों के लोन के जो सैपलिंग के पैसा है, वो सैपलिंग का पैसा सीधा जाता है नर्सरी को. इनका ड्रिप इरिगेशन का जो पैसा है वो जाएगा ड्रिप इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर को. ये जो रेयरिंग शेड्स बनाएंगे सेरिकल्चर के लिए वो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को. So it is completely cashless for the farmer. So bank is assured that इनका पैसा कहीं नहीं जा रहा. So you can deliver this. So we work with partners on the ground, and you can actually see the people who have been earning 22,000 rupees per acre per annum are all getting more than 10x of what they have. And so this is the actual result. So what I'm saying is this is definitely possible. But for this, everything has to come together. Now, हमेशा सब लोग बोलते हैं अरे इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, right? Now, अभी you cannot go as startups, so you cannot go everywhere and try to get this kind of equity. Equity is very costly, and startups, not all startups get money. Where will you borrow from? So there is a huge credit pool available for the farmer. The farmer is not going and taking that. The farmer can take subsidies. The farmer can actually avail loans. We can collaborate. You can collaborate as entrepreneurs with the farmers, right? And that is where a lot of business opportunities are there. Let us see. This is a very, very interesting graph. More than 50% of the farmers have got absolutely no source of credit in this country, right? मतलब more than 50% farmer को पैसा मिलता ही नहीं है, any form, institutional form, non-institutional form, मतलब individual से भी पैसा नहीं मिलता, बैंक से तो छोड़ ही दो, right? So large farmers are the ones who are basically getting 54% of all the bank credit. They get 75% of the total bank credit and 54% of all the credit, right? So the problem is that chote farmers, so let us see what are the numbers. Here we are talking about 12 crore farmers, and there we are only talking about, say, 90 or less than probably 90 lakh farmers. So what we are telling is that there are a lot of farmers in between. So there is about 19 lakh farmers, 1 crore 90 lakhs farmers, and here about 126 million. So there are majority of farmers को तो पैसा ही मिलता नहीं है. पैसा क्यों नहीं मिलता farmers को? Why doesn't anybody give money to the farmers? Because since we are all coming from this agri background, we need to understand that rural area में banks या कोई financial institutions को काम करने की क्षमता नहीं, उनके branches नहीं है वहाँ पे. तो only bank where we work we see is that कहीं पे जाओ एक स्टेट बैंक का ब्रांच दिख जाएगा, करेक्ट? वो कितना कर पाएंगे? अभी रूरल एरियाज में एक ब्रांच में दो लोग बैठे हैं या एक आदमी बैठा है, वो सिंगल मैन ब्रांच बोलते हैं उनको. डिस्टेंसेस होते हैं, हम लोग जहाँ पे काम करते हैं मेन एरिया से लेके 30-30 किलोमीटर के डिस्टेंसेस पे है. यहाँ पे हम लोग बोलते हैं अरे यहाँ पे ब्रांच खोल दिया तो यहाँ पे लोग तो अवेलेबल है. प्रॉब्लम इज विद डिस्टेंसेस, प्रॉब्लम इज विद कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी. कोई फार्मर के साथ डील नहीं कर पाता, मतलब उनका कल्चर इनको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम लोग बोलते हैं चलो हम लोग पढ़े लिखे हैं, वी कम फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, हाउ कैन वी इंटरेक्ट विद द फार्मर. द थर्ड इज दैट अपना माइंडसेट, प्रोफेशनल माइंडसेट एंड फार्मर माइंडसेट इज स्टिल लिटिल डिफरेंट. And I don't know why it is happening, but the more I interact with farmers, I have not seen younger guys at all. एक तो बहुत बूढ़े लोग हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, या there are super young people. Where are these people in the age group of 30s to 45, which we basically say that these are the economic segment? ये एज के फार्मर मुझे दिखते ही नहीं है. हम लोग तो हजारों फार्मर्स के साथ डील करते हैं. The problem is terrain. Can you actually go to the farmer and then basically वहाँ पे गाड़ी चलती नहीं है. अभी खेत के अंदर जाना है तो 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, क्योंकि हर खेत में तो गाड़ी जाती नहीं है. So our people, and there are uncertainties.
वेदर मार्केट एक्सेस, प्राइसिंग चैलेंजेस, फाइनली इंस्टीट्यूशन बोलते हैं मेरे को इनके साथ बिजनेस नहीं करना, ठीक है, मुझे फार्म सेक्टर में काम नहीं करना, बहुत डिफिकल्ट है, राइट? So what we do is that we make this project viable for a bank, because what we do is that we, whatever the problems of the banks are, we basically do everything. बैंक के 3 प्रॉब्लम है. बैंक बोल रहे हैं फार्मर को हमने पैसा दिया तो आपको कैसा पता है कि वो पैसे जो मैंने प्लांटिंग मटेरियल के दिया उसके जगह पे उसने साइकिल नहीं खरीदा या बाइक नहीं खरीदा. हम लोगों ने हाउ वी विल टेक केयर ऑफ दैट. अच्छा ठीक है, आपको एसेट दिया है, वो एसेट बढ़ता कैसा है? So what we do is that we use technology and basically we do something called as a photo progress, wherein we tell the bank how the asset is performing, how the farm is performing, how the farmer is performing. And what actually happens is that we bring in larger people, I'm saying the larger buyers to the farm, and these people basically buy it on a non-cash basis, means they basically give money on a check basis or direct transfer. So what happens is that a farmer का financial background create होता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा loan मिलता है. Now, I'm just trying to tell you, just look at this, you know, there is a product called as Kisan Credit Card, which is basically not a very happy product because banks have completely lost money on this. So what we do is that the whole benefit comes to the farmer in a completely cashless model. आप ये देख सकते हैं कि currently this is how the farmers, ये फुलबाणी करके एक district है उड़ीसा में, you actually see these are the mulberry farms. The first kind of pictures that I have put are the mulberry farms. And you'll see in Marathwada how the mulberry farms are there. Now you just imagine if somebody is creating a mulberry farm which is so bad and they are saying that we don't get sericulture production, then who it is to be blamed for this? You know, so what we tell them is how to do it correctly. Secondly, they do this sericulture rearing. ये जो कीड़े होते हैं sericulture के, मतलब ये जो silkworms होते हैं, they rear this. So they rear this. अपने घर के अंदर rear करते हैं, बगल में कुकर का सीटी बज रहा है, वहीं पे खाना बना रहे हैं. उनको कोई पता नहीं चलता कि इसमें ह्यूमिडिटी का क्या प्रॉब्लम है, टेम्परेचर का क्या प्रॉब्लम है. फिर जो कुकुन इतना बड़ा होना चाहिए वो इतना छोटा सा हो जाता है, फिर बोलते हैं कि प्राइसिंग नहीं मिलता उसका. सो व्हाट वी टेल देम इज दैट वी डू द एंटायर एंड टू एंड हैंड होल्डिंग. सो द फार्मर इज बेनिफिटेड, ऑल द इंटरमीडिएटरीज आर बेनिफिटेड, इवन द बैंक इज बेनिफिटेड. नाउ व्हाट वी हैव डन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, wherein we have just merged 2 very large schemes for the farmer. So we have, no, ऐसा नहीं है कि बैंक के पास पैसा नहीं है या स्कीम नहीं है. So what we have done is that there is something called as Prime Minister Mudra Yojana. Now Prime Minister Mudra Yojana तो बैंक के पास पड़ा है, अभी farmer अकेला जाएगा तो they will not be able to entertain. Now the problem is that, now the issue is that the farmers cannot get together. When we come, the farmers get together and we take 300 applications to the bank. Now suddenly bank sees that there is definitely this is possible. There is something called as a Mukhya Mantri Krishi Udyog Yojana, where 50% of the project cost is given as subsidy. Now again the farmer goes and applies one by one, there is a problem. Now we bring this complete farmers together and this is the whole process how we do. So what happens is that ये सबसे बड़ा आपको पता हूँ क्या advantage है Prime Minister Mudra Yojana में, that if the farmer defaults, the bank has got a credit guarantee cover. तो बैंक का पैसा कभी डूबता नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट उनको क्रेडिट गारंटी देती है. और स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग 50% सब्सिडी. कैन देयर बी एनीथिंग बेटर फॉर द फार्मर? So this is where you require to design an ecosystem. This is definitely, we have to bring the farmers together, we have to bring the bank together, we have to bring the district administration together, we have to get the vendors, contractors, the agri-tech people, we have to do a project management, and this basically requires tremendous amount of all these people coming together. Now you understood what is the scale that we are talking about. So let me try to demonstrate one very easy thing what we are doing. आज के डेट में आपको सबको पता होगा कि बेस्ट सिल्क साड़ीज है ना उड़ीसा में आता है, करेक्ट? So what we are doing is that these weavers in Odisha who are, they buy actually yarn, ये जो धागा होता है ये वो लोग buy करते हैं वेस्ट बंगाल से. और वेस्ट बंगाल के जो लोग धागा बनाते हैं ना वो लोग कुकुन्स खरीदते हैं कर्नाटक से. अभी सोचो कहाँ से कहाँ जा रहा है. Now what we have done inside Odisha model is that we are developing a big cluster of sericulture. Now we are starting with 300 farmers, we'll move on to 5,000 farmers. Abhi, well, people were talking about what entrepreneurship you can do. There is a lot of self-help groups who are there with every district, and this is basically done under Mission Shakti. ये government का program है. All these self-help groups are given microfinance loans. In Odisha, microfinance loan is given at 0%. Can you imagine? So what we are doing is that we are getting these women together, and then we will call upon people like you who can actually become the, you can train these people or basically host these people as a self-help group or a farmer producer organization. And basically what you can do is that there is a lot of business. Everywhere there is business. And these people will buy these cocoons from farmers in Odisha,
and they will spin the yarn. So as soon as they spin the yarn, these weavers in Odisha will again buy it from self-help group in Odisha. तो आप देख रहे हैं कि ट्रेड साइकिल जो ओडिशा से वेस्ट बंगाल से कर्नाटक का सब कुछ एक स्टेट में आ गया. अभी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि ऑफकोर्स देयर आर प्राइस बेनिफिट्स, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स का पैसा बच जाता है, प्राइस डिस्कवरी हो जाता है, एंड लोकल बेसिकली इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलता है. व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, फार्मर को 2 लाख रुपए से ज्यादा पर एकड़ पर एनम कमाना है. So one of the ideas what we got is sericulture, and this is working like brilliant. Now there are a lot of people who are working with us along with this. There are agri startups working with us. There are irrigation companies who are working with us. There are borewell contractors who are working with us. There are a lot of people who are wanting to work with self-help groups. They are getting associated with us. So this is becoming like a, it is becoming like a good festival wherein all of them are coming together, or everybody is getting benefited. The bank is getting benefited. We can't see one problem where anybody has got any kind of a issue. And why this is required? Because ये सब आप हम लोग जो भी करते रहेंगे, end of the day, farmer is getting 57% of this income out of this. So can this be anything better? This is eco-friendly. This has got high employment potential, low gestation, high returns. Can there be anything better than this? And that's why we took sericulture as a first model. And what we have done is that Odisha used to be the historical silk capital of India. We have reconstructed the entire silk, cycle here in Odisha. And like I told you, the whole GDP remains within the state, and that is why there is so much of contribution that comes from the collectors and other state departments. And the bank has already given 15 crore sanction, and the total credit line that we are going to get for this within 12 to 18 months is about 100 crores. 150 farmers have been identified in 2 districts, and then as we speak, the product has already launched. So this is what we are going to do with the self-help group. So let me give you ideas on what we are trying to do. ये लोग इंडिया में ना intercropping करते ही नहीं है. They don't know what is about intercropping. I got a opportunity to go and not to go, but virtually work in Philippines through Grameen Foundation USA. So they had taken some microfinance loan, and उसमें कुछ NPA हो गया था. So they had asked me to help them to restructure this loan. अभी इन लोग अपने खेत में 1 इंच की जगह नहीं छोड़ते. अभी कोकोनट ट्री हुआ तो वहां पे क्रीपर लगाएंगे, इसका पेपर का, उसके बीच में इंटरक्रॉप करेंगे. So what we are doing is that turmeric has a GI tag. So we are doing turmeric intercrop clusters between the main plants. We are doing expansion of sericulture clusters. One thing what we are doing is that अभी ये पत्ते खाने के बाद ना इसके stems बचते हैं जो goats को खिला सकते हैं. So we are creating something called as a goatery cluster. We are also doing something called as a pineapple and pineapple, coconut and turmeric cluster. If you have, definitely you would have seen those smaller plants which is about 5 feet coconut plants. Then there we are intercropping with pineapple, because what happens is that at coastal places coconut trees grow, but there is no labor availability. So we'll have to keep something which is there. So everything requires terrific amount of research when you go and present solutions to them. Now, what are the opportunities that actually come from this entire thing? It is not that you need to start something in isolation. You can go and partner with the farmers, because the farmer has got access to 2 things for which you have not got access to. You don't have access to land, and you don't have access to finance currently. Farmer has got access to land. The farmer has got access to finance. The third thing that you don't have access to is subsidies. कि farmer को तो subsidy भी allowed है. Why don't you partner with good progressive farmers? Go and work on the farms, because you get first-hand experience on how to deal with agriculture. This is a very, very big thing. And if a farmer has got, say, 5 acres of land, and if you are able to do, say, 3 lakh rupees per acre or something, I'm saying that this is a very good thing to start, and you need not work 24/7. You can work with 5 different farmers like this. When people tell about startups, the unfortunate part is that we all look at those $1 billion valuation, we look at all these things. And somebody asked, what is the difference between a business and MSME and a startup? End of the day, it's a udyog hai, correct? All this is a part of the business. You qualified this startup, like, somebody was telling, I was giving a lecture in an MBA college, and somebody asked me, मैं एक पान पट्टी का दुकान खोलता हूँ, और फिर क्या है कि WhatsApp पे orders लेता हूँ. Will it becomes a startup? I have used technology, I have done innovation, I have done everything different. So forget all that. Let us look at what is more practical. Let us not get into theoretical things. So what it needs is that it requires absolute focus. Let us not get distracted by too many things. It requires tremendous amount of scale. मतलब
ये जो प्रॉब्लम हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, क्या ये बड़ा हो सकता है? इसको स्पीड में करना है, यू अलाउ टू डू इट इन स्पीड एंड देन इट हैज टू बी सस्टेन्ड। अभी आप कोई काम कर रहे हैं, आराम से आपको बैठे बिठाए अगर 25-30 लाख रुपए मिल रहा हो, या एंड दैट कैन एक्चुअली ग्रो टू अबाउट 1 crore of rupees, will you be bothered that whether I am becoming a unicorn or not? Of course, I'm not discouraging anybody to do that, but don't make that as your end goal. Start somewhere, understand how things have to be done. Okay, and it is not easy. If you look at this map, it is a terribly complicated model what we have developed, but end of the day it delivers results. So you, as sir Ajay sir also explained, you have to apply your mind. Nothing is easy. You will have to do a lot of pilots, go down on the ground, and then एक बार आपने decide किया ना कि मेरे को इसका solution ढूंढना है, solution कैसे भी ढूंढ के आ जाता है. But only thing is that be focused to what problem you are wanting to solve and collaborate and partner. That is the biggest thing. So where agri startups are focusing today, and this is what you would like to actually, this has been done. Many people would have spoken already. There is a satellite monitoring and agriculture, artificial intelligence. There is robotics, there is drone, there is farm mechanization, insurance hai, forward linkages hai. There is a big thing called as farmer producer organization. There is a, I don't know if you guys have seen, there is something called as a cattle and livestock management through drones. Lot of innovations are just waiting to happen at the farm sector. The only thing is that first get a first-hand experience on how to deal with farmers, partner with them, do the first step. Directly आप solutions लेके जाओगे तो we've seen a lot of people who directly take solutions to the farmer. उनका mindset समझिए farm sector में. I'm not talking about in every place where even if you're doing logistics, you understand what is the mindset of the people with whom you are working, because that is most important. And speaking in Gujarat, most of you would have come from a business family or something. You have got exposure to business, because everything that they will say is that please know what you are dealing with. Don't go with solution. First look at the problem and then find a solution towards it. So what are the emerging micro business? Sorry, I'm looking at the watch because I know that there is the next speaker waiting. So there are a lot of things that one can do. Okay, so there is like micro irrigation and solar pumps. There is so much of demand for solar pumps. आपने एक एजेंसी भी ले लिया ना सोलर पंप का और एस्टेब्लिश कर लिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम इनकम आपका साल का 35 लाख से 40 लाख के नीचे नहीं होगा, क्योंकि देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ सोलर पंप्स इन द कंट्री. You find if there is anything to do, the first thing that you can touch is irrigation, and the farmer will be welcoming you, because why the farmer उसके जेब से पैसा जाता ही नहीं है. इरिगेशन के लिए, सोलर पंप्स के लिए बहुत सारी सब्सिडीज अवेलेबल है. The problem is that the farmer is not getting the right solution. Second, cluster based farming. What you can do is that you can bring a lot of farmers together and collaboratively work, and you say that I can give you planting material, and आप एक business model बनाओ एक 20-30 फार्मर्स के साथ, कहीं से भी, मतलब wherever you go you get exposure, you find good farmers, progressive farmers, you make clusters with them. You can do a lot of things. Can you do intercropping management through leases? फार्मर को बोलो आप जो उगा रहे हो ना आप वो उगाओ, I'll come and collaborate with you and let us, what we can do is that intercrop के लिए मुझे जमीन दे दो, we can do distribution, what we can do is that we can do revenue sharing among each other. 13 लाख रुपया लगता है कोल्ड स्टोरेज में. इंडिया में आज के डेट में कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल ही नहीं है. दैट इज वेयर वी आर सेइंग देयर इज नो फॉरवर्ड लिंकेजेस. मतलब अभी ये जो आपको पता है कि देयर इज ये बहुत सारी वेराइटीज की मिर्ची आता है, या देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. If you are able to put cold storages, and cold storages doesn't mean that a huge cold storages, there are also alpha cold storages which are a smaller thing. There are micro processing units, there are something called as packaging unit. Can I tell you how simple it is? अभी ये पपाया को आप पेड़ से तोड़ते हो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये लोग उसको न्यूज़पेपर में बांधते हैं. कितने बार आप लोग देखते हैं, तो न्यूज़पेपर में बांधने से क्या होता है, वो ब्लैक प्रिंट जो होता है ना वो पपाया के ऊपर लग जाता है. So what happens is that as soon as somebody sees papaya with a black color spot, immediately the price falls. So what is the alternative things that just papaya को तोड़ो, white paper में wrap करो और आप उसको box कर देना. That itself is basically going to increase the cost, the price of the papaya by 3 rupees in the market. Can you imagine? It is so simple. मतलब इसमें क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत है? मैं बोल रहा हूँ इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे. So there is something called as micro poultry. Micro poultry मतलब जहाँ पे existing farms है वहाँ पे आप देसी चिकन कर सकते हो, जहाँ पे क्या हो जाता है कि ये इन लोगों को फीड देना नहीं पड़ता, ये फार्म में जो कीड़े पड़े होते हैं उसको साफ करते हैं. करेक्ट. देयर इज माइक्रो प्रोसेस, सॉरी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैटल फार्म कार्व आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग फार्म. आपने अगर 100 फार्मर्स को साथ में लेके आए और उनको बस बोले कि 2-2 कैटल रखना, 2-2 गाय रखना,
तो उनका क्या है कि बायो फर्टिलाइजर का काम हो जाता है, काउ यूरिन से पेस्टिसाइड बनते हैं, और तो दूध तो अवेलेबल ही है. So all these things can be done. There are a lot of new product innovations that can be done. I think ये तो एक पूरा दिन का सेशन है कि ये ना यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं. So that is called as farm to fork businesses, which is actually having business to business and directly business to consumer as well. So there is फार्म में बहुत सारा वेस्ट होता है, उसको हम लोग फूड प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं. देर इज प्राइसिंग एडवांटेज, फॉरवर्ड लिंकेज दैट इज अवेलेबल. सो देर इज इतना ज्यादा गैप्स है फार्मिंग सेक्टर में कि देर आर ओनली अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. That is why we feel that this is going to be the next growth engine for India. Thank you so much. With this, what I'll do is that I'll just end my slides, and then if there are any questions, very happy to take. Thank you so much, Mr. Karthik Iyer. Really, it was very wonderful and informative presentation. Congratulations for that also. And now I would like to request our students, if you are having any query with regard to the theme or information provided by Mr. Karthik Iyer. Is there any questions? No. Okay. Sir, you have demonstrated one model in Odisha. So I would like to know that is there any model you are working with regard to this food processing or post-harvest management? Yeah. So what we have done is that what comes out in as a part of, we work in sericulture. So what has happened is that the cocoons which basically come out or at a post production, what we have done is that immediately we have formed the self-help groups who are going to basically purchase this from the farmers, and then they are going to do the reeling as a part of the yarn, and then they are going to sell it to the weavers. So what we have done is we have done completely end to end, right from mulberry leaf to a silk sari. This whole thing is mapped, and that's why we are saying that there is price discovery, there's complete transparency with regard to how this whole thing will work, and that is why we are able to go and convince the farmers and convince the bank and convince the collectors. And ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन क्या है कि एक बार हो गया तो this becomes like a nice model that can be replicated. Okay, sir. Thank you. So if you don't have any queries, students, Mr. Karthik, I would like to convey the deep gratefulness to you for presenting such a nice presentation. Thank you so much, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. So now, moving toward the end of today's one-day program, we will be witnessing Amol R. Patil sir, NIPAM officer, Patent Office, Government of India from Mumbai. He will be delivering presentation on intellectual property rights, which is very important topic, and he is already joined the session. So Amol sir, am I audible there? Yes, ma'am. You are very much audible. Am I audible? Yes. So switch over to you, sir. Okay. So, ma'am, I am going to share my screen. Please confirm, is it visible to you? Sure, sir. Is it visible, ma'am? Yes, it's visible, sir. Okay. Now, first of all, I would like to thank your university for inviting us for such a wonderful, for giving such a wonderful opportunity to present the various intellectual property rights. Before starting that, I have to say something about the mission that Government of India has launched this year. As we all know, we are celebrating 75 years of our independence. So under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Government of India has launched one mission, and that mission is named as NIPAM. Okay, so NIPAM stands for National Intellectual Property Awareness Mission. Okay, so the main objective of launching this mission is that we have to aware the students regarding various intellectual property rights that we are having in our country. Okay, so let's start with our today's webinar. Okay, so today's webinar is on intellectual property rights. So IPR basically is a collective term for intellectual property rights, and these are kind of legal rights. Okay, and these rights are resulting whenever you come across or whenever you create any whenever you come across any intellectual activity, whether you are working in the industrial field or scientific or literary or artistic, whatever may be your field,
But whenever you come across any intellectual activity, then you can protect that activity in the form of intellectual property rights. Then what is the meaning of intellectual activity? Okay, so intellectual activity means any creative idea you are getting in, whatever creative idea you are getting in your mind, when you convert that idea or when you express that idea using certain resources, then such activities can be called as intellectual activities. Okay, and those activities can be protected in the form of intellectual property rights. As we all know, properties are basically classified into two major categories. First category is tangible one and second one is intangible. So tangible means the properties which we can measure, like in tangible also we are having two parts, like movable ones and immovable ones. Okay, movable means which we can move from one place to another, like cars, bikes, gadgets. So whatever we are having, we can call it call it them as a movable properties. Whereas immovable means buildings, lands, plots, whatever the properties which we cannot move from one place to another, these properties can be called as immovable properties. Okay, so in our day-to-day life, we are more focusing on the tangible properties. Okay, so properties which we can see by our naked eyes, or properties which we can touch by our hand, or the properties which we can measure. Okay, so such properties we are more focusing in our day-to-day life. But there is another property or another aspect of a property which we can create with the help of our brain. Okay, so as a human, as a mankind, we are having a precious gift by God. We have got a precious gift by God, and that gift is called as a brain. Okay, and in our brain we are getting certain creative ideas. Okay, so with the help of that creative ideas, when we express that creative ideas, after expressing those creative ideas, we can create an intellectual property. Okay, so intellectual property is a kind of intangible in nature. Intangible means the properties which we cannot measure, or the properties which you cannot see by our naked eyes, or the properties which you cannot touch by our hands. Okay, so intellectual property is a kind of intangible in nature. But though it is intangible in nature, but it can lead you to the creation of tangible assets also. For example, if you have developed any machine, okay, so you can measure the dimensions of that machine, or you can touch that machine, or you can see that machine. Okay, so similarly, though it is a kind of intangible in nature, intellectual property is intangible in nature, but it can lead you to the creation of the tangible assets also. Okay, so it is further categorized in the industrial property, which we are going to discuss patents, designs, trademarks, and GI. Whereas copyright covers the literary work, artistic works. Okay, so we are going to discuss in detail. Okay, but before that, what is the definition of intellectual property? Okay, so as we all know, we are having a brain. Okay, and in our brain we are getting certain creative ideas. Okay, so when we convert or when we express that creative ideas of our brain, and if that idea is having certain commercial value, then we can call it as a intellectual property. Okay, so it is like any other property. For example, if you are having a house, then what are the rights you are getting with your house, that you can rent that house, you can sell it out. Okay, you can mortgage that. Okay, similar rights you are getting with intellectual properties also. Okay, it is an asset. It can be bought, it can be sold, it can be even licensed. Okay, it can be exchanged like any other form of a property. These are the 7 intellectual properties which we are going to discuss in our today's session. So out of these 7 intellectual properties, patents we are going to discuss at last. Okay, because we are going to discuss patents in quite detail. Okay, so remaining like designs, trademark, GI tags, we are going to discuss one by one. Before that, what is the need for IPR? So intellectual property rights, in Hindi we can call it as a बौद्धिक संपदा अधिकार. Okay, or बौद्धिक संपदा हक. So इनकी जरूरत क्या है? Before we are discussing the various intellectual property rights, what is the need for intellectual property right? As we all know, technologies are changing very rapidly. For example, Samsung launches one feature in their mobile phone. Immediately, another mobile companies are working on that feature and try to launch the advanced version of that features. Okay, so if you have created such a new technology, and if you have not protected the technology, then anyone can copy your technology. Okay, so that is why it is very necessary to protect your technology. Okay, then next, for example, if you want to launch a product in market, अगर आपको मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो पहला स्टेप क्या करते हो आप? पहला स्टेप होता है कि आपको एक मार्केट रिसर्च करना पड़ता है या मार्केट सर्वे करना पड़ता है. मार्केट सर्वे में आपको बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसकी मार्केट में सही में जरूरत है क्या नहीं, अगर जरूरत है तो उसका टारगेट कस्टमर कौन होगा, ऐसे बहुत सारे इनपुट्स आपको मिलते हैं मार्केट सर्वे से. So after doing market survey, you have to do research and development. So research and development में आप क्या करते हो?
उस प्रोडक्ट के सारे पैरामीटर्स आप स्टडी करते हो, उस प्रोडक्ट के आप डिजाइंस डायमेंशंस आप स्टडी करते हो, ये सारे फाइनलाइज होने के बाद आप क्या करते हो, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो. वंस यू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट एंड बिफोर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट इन मार्केट यू हैव टू डू सर्टेन काइंड ऑफ मार्केटिंग. आपको थोड़ा बहुत मार्केटिंग भी करना पड़ता है और फाइनली मार्केटिंग करने के बाद आप वो प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हो. सो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए फ्रॉम मार्केट सर्वे टू मार्केटिंग, इन ईच एंड एवरी स्टेप यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम. Okay, you have to invest your money, you have to invest your manpower. Okay, so all these things are invested in each and every step. And जब आपने वो फाइनली वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, थोड़े दिन बाद आपको पता चला कि सेम प्रोडक्ट किसी और ने भी लॉन्च किया है और सेम आपका प्रोडक्ट किसी ने कॉपी किया है. तो आप जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उसमें, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो आपने मैन पावर इन्वेस्ट किया है, वो सारा वेस्ट हो सकता है क्योंकि आपने जो टारगेट सेट किया रहता है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे. ओके, सो to avoid such thing, to prevent your creative work to get copied by someone else, you have to protect your creative work at the initial stage only. जब आपका प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में रहेगा तभी आपने उसको पेटेंट फाइल करना है और उसके इमीडिएटली आफ्टर फाइलिंग पेटेंट यू कैन इमीडिएटली लॉन्च द प्रोडक्ट इन मार्केट. और उसके बाद भी अगर कोई आपका प्रोडक्ट कॉपी करता है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हो. ओके, नाउ इन द ईरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, अभी इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है कि उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और उसके बहुत सारे लॉसेस भी हैं. जैसे कि आपने आपका क्रिएटिव डाटा कहीं पे स्टोर किया रहता है, ओके, तो उसका चोरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. तो आपका क्रिएटिव डाटा स्टोरी होने से आपको जो नुकसान है वो अवॉइड करने के लिए आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में उसका प्रोटेक्शन लेना जरूरी है. ओके, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेन, बिकॉज आपके ब्रेन में जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं वो क्रिएटिव आइडियाज आप रिसोर्सेज का यूज करके जब एक्सप्रेस करते हो, तो रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि इंटरनेट हो गया, टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, आपकी लैबोरेटरीज है, आपके इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सारे आपको रिसोर्सेज के फॉर्म में काम आते हैं. देन लेबर मींस आपको मैन पावर की जरूरत पड़ती है. सो आप जब ये तीनों चीजें कंबाइन करते हो, creative ideas from your brain, then resources and then manpower, then whatever output you are getting will be in the form of intellectual property. Now this is just the basic about the intellectual property. अभी तक हमने बौद्धिक संपदा अधिकारों के जस्ट बेसिक्स में अपना बात किया है. अभी यहाँ से आगे हम एक एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को थोड़ा डिटेल में देखते जाएंगे. ओके, सो आपको एक I am requesting all the participants to listen carefully because we are going to discuss each and every intellectual property. Okay, so first intellectual property is copyrights. अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई क्वेरी होगी तो आप at last of the session आप पूछ सकते हो. Okay, so first intellectual property is copyright. So आप you are using various kinds of text books or reference book. Okay, अगर आप आपके बुक का सेकंड पेज देखोगे, सेकंड पेज पे आपको ऐसा सिंबल दिखेगा. Okay, so this symbol signifies that this work is copyrighted and this work is protected under copyright. Okay, so copyright का मतलब ऐसा होता है क्या कि copyright मतलब आप कुछ भी कॉपी कर सकते हो, तो उसका मतलब ऐसा नहीं होता है. copyright का मतलब होता है कि अगर ये क्रिएटिव वर्क किसी के नाम पे कॉपीराइट किया हुआ है तो उसके परमिशन के बिना हम उनका वर्क कॉपी नहीं कर सकते हैं. ओके, सो कॉपीराइट इज गिवन इन 6 फील्ड्स. ओके, जो 6 फील्ड्स है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, कॉपीराइट गिव्स द क्रिएटर ऑफ ओरिजिनल वर्क एक्सक्लूसिव राइट्स टू इट यूजुअली फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. जो इसका ओरिजिनल क्रिएटर होता है या जो उसका ओरिजिनल ऑथर होता है, इसको एक कॉपीराइट दिया जाता है और इसका लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है. जैसे कि अगर आपके कॉपीराइट डज नॉट कवर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स, ओनली द फॉर्म और मैनर इन व्हिच दे आर एक्सप्रेस्ड. अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, जब तक वो इंफॉर्मेशन और आइडिया आप एक्सप्रेस नहीं करते तब तक उसको प्रोटेक्शन आप नहीं ले सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपके दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैंने एक गाना बनाना है. ओके, एक आपके दिमाग में आइडिया ऑफ अ सॉन्ग आपके दिमाग में आता है, लेकिन जब तक आप वो सॉन्ग के लिरिक्स पेपर पे नहीं लिखते या जब तक वो सॉन्ग आप साउंड रिकॉर्डिंग के फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करते तब तक आप उस पे कॉपीराइट नहीं ले सकते. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास आइडिया है या आपके पास इंफॉर्मेशन है तो हैविंग आइडिया इज नॉट इनफ. यू हैव टू एक्सप्रेस दैट आइडिया. अनलेस एंड अंटिल यू एक्सप्रेस दैट आइडिया यू कैन नॉट protect it. Okay, so there are certain related rights also, like rights of performers, then rights of producers, then rights of broadcasting organizations. So these are rights that we are going to discuss in detail. So the owner of copyright has rights not only in the original work but also in the creative work that is derived from the original work. इसका अगर आपको बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, बराबर. तो 3 इडियट्स मूवी ये चेतन भगत की एक नोवेल पे बेस्ड है, बराबर.
तो चेतन भगत का जो नॉवेल है, चेतन भगत ने उसको कॉपीराइट किया था. सो creative work, that means created by Chetan Bhagat, that is in the form of novel and he has got a copyright over it. Okay, so उसके बेसिस पे अगर आगे जाके और कोई क्रिएटिव वर्क डिराइव कर रहा है तो उस क्रिएटिव वर्क में भी उस ओरिजिनल ऑथर के सर्टेन राइट्स होंगे. ओके, जैसे कि अभी चेतन भगत के नॉवेल के बेसिस पे एक 3 इडियट्स नाम की मूवी बनी थी. सो 3 इडियट्स नाम की मूवी में भी जो उसका प्रोड्यूसर है, उस प्रोड्यूसर को सर्टेन राइट्स, सर्टेन क्रेडिट्स चेतन भगत को देना होगा. ओके, सो फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कोई इंग्लिश नॉवेल है, अगर हम इंग्लिश नॉवेल का गुजराती अनुवाद है या मराठी अनुवाद हम उसका रीड करते हैं तो उस मराठी अनुवाद या हिंदी अनुवाद या गुजराती अनुवाद में भी जो ओरिजिनल ऑथर होता है इंग्लिश नॉवेल का, उसके सर्टेन राइट्स होते हैं. ओके, so these are the 6 fields in which copyright is granted. Okay, so copyright is granted in literary, films, dramatics, musical, artistic and sound recording. ये 6 fields में आप copyright कर सकते हो. जैसे कि अभी पहला फील्ड है लिटरेरी वर्क. सो बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होता है या अवेयरनेस के ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस उनकी सर्टेन मिथ्स या मिसकंसेप्शंस होते हैं. जैसे कि बहुत सारे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, हमसे पूछते हैं, ना कि स्टूडेंट्स, इवन फैकल्टीज आल्सो आस्किंग अस, सर मैंने एक किताब लिखी है, उसको मुझे पेटेंट करवाना है. बट बुक्स कैन नॉट बी पेटेंटेड बिकॉज बुक्स इज अ पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क. ओके, so if you have created books or if you have created newspapers, question papers, catalogs, dictionaries, then lectures if related to writing, computer software, this is very important. In India, computer softwares, apps, computer programs, codings, algorithms, these things are not patentable in India. If you want to get protection over it, you have to protect them in the form of copyright only. Then lyrics of a songs. So आपको अगर ये सब सारी चीजें प्रोटेक्ट करनी है तो आप उसको कॉपीराइट के फॉर्म में ही प्रोटेक्ट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक वर्क. अभी आर्टिस्टिक वर्क क्या होता है? सो जैसे कि पेंटर है वो पेंटिंग बनाता है, या स्कल्पचर, डिजाइनर है वो वेरियस काइंड्स ऑफ डिजाइनर क्लोथ्स बनाता है. देन जैसे अपने सिविल इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो वेरियस काइंड्स ऑफ मैप्स, प्लान्स बनाते हैं. जैसे मूर्तिकार होते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ मूर्तिज बनाते हैं. देन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आर देयर, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स आर देयर, इवन द एनग्रेविंग्स जो रॉक्स पे एनग्रेविंग किया जाता है, या इवन आप जब बाहर जाते हो फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ, आप जब सर्टेन फोटोज क्लिक करते हो उस फोटोज पे भी आप आर्टिस्टिक वर्क के फॉर्म में कॉपीराइट ले सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट इज म्यूजिकल वर्क्स एंड ड्रामेटिक्स. अभी म्यूजिकल वर्क्स में कौन सी चीजें आती है? म्यूजिकल वर्क्स में एक तो आप साउंड रिकॉर्डिंग के फॉर्म में उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, या तो दिस काइंड्स ऑफ ग्राफिकल नोटेशंस के फॉर्म में आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो. या नेक्स्ट इज ड्रामेटिक वर्क. सो ड्रामेटिक्स में क्या होता है? जो भी ड्रामा रिलेटेड काम होता है, जैसे कि प्लेज हो गए, रिसाइटेशंस हो गए, कोरियोग्राफिक वर्क हो गया, इवन आप जो आपके एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करते हो तो उसको भी आप कॉपीराइट ले सकते हो. देन नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्टर राइट. अभी ये ब्रॉडकास्टर राइट जो है ये ब्रॉडकास्टिंग चैनल या ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं. जैसे कि कपिल शर्मा शो आप देखते हो सोनी टीवी पे. ओके, जैसे कि अभी आईपीएल आप देख रहे हो हॉटस्टार या स्टार स्पोर्ट्स पे, बिकॉज these channels are having its broadcasting rights. Okay, so अगर जैसे कि अभी आईपीएल है, आईपीएल अगर स्टार स्पोर्ट्स पे चल रहा है या हॉटस्टार पे चल रहा है, अगर किसी दूसरे चैनल उसको दिखाना चाहेगा सर्टेन फुटेज, जैसे न्यूज चैनल्स में हम देखते हैं कि कल जैसे आरसीबी हार गया तो उस किसी चैनल में, जो न्यूज चैनल में जब वो दिखाएंगे फुटेज उस आईपीएल का, तो उसमें अगर आप नोटिस करोगे तो एक कॉर्नर के स्क्रीन के एक कॉर्नर में सोर्स लिखा होता है या क्रेडिट लिखा होता है. ओके, या मराठी में अगर आप देखोगे तो सौजन्य लिखा होता है. सो इसका मतलब क्या होता है कि जिस चैनल के पास इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, उनकी परमिशन के बिना हम उनका कोई भी फुटेज दिखा नहीं सकते. ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग राइट्स. और इसका जो टर्म होता है ये 25 साल के लिए होता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. जैसे कि न्यूज पर्पस के लिए या स्टडी पर्पस के लिए या एकेडमिक पर्पस के लिए आप उसका फुटेज आप दिखा सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट इज परफॉर्मर राइट. ये परफॉर्मर राइट, देन हु आर द परफॉर्मर्स? परफॉर्मर कौन होते हैं? सो एक्टर कैन बी अ परफॉर्मर, देन सिंगर, म्यूजिशियन, डांसर, एक्रोबैट, जगलर, whoever is performing on floor will get a performer's right. Okay, and these rights are valid for 50 years. So we have completed the copyright. So copyright registration is not mandatory. मतलब क्या है? कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम आपको हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपका जो भी क्रिएटिव वर्क है उसको आपको कॉपीराइट करना, दो इट इज नॉट कंपलसरी बट इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल. बिकॉज इफ देयर आर सर्टेन, इफ समवन हैज कॉपीड योर literary work, then what is the proof you are having that this literary work originally belongs to you? Okay, so for such a proof purpose you should
protect or you should register your copyright. Okay, and then next is इंडस्ट्रियल डिजाइन. सो इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होते हैं कि जब आप कोई एक आर्टिकल डिजाइन करते हो, सो आर्टिकल कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स है, वॉचेस है, ज्वेलरीज है, फैशन डिजाइनर्स जो वेरियस डिजाइनर क्लोथ्स डिजाइन करते हैं, देन लग्जरी आइटम्स है, इंडस्ट्रियल मेडिकल इंप्लीमेंट्स है, हाउसवेयर, फर्नीचर. सो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल जो आप जब डिजाइन करते हो और उस आर्टिकल का एक्सटर्नल शेप और एक्सटर्नल लुक और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ दैट आर्टिकल जब आप फोकस करते हो, तो उस आर्टिकल की जो एक्सटर्नल डिजाइन है आप उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हो. सो इंडस्ट्रियल डिजाइन इज नथिंग बट अ ऑर्नामेंटल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल. ओके, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ 3D और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ 2D. जैसे कि अपन टूथब्रश यूज करते हैं. ओके, जो टूथब्रश पे आप ग्रिप के लिए एक प्रोजेक्शंस दिए रहते हैं उसमें. ओके, सो दिस काइंड्स ऑफ 3D फीचर्स आल्सो यू कैन design and you can get a protection in the form of industrial designs. Like so it is related to shape, configuration, pattern और ornamentation of a article. Okay, so जैसे कि यहाँ मैंने वाटर बॉटल्स का एग्जांपल दिया है. ये अगर ऊपर की लाइन आप देखोगे तो यहाँ सारी एक लीटर की वाटर बॉटल है, लेकिन हर एक बॉटल का शेप डिफरेंट है, हर एक बॉटल का डिजाइन डिफरेंट है. सो जब भी आप कोई नया आर्टिकल डिजाइन करते हो तो आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि जो मैं डिजाइन करने जा रहा हूँ इट शुड बी यूनिक. ओके, ये पब्लिक में ऑलरेडी नहीं होना चाहिए, मतलब आपने किसी और का डिजाइन कॉपी नहीं करना चाहिए. ओके, एंड इट शुड बी अपीलिंग टू द आई ऑफ कस्टमर. मतलब जब ये आर्टिकल आप मार्केट में बेचोगे तो इट शुड बी अपीलिंग टू द आई ऑफ कस्टमर. मतलब आपके आर्टिकल की डिजाइन को देखते ही कस्टमर्स अट्रैक्ट होने चाहिए. इट शुड बी सच अपीलिंग. ओके, then these are the various examples like bum chairs, then tetra packs, then cycle, then glass bottle. All these things you can design, and the design of these articles you can protect in the form of industrial designs. Okay, so जो article हम सेट में यूज करते हैं, जैसे सोफा हम हमेशा सेट में लेते हैं, जैसे 3+1+1 हो गया, या क्रॉकरी आइटम्स हम हमेशा सेट में खरीदते हैं, जैसे ज्वेलरी हम सेट में खरीदते हैं. जो आइटम्स हम सेट में खरीदते हैं या जो आइटम सेट में बेचे जाते हैं उस आर्टिकल्स का डिजाइन आप सेट ऑफ आर्टिकल्स में प्रोटेक्ट कर सकते हो. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द इंडस्ट्रियल डिजाइंस. देन नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क. सो ट्रेडमार्क क्या होता है? अगर मैंने आपको पूछा कि ये कौन से ब्रांड का लोगो है, ये कौन से ब्रांड का, आप इमीडिएटली आंसर कर दोगे. आप बोलोगे सर दिस इज ऑफ नाइकी, दिस इज ऑफ एडिडास, दिस इज ऑफ प्यूमा, दिस इज ऑफ मैकडी, दिस इज ऑफ पिज्जा हट, दिस इज ऑफ डोमिनोज. सो आप इतना इजीली कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो? बिकॉज दीज ब्रांड्स have created image in market. इन ब्रांड्स ने मार्केट में एक आइडेंटिटी बनाया होता है, इन ब्रांड्स ने मार्केट में एक इमेज बनाया होता है. ओके, सो आपको भी अगर कभी ऐसा इमेज मार्केट में बनाना है, यार आपको भी कभी अभी मार्केट में एक ब्रांड बनाना है, तो आप उसको ट्रेडमार्क के हेल्प से बना सकते हो. ओके, सो ट्रेडमार्क का डेफिनेशन क्या बोलता है? इज अ साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइजेस. मतलब एक एंटरप्राइज की सर्विस और प्रोडक्ट से दूसरी एंटरप्राइज की सर्विस और गुड्स को डिस्टिंग्विश करने का जो काम है ये ट्रेडमार्क करता है. ओके, जैसे कि अभी आप मार्केट गए, ओके, और आपको प्यास लगी, तो आप क्या जब पानी खरीदते हो तो आप सीधा शॉपकीपर के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि एक बिस्लरी देना. तो आप बिस्लरी क्यों मांगते हो? जैसे कि आपको टूथपेस्ट खरीदना होता है तो आप सीधा बोलते हो कि एक कोलगेट देना. तो आप कोलगेट क्यों प्रेफर करते हो? बिकॉज दीज ब्रांड्स हैव क्रिएटेड आइडेंटिटी इन मार्केट, दीज ब्रांड्स हैव क्रिएटेड सर्टेन इमेज इन मार्केट. सो इमेज क्यों क्रिएट की है इन्होंने? इट मे बी ड्यू टू देयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और इट मे बी ड्यू टू देयर क्वालिटी ऑफ सर्विस. ओके, सो ऐसा अगर आपको ब्रांड क्रिएट करना है, अगर कल जाके आप कोई कैफे खोल रहे हो या कल जाके आप कोई शॉप खोल रहे हो, वो शॉप के लिए आप जो नाम दे रहे हो या कोई आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट का जो नाम है उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप उस ट्रेडमार्क के फॉर्म में कर सकते हो. तो बस आपके नाम ही प्रोटेक्ट कर सकते हो क्या? तो नहीं, आप नाम के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हो. जैसे कि नाइकी ये क्या है? इनका ब्रांड नेम हो गया. ओके, इसके साथ इन्होंने लोगो भी प्रोटेक्ट किया है, इसके साथ इन्होंने एक टैगलाइन भी प्रोटेक्ट किया है. तो आप भी ऐसे कर सकते हो. जैसे एलजी का लोगो, ये ब्रांड नेम हो गया, ये एलजी का लोगो हो गया, ये एलजी की टैगलाइन होगी. सो आप ऐसे बहुत सारी चीजें प्रोटेक्ट कर सकते हो. तो कौन सी चीजें आप ट्रेडमार्क में प्रोटेक्ट कर सकते हो? सो जैसे आपका एक ब्रांड नेम है या टैगलाइन है. देन सर्टिफिकेशन मार्क्स. सर्टिफिकेशन मार्क्स कौन से होते हैं? जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट अगर हम यूज करते हैं तो उसमें एक ISI मार्क होता है. जैसे आप ज्वेलरी यूज करते हैं तो उसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के कुछ मार्क्स होते हैं. ओके, सो ऐसे मार्क्स को हम बोलते हैं सर्टिफिकेशन मार्क. देन साउंड मार्क. अगर आपने ब्रिटानिया का एड देखा होगा तो उसमें एक लास्ट में आवाज आती है, टिंग टिंग टिडिंग. सो दिस काइंड्स ऑफ मार्क्स आर कॉल्ड एज साउंड मार्क्स. ओके, सो सच साउंड मार्क्स आल्सो यू कैन प्रोटेक्ट. देन लोगोस हो गए, ओल्ड प्रैक्टिस स्मेल्स हो गए, देन मूविंग मार्क्स. ऑल दीज थिंग्स यू कैन प्रोटेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स. ये बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे रिलायंस का है, टाटा का है, कोको कोला, ओलंपिक्स,
IBM, ISI, Bisleri. These are forms of the marks. Okay. So जब आप ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आपने फॉर एग्जांपल एक कैफे खोला, उस कैफे के XYZ करके आपने नाम दिया, ओके, और उसका मार्क आपको अभी कॉपी प्रोटेक्ट करना है सो दैट दूसरा कोई उसको कॉपी नहीं कर सके। इसलिए आप जब एप्लीकेशन फाइल करते हो तो एप्लीकेशन फाइल करते टाइम आपको दो चीजें ध्यान में, बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। उसमें से चीजें ऐसी होती है कि जो आपका मार्क है इट मस्ट बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, ओके, इट मस्ट बी डिस्टिंक्टिव एंड डिस्टिंग्विशेबल, ओके, इट मस्ट नॉट बी डिस्क्रिप्टिव। जो दो इन अर्लियर स्लाइड आई हैव एक्सप्लेन दैट यू कैन प्रोटेक्ट अ टैगलाइन आल्सो, जैसे कि मैंने बोला था कि आप एक टैगलाइन भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो टैगलाइन डिस्क्रिप्टिव नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे एक सीधा पैराग्राफ आप लेके आए तो ऐसे नहीं चलेगा, एक स्मॉल शॉर्ट एंड स्वीट ऐसे, और एक कैची सी ऐसे टैगलाइन होनी चाहिए, जैसे स्वीट एंड टेस्टी हो गया, ऐसे बहुत सारी सिंपल और कैची सी टैगलाइन आपकी होनी चाहिए। देन इट मस्ट नॉट बी डिसेप्टिवली सिमिलर टू नॉन ब्रांड्स। मतलब क्या, जो ब्रांड्स मार्केट में ऑलरेडी है, जैसे कि मार्केट में एडिडास नाम का ब्रांड ऑलरेडी है, अगर आप एबीबास लेके आओगे तो आपका एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे नाइकी ऑलरेडी मार्केट में है, आप अगर नाइसी लेके आओगे तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। सो आप जब भी एक नया ब्रांड या जब भी आप एक नया मार्क लेके आते हो, सो इट शुड बी यूनिक, इट शुड नॉट बी डिसिप्लिनली सिमिलर टू नॉन ब्रांड्स। और उसमें आपके ट्रेडमार्क का जो एप्लीकेशन है उसमें कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, आपको अवॉइड करना है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। जस्ट फॉर नाउ आई एम जस्ट गिविंग 2-3 एग्जांपल्स। जैसे हो गया आगरा का पेठा है, देन कोल्हापुरी चप्पल है, देन पैठनी साड़ी है, नासिक के ग्रेप्स है, जलगांव के बनानाज है, सो इन नागपुर के ऑरेंजेस है, इन सारी चीजों को बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। सो आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन में जीआई टैग्स का मेंशन नहीं होना चाहिए। देन डीटीज, जैसे आपने देवी देवताओं के फोटोज, नाम, नेशनल लीडर, पॉलिटिकल लीडर्स, हीरो, सिंबल, लाउडरी वर्ड्स, ये सारी चीजें आपको आपके ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन में अवॉइड करनी है। जिस दिन आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दोगे उसी दिन से आप आपके दुकान पे टीएम या आपके ब्रांड नेम के नेम पे टीएम ऐसे लिख सकते हो, ओके। और जैसे ही आपका ट्रेडमार्क हमारे साथ मतलब पेटेंट ऑफिस या ट्रेडमार्क ऑफिस के साथ रजिस्टर हो जाएगा, आप उस टीएम को आर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसका एज पर कन्वेंशन यू हैव टू राइट दिस थिंग्स बिकॉज इट मे डिटर द पोटेंशियल इन्फ्रिंजर। जैसे कि आपका ब्रांड, अब अपन क्या सोचते हैं कि यार मैंने तो अभी दुकान खोली, कौन मेरा नाम कॉपी करेगा, कौन मेरा ब्रांड कॉपी करेगा। बट क्या होता है ओवर द ईयर्स आपका ब्रांड एक फेमस हो जाता है, आपको एक आइडेंटिटी मिल जाती है, उसके बाद बहुत सारे लोग आपका ब्रांड कॉपी करने लग जाते हैं। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम डे वन यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ब्रांड नेम, ओके। सो ये था ट्रेडमार्क के बारे में। नेक्स्ट इज जीआई टैग्स, ओके, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस। ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे बासमती राइस ऑफ पंजाब है, दार्जिलिंग टी है, कांचीपुरम सिल्क है, अल्फोंसो मैंगो है, नागपुर ऑरेंजेस, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, आगरा पेठा, ओके, ये सारी जीआई टैग्स की एग्जांपल्स है। सो जीआई टैग का डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज अ साइन यूज्ड ऑन अ गुड्स दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन एंड possesses qualities or a reputation that is solely due to the place of origin। मतलब क्या है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे गुड्स कुछ एरियाज में फेमस होते हैं। वो फेमस होने के एक तो उनके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो उनमें जो क्वालिटीज है वो यूनिक होती है, या तो उनको एक रेपुटेशन होता है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल है, वो कोल्हापुरी चप्पल का एक रेपुटेशन क्यों है कि वो जो लेबर्स है, वो जो चप्पल मेकर्स है, वो इतने सालों से उसको एक स्किलफुल लेबर्स वो बना रहे हैं, इसलिए उसका एक रेपुटेशन है। जैसे कि नागपुर ऑरेंज है, उसमें एक क्वालिटीज है, जैसे उसका टेस्ट एकदम यूनिक, ऐसे स्वीट सा टेस्ट है उसका नागपुर ऑरेंजेस का। सो ऐसे प्रोडक्ट्स अगर आपके एरिया में है तो उसको आप जीआई टैग में रजिस्टर कर सकते हो। सो जीआई टैग में रजिस्टर करने का फायदा क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक ग्लोबल मार्केट ओपन हो जाता है, उसको एक बड़ा मार्केट ओपन हो जाता है। जैसे कि अभी आपको अंगूर खरीदने होते हैं, सो अगर आप मार्केट में गए और वहां पे अगर कोई नासिक के अंगूर बेच रहा है तो आप ऑब्वियसली नासिक के अंगूर प्रेफर करोगे ओवर द अदर्स, ओके। सिमिलरली आपको ऑरेंजेस खरीदना है तो आप ऑब्वियसली आप नागपुर ऑरेंजेस प्रेफर करोगे, ओके। सो लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखना होता है कि जीआई जैसे पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, डिजाइन, ये सारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, इसमें आप आपके सिंगल पर्सन के नाम पे, मतलब इंडिविजुअल के नाम पे या इंस्टीट्यूट के नाम पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। लेकिन जीआई टैग के लिए जब आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आना पड़ता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि कल आप बोलोगे कि सर हमारे यहाँ ये चीज फेमस है, इसका मुझे जीआई टैग दे दो, तो ये राइट इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, ये राइट दिया जाता है एक कम्युनिटी को, ये राइट दिया जाता है एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स को जो उस गुड्स को बना रहे हैं, ये राइट दिया जाता है ग्रुप ऑफ स्किल्ड लेबरर्स को, ये राइट दिया जाता है एक कम्युनिटी को, मतलब एक ग्रुप को, ये इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता, ओके। सो
अगर आपके एरिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आप मुझे वो क्वेश्चन आंसर सेशन में बता सकते हो, और उसका अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप किसी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो उस प्रोडक्ट पे काम कर रही है, वो ऐसे रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हो. देन दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स: दार्जिलिंग टी, मकराना मार्बल, रतलामी सेव, कंचीपुरम सिल्क, okay, then Warli paintings, Kathpuris of Rajasthan, okay, then Kashmir Kesar is there, Shahi Lychee of Bihar, Purba oranges. These are the various examples of GI tags. Then next is SICLD. ये आपके लिए टोटली नया हो सकता है क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज द सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन. हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं, हम वो हर एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इंटीग्रेटेड सर्किट नाम का एक पार्ट होता है. ओके, सो इंटीग्रेटेड सर्किट का जो डिजाइन होता है उसमें ऐसे काइंड ऑफ सर्किटरी होती है. ओके, सो ऐसे काइंड ऑफ सर्किटरी का एक लेआउट आप जब डिजाइन करते हो, सो लेआउट का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आपको, जैसे इनपुट आउटपुट है, रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर, डायोड, ग्राउंड, मेटल ट्रैक्स. सो ऐसे जब आप एक लेआउट डिजाइन करते हो एक आधा इंटीग्रेटेड सर्किट का, जब आप ऐसा एक लेआउट बनाते हो और अगर वो लेआउट यूनिक है, उसमें यूनिक फंक्शनैलिटीज है, अगर वो मार्केट में पहले किसी ने वो डिजाइन नहीं किया है, ऐसे टोपोग्राफी मार्केट में अगर किसी ने बनाया नहीं है, तो उसको आप प्रोटेक्शन SICLD के अंतर्गत ले सकते हो. ओके, सो उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जो भी हम डेली लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हम यूज कर रहे हैं, हमारा मोबाइल हो गया, हमारे कंप्यूटर्स हो गए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, हम स्मार्ट वॉच हो गया, हर एक इलेक्ट्रॉनिक चीज में इंटीग्रेटेड सर्किट होता है. उसका जो टोपोग्राफी है, उसका जो लेआउट है, आप वो SICLD में प्रोटेक्ट कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज. सो आपको आज दिन भर तो आपके पूरे एग्रीकल्चर के सेशन चल रहे थे, उसमें बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज के बारे में आपको पता चला होगा. जैसे ये अभी कैप्सिकम है. ओके, कैप्सिकम अर्लियर अवेलेबल ओनली इन ग्रीन कलर, बट उसके बाद में उसकी नई वैरायटी डेवलप हुई. जैसे कि अभी कैप्सिकम है रेड कलर में अवेलेबल है, कैप्सिकम येलो कलर में अवेलेबल है, जैसे गुलाब के फूल है, रोजेस, जो वो भी अभी मल्टीपल कलर्स में अवेलेबल है. ओके, सो जब आप एक नया वैरायटी डेवलप करते हो, जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स है उसके नया कुछ वैरायटी आप डेवलप करते हो, तो उस वैरायटी का प्रोटेक्शन आप ले सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 के तहत. ओके, सो ये जो एक्ट है, ये 2001 में हमारे पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, और इस एक्ट के इनेक्टमेंट के में इसका जो मेजर एम था इज टू एस्टैब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज, द राइट्स ऑफ फार्मर्स एंड द प्लांट ब्रीडर्स. ओके, जो भी फार्मर्स और प्लांट ब्रीडर्स है, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए जो आप नया कोई वैरायटी अगर आप डेवलप कर रहे हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट का इनेक्टमेंट किया गया था. ओके, इस एक्ट के थ्रू आप उस नया वैरायटी पे एक काइंड ऑफ मोनोपोली राइट्स ले सकते हो. ओके, वो आप 18 साल के लिए उस वैरायटी पे आपका मोनोपोली राइट आप ले सकते हो. और ये एक्ट जो नए रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जैसे आपके जैसे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट होते हैं, तो वो आपको एनकरेज करता है कि आप नया वैरायटी डेवलप करो. ओके, सो दिस इज द बेसिक एम ऑफ द बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट. ओके, नाउ we have completed the intellectual properties like designs, trademarks, copyright, GI tags. Okay, and then now last and most important intellectual property is patent. Okay, so patents are the one of the oldest forms of IP. Okay, ये 1700 के कालखंड में शुरू हुआ था यूरोप में. Then major aim of patent system is to encourage the technological and economical development by rewarding the intellectual creativity. आपका जो भी इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी आप जो भी करते हो, उसका आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. दिस इज द मेजर एम ऑफ द पेटेंट सिस्टम. ओके, सो आपने बहुत जगह न्यूज में या बहुत टीवी चैनल्स में, जैसे अभी एक सोनी लिव पे एक शो आता है शार्क टैंक इंडिया, उसमें आपने सुना होगा कि वहाँ पे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, वो अपने जो भी उन्होंने बिजनेस आइडियाज है उनकी कैसे डेवलप किया, उनको आइडियाज कैसे आए, तो उसको उन्होंने कैसे डेवलप किया और कैसे उनका मार्केट उन्होंने बनाया, उसके बारे में वो वहाँ पे बोलते हैं. वहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर बैठे होते हैं, 4, 5 या 7, वो इन्वेस्टर उनको क्वेश्चंस पूछते हैं, वो शार्क्स उनको क्वेश्चन पूछते हैं. अगर आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस देखोगे तो क्वेश्चंस उनके ऐसे होते हैं कि आपने आपका प्रोडक्ट जो है या आपने आपका जो ब्रांड है उसको प्रोटेक्ट किया है क्या. सो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना मतलब क्या, आपने उसका पेटेंट राइट लिया है क्या. ओके, सो दिस इज दैट मच पेटेंट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आपने किसी प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं लिया और वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो ऑब्वियस है कि कोई भी उस प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है विदाउट योर परमिशन. बट अगर आपने उस पर पेटेंट राइट्स लिए हैं, अगर आपने उस पर मोनोपोली राइट्स लिए हैं, तो विदाउट योर परमिशन नो वन कैन कॉपी योर प्रोडक्ट. ओके, और अगर कोई कॉपी कर भी लेता है तो उस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हो, उस पर आप इमीडिएटली इंफ्रिंजमेंट सूट फाइल
कर सकते हो. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ पेटेंट. सो पेटेंट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. ओके, एंड इट इज गिवन टू इन्वेंशन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंशन? इन्वेंशन मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है, एक होता है इन्वेंशन और दूसरा होता है डिस्कवरी. डिस्कवरी को जैसे कि जो चीजें नेचर में ऑलरेडी है, उस नेचर में होने वाली चीजों का अगर कोई डिस्कवर कर रहा है, जैसे कि हमने न्यूटन्स लॉ स्कूल में पढ़े थे. ओके, न्यूटन ने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दिया था. मतलब एक बार वो सब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और वो एप्पल उनके सर पे गिरता है एंड ही थॉट दैट वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, वो ऊपर क्यों नहीं गया. तो उसके बाद में उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी दिया था. और बट न्यूटन के पहले भी वो एप्पल नीचे ही गिर रहा था. दैट मीन्स कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलरेडी नेचर में था, उन्होंने उसको जस्ट डिस्कवर किया था. सिमिलरली प्लांट सेल किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने. बट रॉबर्ट हुक के पहले भी प्लांट्स में सेल हुआ करती थी. दैट मीन्स these are already there in nature. Okay, but if someone is discovering these things, such things are called as discoveries, and patents are not granted to discoveries. डिस्कवरी को पेटेंट नहीं दिया जाता, पेटेंट दिया जाता है इन्वेंशन को. तो इन्वेंशन क्या होता है? एक तो प्रोडक्ट हो सकता है या तो प्रोसेस. इन्वेंशन दो ही चीजें हो सकती है, एक तो प्रोडक्ट हो सकता है या तो उस प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस हो सकती है. ओके, सो आपका प्रोडक्ट और प्रोसेस को हम इन्वेंशन कब बोल सकते हैं? जब वो न्यू मतलब नया हो, जब वो उसमें इन्वेंटिव स्टेप हो. इन्वेंटिव स्टेप का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास जो भी अभी नॉलेज है उसमें अगर आप कुछ टेक्निकल एडवांसमेंट कर रहे हो, जैसे कि अभी मेमोरी कार्ड हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं. ओके, सो मेमोरी कार्ड में पहले क्या होता था? मेमोरी कार्ड की साइज बहुत बड़ी होती थी और उसमें डाटा स्टोरेज का जो कैपेसिटी हुआ करता था पहले, वो 128 MB 256 MB ऐसे होता था. लेकिन अभी क्या है, मेमोरी कार्ड का साइज रिड्यूस हो गया है, लेकिन उसमें जो डाटा स्टोरेज का कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. इसका मतलब क्या है कि मेमोरी कार्ड का नॉलेज तो हमें बहुत सालों से, लेकिन उसमें जो हर साल टेक्निकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, उस टेक्निकल एडवांसमेंट को हम बोल सकते हैं इन्वेंटिव स्टेप. मतलब अगर आपके प्रोडक्ट में प्रोसेस में कोई टेक्निकल एडवांसमेंट है और वो कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है. कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो प्रोसेस है वो एक तो इंडस्ट्री में यूज करते आना चाहिए या तो इंडस्ट्री में उसको हम बना पाए. अगर ये चीजें आपके प्रोडक्ट या प्रोसेस में है तो उसको हम बोल सकते हैं इन्वेंशन. जैसे कि अभी टेलीफोन क्या है? इट इज अ ह्यूमन क्रिएशन. इट वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल. सो इसीलिए हम उसको इन्वेंशन बोलते थे. सो इन्वेंशन को ही पेटेंट दिया जाता है. पेटेंट्स आर ओनली ग्रांटेड टू इन्वेंशंस. ओके, सो it is an intellectual property rights and given to only inventions and it is an exclusive and monopoly right. exclusive and monopoly मतलब क्या है? अगर आपको पेटेंट राइट हम ग्रांट करते हैं तो विदाउट आपकी परमिशन कोई भी उसको मेकिंग, यूजिंग, इंपोर्टिंग और सेलिंग नहीं कर सकता है. ओके, विदाउट आपकी परमिशन कोई भी उसको बना नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता और बेच नहीं सकता है विदाउट आपकी परमिशन, अगर आपको पेटेंट राइट ग्रांट हो जाता है तो. ओके, एंड इट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स. मतलब अगर आपने आज पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है और आपका पेटेंट अगर ग्रांट होता है तो आज से बराबर आपको 20 साल के लिए वो मोनोपोली राइट दिया जाता है. 20 साल के बाद आपका पेटेंट कोई भी यूज कर सकता है. ओके, देयर आर 3 बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग पेटेंट. मतलब पेटेंट मिलने के 3 रिक्वायरमेंट है. पहला रिक्वायरमेंट है नोवेल्टी, दैट योर इन्वेंशन मतलब आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपका जो भी प्रोसेस है वो उसमें नोवेल्टी होनी चाहिए. नोवेल्टी मतलब क्या? न्यूनेस, वो नया होना चाहिए. ओके, देन इन्वेंटिव स्टेप आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इट शुड हैव टेक्निकल एडवांसमेंट ओवर द एक्जिस्टिंग नॉलेज और इट शुड हैव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ओवर द एक्जिस्टिंग नॉलेज. देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी मींस आपका जो इन्वेंशन है वो एक तो इंडस्ट्री में यूज होना चाहिए या तो इंडस्ट्री में उसको हम प्रोड्यूस करते आना चाहिए. इसको बोलते हैं अगर आपके इन्वेंशन में, आपके प्रोडक्ट या प्रोसेस में ये 3 चीजें हैं तो हम उसको पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं. देन दिस इज द फर्स्ट इंडियन पेटेंट. ये पहला पेटेंट है इंडिया में 1856 में ग्रांट हुआ था. हमारा कलकत्ता पेटेंट ऑफिस ने इसको ग्रांट किया था और ये पेटेंट ग्रांट हुआ था सिविल इंजीनियर जॉर्ज अल्फ्रेड डिपेनिंग को. और इनका पेटेंट था हैंड इफिशिएंट पंखा पुलिंग मशीन. मतलब क्या? ये हाथ पंखा था, हैंड पंखा था ये. सो पेटेंट के लिए बहुत सारी मिसकंसेप्शन है मार्केट में, जैसे कि पेटेंट में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, पेटेंट मतलब बहुत बड़ी चीज होनी चाहिए, पेटेंट कोई क्वालिफाइड बंदा ही फाइल कर सकता है. ये सारी मिसकंसेप्शन है. तो अभी इससे आपको पता चल सकता है कि ये बस हैंड पंखा था, उसको भी पेटेंट मिला हुआ है. आप जो पेपर में क्लिप लगाते हैं उसको भी पहले पेटेंट मिला हुआ है. मतलब पेटेंट का साइज मैटर नहीं करता है, उसमें कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है वो मैटर नहीं करते. उसमें 3 चीजें अगर है मतलब वो इन्वेंशन है, मतलब नोवेल्टी और इन्वेंटिव स्टेप और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी अगर उस प्रोडक्ट में है तो उसको हम पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं. उसके लिए उसको हम पेटेंट ग्रांट कर सकते हैं. ऐसे नहीं कि उसके लिए इंजीनियर ही पेटेंट फाइल कर सकता है, ऐसे नहीं.
इवन जो कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, इवन स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने भी आज तक बहुत सारे पेटेंट्स फाइल किए हुए हैं। ओके, नाउ माइकल जैक्सन तो आपको सबको पता होगा, माइकल जैक्सन जब परफॉर्म करता है तो वो एक साइड में ज्यादा झुक जाता है ऐसे, तो उसको कैसे पॉसिबल होता है इतना एक साइड में लीन करना? बिकॉज आप अगर उसके शूज देखोगे तो उसने उसका शूज पेटेंट करवाया है 1993 में। उसका शूज का जो सोल है उसमें ऐसे स्लॉट है, और जिस फ्लोर पे वो परफॉर्म करता है उस फ्लोर में ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं। जब ये स्लॉट उस प्रोजेक्शंस में अटकता है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी लीन कर सकता है, तो इसीलिए माइकल जैक्सन बहुत ज्यादा एक साइड में लीन कर सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द माइकल जैक्सन पेटेंट। देन नेक्स्ट इज, फॉर एग्जांपल, अभी आपने कोई पेटेंट या कोई इन्वेंशन आपने बनाया, आपको अभी लग रहा है कि आपके इन्वेंशन में नोवेल्टी है, इन्वेंटिव स्टेप है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि पेटेंट फाइल कैसे करते हैं। तो पेटेंट दो तरीकों से फाइल किया जा सकता है। पेटेंट एक तो ऑनलाइन तरीके से फाइल किया जा सकता है या ऑफलाइन तरीके से फाइल किया जा सकता है। ऑनलाइन में बस आपको घर बैठे हमारे वेबसाइट को विजिट करना है, उधर जाके आपका प्रोफाइल बनाना है, लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, आपको डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करनी है, और जो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स बोलने वाला हूँ और जो मैं फीस बोलने वाला हूँ अभी, उतना बस आपको घर बैठे सबमिट करना है और आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। ऑफलाइन में क्या होता है, जैसे आप अभी गुजरात से हो, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, अगर आप ये 5 राज्यों से हो तो आपको मुंबई पेटेंट ऑफिस में आपको आपका एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। जैसे कि इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिस है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। सो आपके ये जो 5 स्टेट्स है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ और गोवा, ये 5 स्टेट्स आते हैं मुंबई पेटेंट ऑफिस के जुरिडिक्शन में। तो ऑफलाइन आप उस मुंबई पेटेंट ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हो। वो डॉक्यूमेंट्स मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स? ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये होते हैं कि फॉर्म 1 में क्या होता है, आपका बेसिक डिटेल्स लाइक आपका नाम, आपका एड्रेस। ओके, अगर आप एजेंट के थ्रू फाइल कर रहे हो तो एजेंट का एड्रेस, एजेंट का नाम, ये सारी चीजें आपको फॉर्म 1 में सबमिट करनी होती है। देन फॉर्म 2 में क्या होता है, आपका जो भी इन्वेंशन है वो आपको 100% डिस्क्लोज करना होता है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसके पास 20-30% आपने डिस्क्लोज कर दिया और बोला कि सर मुझे पेटेंट दे दो, तो ऐसे नहीं मिलेगा। जब तक आप 100% डिस्क्लोज नहीं करते तब तक आपको पेटेंट नहीं दिया जाता। और वो जो 100% डिस्क्लोजर होता है उसको हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, वो आपको फॉर्म 2 के फॉर्म में सबमिट करना होता है। फॉर्म 3 मतलब क्या होता है, आप अगर भारत के साथ साथ अगर आप चाइना, अमेरिका या दूसरे कोई भी कंट्री में फाइल करते हो तो उसका डिटेल्स आपको फॉर्म 3 में देना होता है। और फॉर्म 5 होता है, उसमें आपको डिक्लेयर करना होता है कि यू आर द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ दिस इन्वेंशन। एंड नेक्स्ट इज फॉर्म 18। फॉर्म 18 में आपको रिक्वेस्ट करना होता है कि सर I have filed a patent application. Now you can examine my patent application. It will be requested in the form of Form 18. Okay. So ये 5 फॉर्म्स आपको कंपल्सरीली भरने होते हैं। देन आप उसके बाद आपको फीस भरना होता है। फीस कितना होता है, अगर आप नेचुरल पर्सन हो या आप स्टार्टअप कंपनी हो या आप स्मॉल एंटिटी हो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो आपको बस 5,600 रुपए में आप पूरा पेटेंट फाइल कर सकते हो। ओके, अगर आप बड़ी कंपनी हो तो आपको 28,000 लगते हैं, लेकिन अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, जैसे आप आपकी यूनिवर्सिटी के नाम पे अगर पेटेंट फाइल करते हो तो आपको बस 5,600, या आप आपके खुद के नाम पे अगर पेटेंट फाइल करते हो तो आपको बस 5,600 में आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। ओके, सो ये ऑनलाइन फाइलिंग का फीस है। अगर आप ऑफलाइन फाइल करना चाहते हो तो इससे आपको 10% और ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, देन दीज आर द 2 मोड्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे विजिट करके यार न्यू यूजर क्रिएट करना पड़ता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स और जो फीस मैंने बोला वो अपलोड करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज, दिस इज अ न्यू प्रोविजन, ये होता है एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन। एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो भी पेटेंट का एप्लीकेशन आपने फाइल किया है, अगर उसका आपने एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन फाइल किया तो आपका जो डिसीजन है, आपका जो एप्लीकेशन है, उस पर जो डिसीजन होने वाला है, इट में आपका डिसीजन क्या हो सकता है, एक तो आपका पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, एक तो आपका पेटेंट रिफ्यूज हो जाएगा। लेकिन वो जो भी डिसीजन होगा वो 1 साल के अंदर आ जाएगा। इसके ये प्रोविजन होता है एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन में। ये सभी कर सकते हैं क्या? नहीं। ये कौन कौन कर सकता है? अगर आप स्टार्टअप हो, अगर आप स्मॉल एंटिटी हो, अगर आप जैसे कि आप 3-4 लोग मिलकर पेटेंट के लिए फाइल कर रहे हो और उसमें कम से कम अगर एक भी लेडीज है, एक भी फीमेल है, तो आप उसको एक्सपर्टाइट में जा सकते हो। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मतलब कौन से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू, आप कोई भी गवर्नमेंट का अगर डिपार्टमेंट हो तो आप एक्सपर्टाइट एग्जामिनेशन के लिए जा सकते हो। नाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। अभी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मैंने कवर कर ली है, और जो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है ये किसी ना किसी एक्ट के तहत ये प्रोटेक्ट की जाती है। जैसे पेटेंट है तो पेटेंट एक्ट 1970 के तहत इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसका रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होता है। इसका टर्म 20 साल होता है, मतलब 20 साल के लिए हम आपको पेटेंट राइट्स देते हैं, उसके बाद आपका जो पेटेंट है कोई भी यूज कर सकता है। देन नेक्स्ट इज
ट्रेडमार्क, ये जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपको करना है तो करो, अदरवाइज इट इज नॉट कंपल्सरी, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। इसका टर्म शुरुआत में 10 साल होता है, बाद में आप इसको रिन्यू करा सकते हो। देन नेक्स्ट इज डिजाइन, आप डिजाइन एक्ट 2000 के अंडर इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है और इसका टर्म शुरुआत में 10 साल, बाद में 5 साल, मतलब टोटल 15 साल का इसका टर्म होता है। देन जीआई टैक्स, आप उसका रजिस्ट्रेशन भी कंपल्सरी होता है और इसकी टर्म जो होती है शुरुआत में 10 साल दी जाती है, बाद में ये आपको फॉरएवर के लिए आप इसको रिन्यू करा सकते हो। देन कॉपीराइट, कॉपीराइट इज गिवन प्रोटेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। इसका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्रोटेक्ट योर क्रिएटिव वर्क। और इसका जो टर्म होता है, अगर आप इंडिविजुअल ऑथर हो और इंडिविजुअल क्रिएटर हो, तो इसका आपका पूरा लाइफ प्लस आपके मरने के बाद भी आपकी फैमिली इसको 60 साल, अगले 60 साल तक एंजॉय करेगी। ओके, अगर आप इंस्टीट्यूशन हो या अगर आप कोई कंपनी हो या एंटिटी हो तो ओनली फॉर 60 ईयर्स। इंडिविजुअल हो तो आपकी पूरी लाइफ प्लस 60, और ओनली एंटिटी हो तो ओनली फॉर 60। देन नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, ये इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, इसका टर्म 18 साल के लिए होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होता है, इसका टर्म 10 साल के लिए होता है। देन नेक्स्ट इज, फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एनी आइडिया विथ यू एंड व्हेन यू एक्सप्रेस दैट आइडिया, अगर आप उस आइडिया को आप एक्सप्रेस कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो आप उसको कॉपीराइट कर सकते हो। अगर आपका आइडिया इन्वेंटिव है, इनोवेटिव है, इन्वेंटिव है, जैसे कि वो कोई प्रोडक्ट है या प्रोसेस है, उसमें जो अगर 3 रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि नोवेल्टी, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, देन यू कैन गो फॉर अ पेटेंट। अगर आपको मार्केट में आइडेंटिटी बनानी है, मार्केट में आपको ब्रांड बनाना है, तो आप ट्रेडमार्क के लिए जा सकते हो। अगर आपके आप अपीयरेंस पे फोकस कर रहे हो, जैसे आर्टिकल डिजाइन कर रहे हो, तो उसका अपीयरेंस मतलब उसका लुक आप फोकस कर रहे हो, तो आप डिजाइन में करा सकते हो। नाउ देयर आर वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज आल्सो, जैसे कि आप, मैं एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन्स, आई एम वर्किंग एज ए एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन, दिस इज अ क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट। ओके, सिमिलरली एग्जामिनर ऑफ ट्रेडमार्क इज देयर, एग्जामिनर ऑफ कॉपीराइट, ये गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकते हैं। प्राइवेट में आप पेटेंट एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट, जेआरएफ, एसआरएफ, अगर आप लॉ डिग्री करते हो तो आप आईपीआर फील्ड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो एक प्रोडक्ट में मल्टीपल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे कि अभी एप्पल का लैपटॉप है। ओके, सो इसका स्क्रीन अगर आप देखोगे तो ये एलईडी डिस्प्ले है। ओके, सो एलईडी डिस्प्ले क्या पहले एलसीडी डिस्प्ले हुआ करता था। ओके, सो एलसीडी डिस्प्ले के जो स्क्रीन हुआ करता था वो क्वाइट थिकर हुआ करता था। नाउ एलईडी डिस्प्ले इज न्यू टेक्नोलॉजी। अगर न्यू टेक्नोलॉजी है और इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस है, तो उसको आप पेटेंट करा सकते हो। जैसे ये प्रोडक्ट है, उसका ओवरऑल जो डिजाइन है, जैसे यहाँ पे कर्व्स है, यहाँ पे टेपर है, सो ओवरऑल डिजाइन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो आप इंडस्ट्रियल डिजाइन में प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें जो एप्पल का लोगो दिख रहा है आपको, लोगो देखते ही आप वो ब्रांड को पहचान सकते हो, तो उसको लोगो, वो ब्रांड नेम आप किसमें क्रिएट कर सकते हो, किसमें प्रोटेक्ट कर सकते हो, ट्रेडमार्क में। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, उसके साथ एक आपको यूजर मैनुअल मिलता है या कैटलॉग मिलता है। ओके, सो इंस्ट्रक्शंस मिलता है, वो इंस्ट्रक्शंस आप कॉपीराइट में प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें जो प्रोसेसर यूज हुआ है, इसमें जो मदरबोर्ड है, इसमें जो इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट है, वो आप SICRD में प्रोटेक्ट कर सकते हो। जैसे सिंपल एग्जांपल आपको अगर आपको देना है, जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर के जो कंस्ट्रक्शनल फीचर्स है वो आप पेटेंट करा सकते हो। इसका जो ओवरऑल डिजाइन है, ओवरऑल लुक है प्रोडक्ट का, वो आप डिजाइन करा सकते हो। इसके साथ जो बुकलेट आया है या कैटलॉग आया है, उसको आप कॉपीराइट करा सकते हो। और इसका जो ब्रांड नेम है, मे बी प्रेस्टीज है, हॉकिंस है, पिजन है, व्हाटएवर मे बी द ब्रांड नेम, आप उसको ट्रेडमार्क करा सकते हो। ओके, सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। Thank you, Amol ji. It was really very informative presentation. मतलब आपने बहुत ही सिंपल तरीके से जो डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज थी उसके बारे में हमें समझाया. I really enjoyed it. And now I would like to ask our students that whether do you have any question regarding to this? Because really it is very important topic. बहुत सारी चीजें होती है जो हमें पढ़ने से समझ में नहीं आती है, बट आपने मतलब ग्राफिकल फॉर्म में भी बहुत अच्छे से हमें समझाया. And thanks for that, Amol ji. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, I will be requiring list of participants so that we can issue them certificates from Government of India, and we will be requiring the photos of that your sitting arrangement so that we can show as a proof that we have conducted a session in your university and all the students have participated in this event. Okay, because this is the central government mission, and through that mission, we are providing certificates not only to students but to your university also for the NAC accreditation and all these things. Okay, so I will be requiring the list of participants. Sure, our organizing team will be sending you the required things by tomorrow. Okay, ma'am. Okay. So guys, I am asking you again, is there any question?
to be asked. आपको क्वेश्चन होगा तो आप कोई भी लैंग्वेज मतलब हिंदी में भी आप पूछ सकते हो. I would like to hand over to our organizing secretary, Dr. K.B. Jala, sir. Thank you, Patil Saab, for a good, informative discussion. Once again, I am thankful to you, and we'll be winding up this session. Thank you. Thank you all the participants for patiently listening to me, and we would like to collaborate in near future also. So thank you for the opportunity. છેલ્લે અમોલ પાટીલજી પણ તમને કહેતા ગયા કે જેટલા હાજર હશે એને હું સર્ટિફિકેટ આપી શકીશ, whether you have noticed this thing or not.